जिनके गलती से ये दुर्घटना हुई उन पर कार्रवाई किया जाए। हाँ, वो क्या है कि देखिए, मैं उस समय आया था डेड बॉडी निकालने के लिए। सब हमारा कंपनी का आदमी, हम नियोगा का हैं और इधर बीएसएल कंपनी है ये, उसके हिसाब से हम लोग आया था पूरा उससे हेल्प के लिए आया था। डेड बॉडी उस समय पे टोटल 17 अभी तक बताने के अनुसार से निकाल रहा है और बाकी और 35 आदमी लगभग टोटल ड्यूटी पे था, जॉब पे, और बचा हुआ है। उसमें 17 में से 3 डैमेज है। पैर खाली टूट गया है, ऊपर से नीचे टूट गया था, टूट गया है। और लॉन्चिंग बढ़ा रहा था, आगे बढ़ाते बोलने के अनुसार से मैं तो देखा नहीं, स्पार्किंग कर गया था वो। बाहर जो है ड्यूटी था उसका बताया कि स्पार्किंग किया, उसके हिसाब से डैमेज हुआ, सीधे नीचे आ गया, पलटी मार दिया। कितने बजे की घटना है? ये 11:30 बजे लगभग। आप लोग कितने बजे आए थे? हम यहाँ 11:30 बजे आ गया था, तब हाँ तो पलटी 11:30 बजे हम गिरा, आया तो पलटी हुआ हमको मिला। आपने मतलब उस टाइम पलटी हुई देखी? जी जी, नहीं पलटी हुआ नहीं, मैंने नहीं देखा, पलटी हो गया था तब मैं आया, डेड बॉडी जो था उसको साथ में निकाला। आप लोगों ने कुछ डेड बॉडी निकाले? हाँ, डेड बॉडी हम लोग 7 से 8 निकाला था ऐसे। आप लोगों ने कितने डेड बॉडी निकाले? 8 निकाला था। किसी को समृद्धि महामार्ग पर फिर से एक बार एक बड़ी दुर्घटना। इस बार समृद्धि महामार्ग पर काम करने वाले जो कर्मचारी थे, ठेकेदारों के अधिकारी थे, इन पे एक क्रेन गिरी और शाहपुर तहसील के पास ये दुर्घटना हुई। 15 लोग इसमें मर गए, उनकी मौत हो गई, बड़ी दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। क्या शिंदे फडणवीस सरकार का कोई दबाव इन ठेकेदारों पे है? इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्दी पूरा करना चाहिए। सारी सुरक्षा चीजों को बाजू में रखते हुए जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट पूरा किया जाए, ताकि सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इस प्रोजेक्ट को जनता के सामने चुनाव के पहले पेश किया जाए। क्या इस प्रकार का दबाव शिंदे फडणवीस सरकार समृद्धि महामार्ग के ठेकेदारों पर बना रही है क्या? ये निश्चित रूप से सवाल सभी के मन में आज निर्माण हो चुका है। And moving on, news coming in, a Pakistan-operated terror module probe is now widening. Now, a man hailing from Pune has been detained by the State Investigation Agency during a series of raids that have been conducted in the area in last 3 days. Now, the raids are being conducted in connection with an investigation of a case related to recovery of large-scale cash, narcotics, arms and ammunition, along with foreign currency, and incriminating material from a village in the month of March. So pictures on your screen are of the person who has been detained by the State Investigation Agency in this particular case. Now, what we are given to understand is that the focus is on what is believed to be a Pakistan-operated narco-terror module. Let's go across to Gursimran, who has more details on this. All right, I think we're running into some audio trouble with Gursimran over there. But a person who hailed from Pune has been detained by the state investigation agencies during the investigation into this narco-terror module, which is being looked upon by the SIA. Okay, Gursimran back with us on the phone line. Gursimran, give us more details, A, of this module that was operating, and B, of course, of the support that it received from Pakistan. See, Mohammad Farooq, a close associate of Rafiq Lala, who was arrested on 23rd of March, has now been arrested by the State Investigation Agency, and this comes after 3 days of sustained raids and searches that were conducted in the Pune district at multiple locations by the team of State Investigation Agency. And during investigation, it came into fore that there was an involvement of Mohammad Farooq in this narco-terror module, after which he was placed under arrest, and now the teams of the State Investigation Agency are bringing him to Jammu, wherein he will be interrogated further. During the cross-questioning face-to-face with Rafiq Lala, certain revelations have come out that includes his links with the Pakistani-based centers for smuggling of narcotics as well as the weapons into the Indian territory. So a larger plot has been unearthed by the Jammu and Kashmir police with busting of this module earlier this year, and now the forward and the backward linkages are being worked upon by the State Investigation Agency. Now, Gursimran, is the police looking to widen the probe? Are they apprehensive that this could be a wider network?
Yes, certainly there is a possibility of a wider network being operated from across the border, and especially very near to the line of control is what the agencies suspect, that they were a part of this larger module for a longer period of time and were instrumental in providing the arms and ammunition as well as the support to the terror groups that are operating in the Rajouri and Poonch. And now the probe is underway. Some of the mobile phones that were with Muhammad Farooq have been now taken into custody have been seized by the State Investigation Agency, and they will be analysed at a later stage. All right, Gursimran reporting on that from Jammu. Thank you very much for joining us. So as Gursimran is pointing out that the State Investigation Agency looking at it being this being part of a larger operation. At the moment, of course, one person has been detained. You are watching Republic TV, and on the other side, opposition parties under the INDIA banner will be protesting against the Prime Minister's visit to Pune. And internet is suspended in Haryana's new Section 144 is imposed. When the opposition starts celebrating not the victory of a no-confidence motion, but the admission of the motion in Parliament. The I.N.D.I.A cannot even push through the motion if there is external support. A no-confidence motion is a serious matter. It is not a necessary rite of passage. It's not like having breakfast or lunch. It is something serious which must be done when there is something serious to debate. I say debate Manipur, but why a no-confidence motion? They are not even united on basic issues among themselves, and they call themselves I.N.D.I.A, and they waste our time by bringing in a no-confidence motion. It is an act of absolute futility. The people are serious. The people want governance, and I say with all the conviction at my command, stop the futility of the no-confidence motion. The opposition should unitedly take back the no-confidence motion and not waste the nation's time. If it is for their amusement, then it is a very, very expensive source of amusement that we pay. When the opposition starts celebrating not the victory of a no-confidence motion, but the admission of the motion in Parliament. The I.N.D.I.A cannot even push through the motion if there is external support. A no-confidence motion is a serious matter. It is not a necessary rite of passage. It's not like having breakfast or lunch. It is something serious which must be done when there is something serious to debate. I say debate Manipur, but why a no-confidence motion? They are not even united on basic issues among themselves, and they call themselves I.N.D.I.A, and they waste our time by bringing in a no-confidence motion. It is an act of absolute futility. The people are serious. The people want governance, and I say with all the conviction at my command, stop the futility of the no-confidence motion. The opposition should unitedly take back the no-confidence motion and not waste the nation's time. If it is for their amusement, then it is a very, very expensive source of amusement that we pay. When the opposition starts celebrating not the victory of a no-confidence motion, but the admission of the motion in Parliament. The I.N.D.I.A cannot even push through the motion if there is external support. A no-confidence motion is a serious matter. It is not a necessary rite of passage. It's not like having breakfast or lunch. It is something serious which must be done when there is something serious.
Motorola, India's best 5G smartphone brand. Well, two history cheaters have been shot dead by police in Chengalpettu in Tamil Nadu after they attacked the police. When the police tried to stop a vehicle from frisking, they had tried to evade but rammed into the police jeep. 4 people got down from the car and then tried to attack the police with weapons, and one of them attacked a policeman with a weapon. So pictures on your screen are of the person who seems to have been shot dead by the police in this little scuffle that ensued. The police were trying to stop them for routine checking. Let's go across to Varshini, who's joining us on the phone line. Varshini, give us more details of what happened. Well, Nupur, if you see around 3:30 a.m. in the police of Tambram City Police were doing their daily night rounds when they had suspected the speeding Skoda car, which they wanted to try and stop for regular frisking that happened. And but these people did not stop, but they tried to evade the police. And during this attempt, they had rammed into the police jeep that was standing on the corner of the road. And the police had tried to stop the vehicle from once again moving from that area. And when they did that, 4 people have got down the car with very dangerous weapons, and that is when the police have got themselves alerted. But still, one of them went ahead and using a machete, he attacked one of the sub-inspectors. And when he repetitively tried attacking the sub-inspectors, is what the police say that is when they had to fire at these people. And 2 of them were fired by one of the inspectors and sub-inspectors, and the other 2, upon seeing everything, ran away from the place. And according to the police statement, Nupur, these 2 have been identified as history cheaters, Chota, Vinod and Ramesh. They have pending cases, more than 50 cases on them, and which has one of them has almost 10 murders and 7 murder attempts, and the other person has almost 5 murders and more murder attempt cases upon them. Therefore, these people have been taken to the hospital, but by the time they were being taken, they were declared dead, and the police sub-inspector is also getting treated in the hospital right now, Nupur. All right. Thank you, Varshini, for joining us with those details. A look now at the top international news. The United Nations has condemned the suicide bombing at a political rally in Khyber Pakhtunkhwa, a province of Pakistan, which reportedly claimed the lives of at least 54 people. More than 200 people were injured. Russian ballistic missiles have slammed into an apartment complex in a university building in President Volodymyr Zelensky's hometown Monday, killing 6 people and wounding 75 others. The Russian ambassador Dmitry Polyansky has told UN Security Council that Kyiv is resorting to terrorism tactics. The comments follow a 4th drone attack in Russia over the weekend. Mali's military junta has said that it has agreed with Burkina Faso's military government to treat any foreign military intervention in Niger as a declaration of war on both nations. As the International Monetary Fund agreed to a $7.5 billion payment to be made available to Argentina to help with its economic woes, the country's politicians have assured the people that repayments would not come from the country's economic reserves. The Argentine economy minister announced that Argentina will pay the International Monetary Fund maturities of $2.7 billion. Cash-strapped Sri Lanka has said that its inflation dropped to a 6.3% in July from 12% in June, a single-digit figure for the first time in 2 years, providing much-needed relief to people amidst the worsening financial crisis. A giant glowing X no longer marks the spot on the San Francisco high-rise building that is headquarters to Elon Musk's messaging company X, formerly known as Twitter. The city building department logged about 24 complaints after neighbors complained about the intrusive lights. Angus Cloud, the actor who starred as Fez O'Neill on the HBO series Euphoria, has passed away at the age of 25. In a statement, his family said goodbye to an artist, a friend, a brother and a son. No cause of death has been given.
Well, that's all we have time for right now, but we're going to be back with Live and Breaking, and we'll get you more news on that, including, of course, the Home Minister likely to introduce the Delhi Ordinance in Parliament today. And a girder machine collapses near Thane. At least 17 people are killed. When the opposition starts celebrating not the victory of a no-confidence motion, but the admission of the motion in Parliament. The I.N.D.I.A cannot even push through the motion if there is external support. A no-confidence motion is a serious matter. It is not a necessary rite of passage. It's not like having breakfast or lunch. It is something serious which must be done when there is something serious to debate. I say debate Manipur, but why a no-confidence motion? They are not even united on basic issues among themselves, and they call themselves I.N.D.I.A, and they waste our time by bringing in a no-confidence motion. It is an act of absolute futility. The people are serious. The people want governance, and I say with all the conviction at my command, stop the futility of the no-confidence motion. The opposition should unitedly take back the no-confidence motion and not waste the nation's time. If it is for their amusement, then it is a very, very expensive source of amusement that we pay. When the opposition starts celebrating not the victory of a no-confidence motion, but the admission of the motion in Parliament. The I.N.D.I.A cannot even push through the motion if there is external support. A no-confidence motion is a serious matter. It is not a necessary rite of passage. It's not like having breakfast or lunch. It is something serious which must be done when there is something serious to debate. I say debate Manipur, but why a no-confidence motion? They are not even united on basic issues among themselves, and they call themselves I.N.D.I.A. When the opposition starts celebrating not the victory of a no-confidence motion, but the admission of the motion in Parliament. The I.N.D.I.A cannot even push through the motion if there is external support. A no-confidence motion is a serious matter. It is not a necessary rite of passage. It's not like having breakfast or lunch. It is something serious which must be done when there is something serious to debate. I say debate Manipur, but why a no-confidence motion? They are not even united on basic issues among themselves, and they call themselves I.N.D.I.A, and they waste our time by bringing in a no-confidence motion. It is an act of absolute futility. The people are serious. The people want governance, and I say with all the conviction at my command, stop the futility of the no-confidence motion. The opposition should unitedly take back the no-confidence motion and not waste the nation's time. If it is for their amusement, then it is a very, very expensive source of amusement that we pay.
when the opposition starts celebrating not the victory of a no confidence motion but the admission of the motion in Parliament. The I.N.D.I.A cannot even push through the motion if there is external support. A no confidence motion is a serious matter. It is not a necessary rite of passage. It's not like having breakfast or lunch. It is something serious which must be done when there is something serious to debate. I say debate Manipur, but why a no confidence motion? They are not even united on basic issues among themselves, and they call themselves I.N.D.I.A and they waste our time by bringing in a no confidence motion. It is an act of absolute futility. The people are serious. The people want governance, and I say with all the conviction at my command, stop the futility of the no confidence motion. The opposition should unitedly take back the no confidence motion and not waste the nation's time. If it is for their amusement, then it is a very, very expensive source of amusement that we pay. When the opposition starts celebrating not the victory of a no confidence motion but the admission of the motion in Parliament. The I.N.D.I.A cannot even push through the motion if there is external support. A no confidence motion is a serious matter. Good morning and welcome. You're watching live and breaking on Republic TV, and I'm Nupur Talwar Suri. We will, of course, be bringing you reports from Nu, where there is still tension in the area over what happened yesterday. We are told that internet continues to remain suspended in parts of Nu, and schools in Gurugram are still shut. We'll get you all that and more in a bit, but first we look at the headlines. Prime Minister Modi will be sharing stage with Sharad Pawar at an event in Pune today. Opposition parties under the INDIA alliance protest against Prime Minister Modi's visit to Pune. Internet is suspended in Haryana's Nu. Section 144 is imposed after violent clashes. Additional forces deployed. Situation remains tense. Political parties appeal for peace. Amit Shah is likely to table the bill to replace the Delhi ordinance in Parliament today. And a girder machine collapses near Thane. At least 17 people are killed. NDRF teams are deployed at the site. Now, in view of the violent clashes in Nu district, Haryana administration on Monday announced that all educational institutions, including schools and colleges and coaching centres in Faridabad, will remain closed today. I think it's Gurugram that will remain closed today. Internet services have been suspended in Nu, Palwal. The announcement came after 2 home guards were killed and over 50 people, including policemen, were injured in the clash between 2 groups during a religious procession Monday evening. हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज, जिनसे बातचीत करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल, आपने भी कल तस्वीरें देखी, रिपोर्ट्स भी आई होंगी, अभी स्थिति क्या है? क्योंकि कर्फ्यू और सेक्शन 144 इंटरनेट सस्पेंशन काफ़ी जिलों में हो गई। देखिए, एज ऑन नाउ जो परिस्थिति है वो पूरी तरह से नियंत्रण में है। हमने कल ही
जो साथ लगते ज़िले हैं, फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, झज्जर, रुड़की की फोर्सेस वहाँ पे मूव कर दी थी। और उसके बाद हमें हरियाणा, मैंने यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला जी से बात की थी, तो उन्होंने 20 कंपनियां हमारे डिस्पोजल पर दे दी थी। हमें ये भी हमारा इंतज़ाम हो गया था कि एयरफोर्स से भी हमने टाई अप किया था कि अगर दूर से कंपनियां उठा के लानी हैं तो एयरफोर्स उनको लाकर दिल्ली पालम पर एयर ड्रॉप कर देगी ताकि वहाँ से जल्दी मूव हो जाए। कंपनियां आनी शुरू हो गई हैं। हरियाणा से भी हमने अतिरिक्त फोर्सेस अब भेज दिए हैं और सीनियर अधिकारियों को भेज दिया है। हमारे डीजीपी पी.के. अग्रवाल खुद वहाँ पे रह के सारी स्थिति का मुआयना कर रहे हैं। हमारी एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह भी मेवात में हैं और कल उन्होंने बहुत बड़ा काम किया जब मंदिर में कुछ हजार लोग बंदी बना लिए गए थे और चारों तरफ से घेरा हुआ था, तो ममता सिंह ने खुद टीम को लीड किया और जाकर उन लोगों को छुड़वाया सारों को। तो और भी अधिकारी भेजे जा रहे हैं, सेक्टर वाइज आईपीएस अफसरों की तैनाती की जा रही है और उनको आवश्यकता अनुसार पुलिस मुहैया कराई जा रही है। सर, अभी तक का डेथ टोल क्या है, इंजर्ड कितने हैं और कितनी प्रॉपर्टी वहाँ पे डैमेज हो गई है, क्या कोई आंकड़ा शेयर कर सकते हैं आप? देखिए, इसका सारा असेस कर रहे हैं। कल जो मेरे पास आंकड़ा आया था वो 2 होम गार्ड के शहीद होने का आया था, वो गुड़गांव से जो गए थे उनका था, और शायद एक नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में भी है कोई वहाँ पर जो ब्रॉड डेड, तो वहाँ पर एडमिट भी है नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में। वहाँ पर 3 पुलिस वालों को जिनको गोली लगी है उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है। स्थिति उनकी नियमित जांच की जा रही है। और ये जो गुड़गांव से पुलिस गई थी जिनके ऊपर पथराव हुआ और कई अधिकारी पुलिस के और पुलिसमैन जख्मी हुए, वो सारे मैदान में हैं। सर, यानी कि पुलिस पे गोली चलाने वाले कौन हैं ये लोग? मास्टरमाइंड, यानी कि प्री मैन्युफैक्चर प्लानिंग हुई थी पहले कि किस तरह से ये सारी हिंसा को अंजाम दिया जाएगा। अगर गोली भी चली, पुलिस वालों को भी लगी, पथराव भी हुए, लोगों को हॉस्टेज भी बनाया मंदिर में, तो प्लानिंग तो कहीं ना कहीं थी इसके पीछे। ये डेफिनेटली ये जितना बड़ा बवाल हुआ है और जैसे ये फैला है ये अचानक नहीं हो सकता। और जहाँ तक मुझे जानकारी है वहाँ पर दोनों कम्युनिटीज़ आपस में प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के सामाजिक कार्यक्रमों में भी आते जाते रहते हैं। इतनी नफरत नहीं है। ये तो किसी न किसी ने मास्टरमाइंड की है, किसी न किसी ने इंजीनियरिंग की है, लेकिन जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होता है, क्योंकि हम जांच करके तथ्यों सहित बात रखेंगे। मैंने अधिकारियों को कह दिया है कि एक एक दोषी को हम सजा देंगे, जिसने जो ये किया है, शांति भंग की है, एक आदमी को भी नहीं बख्शेंगे, लेकिन गहराई के साथ हम उसकी जांच कर रहे हैं। साहब, हर साल निकलती है यात्रा, ये कोई पहली बार नहीं निकली है और हर साल इस तरह का माहौल नहीं बनता है, तो क्या कुछ लोग अभी तक आइडेंटिफाई कर पाई है पुलिस या इंटेलिजेंस की आखिरकार इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है जिन्होंने ये सारी प्लानिंग की थी? क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी यात्रा वैसे ही निकली थी लेकिन रिजल्ट कुछ और निकला। देखिए, ये शांतिपूर्ण यात्रा निकलती है, हर साल यात्रा निकलती है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निकलती है और इस बार भी शांतिपूर्ण तरीके से निकली। और हर साल जितनी पुलिस वहाँ मौजूद रहती है उतनी इस साल भी थी, लेकिन एकदम ये तो किसी ने प्लान किया हुआ था। इतने सारे लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, इतने सारे पत्थर नहीं आ सकते हैं कि एकदम इतने सारे पत्थर आ, और इतने पॉइंट्स के ऊपर नहीं हो सकता, इतनी जगहों का घेराव नहीं हो सकता कि अचानक तो कहीं पर कुछ हो सकता है। लेकिन इतनी जगह पर जिस प्रकार से इसका था वो सारा मैं डाटा मंगवा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या हुआ, किस किस ने किया। अस्पतालों को घेरा गया, चौकियों को घेरा गया, मंदिर को घेरा गया। ये बिना प्लानिंग के नहीं हो सकता। मेरी भी 40 साल की राजनीति है, बिना प्लानिंग के ये ऐसा नहीं हो सकता। साहब, अगर बिना प्लानिंग के नहीं हो सकता तो इनके मास्टरमाइंड्स को एक्सपोज करना भी उतना ही ज़रूरी है। कौन है इनके पीछे लोग जिन्होंने बंदूकें थमा दी, जिन्होंने इस यात्रा के ऊपर गोलियां चलवा दी, पत्थरबाजी हुई है? क्या अभी तक कोई गिरफ्तार, कोई डिटेन, कोई आइडेंटिफाई हुआ?
नहीं, एक एक पॉइंट पर देखिए, हमारा जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी ड्यूटी है वो है वहाँ पर शांति बहाल करना और स्थिति को अपने नियंत्रण में लेना। वो हमने वहाँ पर शांति बहाल है, स्थिति पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। अब हम बाकी जो काम है उस पर कार्रवाई करना आरंभ कर देंगे। कल शाम को डीसी के साथ दोनों कम्युनिटीज़ के लीडर्स की बैठक हुई थी और उसके बाद कोई नतीजा निकला, क्योंकि आज फिर से रीशेड्यूल की गई है पीस मीटिंग? नहीं, देखिए, साइमल्टेनियसली हम बात भी कर रहे हैं और क्योंकि शांति रहे और शांति से रहे सब, ये तो हमारा दायित्व है। तो इसलिए कल डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में मीटिंग भी बुलाई थी, लेकिन उसको हम जारी रखे हुए हैं, वो काम हम करेंगे। नूह के बाद कुछ घटना सोना से भी आई सामने और कई जगह पे, और पलवल, फरीदाबाद, कई जगह पे छोटी मोटी वायलेंस भी हो रही है। तो पैरामिलिट्री वहाँ पे भी डिप्लॉयड है, वहाँ की क्या स्थिति है? नहीं, सब जगह पर जो सफिशिएंट फोर्स है वो भेज दी गई है सब जगह पर। आखिरी सवाल, आगे की कार्रवाई किस तरह से चलेगी? क्या पहले कार्रवाई शुरू हो जाएगी या फिर अभी थोड़ा टाइम लेने के बाद उन मास्टरमाइंड्स को, उन लोगों को जो एक्यूज्ड हैं, जो इसके पीछे कॉन्स्पिरेटर्स हैं, उनको एक्सपोज किया जाएगा? नहीं, तथ्यों सहित सारी जानकारी एकत्रित करेंगे और बैठ के फिर कार्रवाई करने का निर्णय लेंगे। And Amandeep is reporting live right now. He joins us from Ambala. Amandeep, give us more details about how the situation is currently. Now, we do know that schools and colleges remain shut. Internet is restricted. Well, absolutely, Nupur. All precautionary measures have been taken by the administration as well as government. 20 para forces has been deployed in those affected areas, including Nuh, Palwal, Faridabad, Gurgaon, Sona. So these are the affected areas where internet has been suspended. Paramilitary has been deployed. Schools and colleges has been shut for next 24 hours, and even maximum police force has been deployed, and advisories has been issued to the local people to remain at their places. And even section 144 has also been imposed in their areas. The priority and essentially the entire government is focusing to maintain the peace and calm in the areas, and later on the investigation will take place. Just because, Nupur, the most important and sensitive part of this entire episode is that there was a conspiracy hatched for this entire violence. All of a sudden, it was not a spur of movement that all of a sudden people have gathered there. All of a sudden, they are getting stones and they started pelting stones on the yatra, and in fact, all of a sudden, they are getting guns and started opening fires, just because not only civilians, police personnel have also been injured. Three people have died. 2 home guards and 1 other person has been died into this entire incident just because of bullet wounds. And even several police officials are still under the treatment just because they have received the bullet injuries. So the specific firing has been done, stone pelting has been done, people were targeted, police and the yatra also. So this is entire conspiracy. It was not spur of the movement, and this conspiracy needs to be exposed. But priority is to maintain peace and calm in the area, so that again communal clashes should not occur, and even internet suspended, so that at least the misleading information should not be spread on the social media platforms by these conspirators or by these notorious people who are trying to disturb the law and order situation in the area. So government is working, but so far they have identified that there is a conspiracy hatched, and there are several people who have hatched this conspiracy, who are the mastermind of this violence. They have identified that mastermind was there, but they have not exposed, and later when the peace will be sustained in the areas, later the investigation will take place accordingly against the accused and the culprits. Yes, Nupur. All right, stay with us. We're going to come back to you in a bit, but let's also listen into a report that has been filed by Republic TV's Anup. तो नूह की सड़क हम आपको दिखाते हैं, बर्बादी के निशान आपको नजर आएंगे। मेरे दाहिनी तरफ आप देखेंगे तो आपको काफी दूर तक सिर्फ बर्बादी के निशान, सड़कों पर पत्थर, कांच के टुकड़े आपको एक साथ यहाँ देखने को मिलेंगे। तो उधर मेरी बाईं तरफ आप देखिए, मेरे बाईं तरफ मैं जहां चल रहा हूँ, संजीव मेरे विजय आपको दिखाएंगे। देखिए कांच के टुकड़े, जले हुए निशान है, यानी इस आसपास में उपद्रवियों ने पूरी तरह से जो दुकानें थी सड़क पर उनको आग के हवाले कर दिया, तोड़ा फूड़ा गया। देखिए बर्बादी के निशान, इनको देखकर आप समझ सकते हैं कि नूह में कैसी बर्बादी हुई है। हमने वो परिवहन विभाग के दफ्तर भी देखे, वहां भी तोड़फोड़ की गई, साइबर थाने में तोड़फोड़ की गई है, बाकायदा बस घुसाने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ देखिए गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं,
गाड़ियों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है, यहाँ जलाया गया है, दुकानों को, गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया। हालांकि देर रात यहाँ से तमाम चीजों को हटाया गया, लेकिन सड़क पर जो काले जले हुए निशान हैं, जो राख हैं, ये बताने के लिए काफी है कि कितनी बर्बादी नूह में हुई है। हालांकि इससे आगे जानकारी मिल रही है कि और भी ज्यादा बर्बादी के निशान है, लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखाकर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ है नूह में। ये बच्चे देखिए इन आग के राख के बीच में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से हम आगे भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां तक आप कैमरे की नजर से देखेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान नजर आएंगे। पूरी सड़क जो है आग लगी हुई है, तार का कटीले तार या फिर छोटे छोटे जो गाड़ी के पार्ट्स हैं वो बिखरे पड़े हैं। ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि आज स्थिति थोड़ी सामान्य है, पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, लेकिन हम जिस रास्ते से होकर आए हैं, नूह के जिस रास्ते से होकर आए, वहां हमें इक्का दुक्का जगह पर ही पुलिस फोर्स की तैनाती मिली है। लेकिन हम जिस रास्ते पर देखिए, यहाँ पर हरियाणा राज्य परिवहन नूह कर्मशाला है और ठीक इसके सामने ये जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ हुई है। कल जो हिंसा भड़की थी नूह में, उसके बाद की ये तस्वीरें आज एक दिन बाद ये बर्बादी के निशान छोड़कर गई है। पूरी सड़क काली नजर आएगी आपको। आगे तक देखिए, यहाँ भी दुकानों को जलाया गया, जो जो रेहड़ी पटरियां थी सड़कों पर उनको जलाया गया। इसके आगे भी हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। संजीव, हम थोड़ा आगे चलते हैं। कोशिश की गई, देखिए इन दुकानों को जलाया गया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। शाम के स्नैक्स की शायद दुकान होगी छोटी मोटी, पूरी तरह से इसको जलाने की कोशिश की गई। हालांकि कई सामान अभी भी बचे हैं, लेकिन बर्बादी आप देखिए, आप समझिए। निशान को देखकर काले धब्बे के निशान, एक गहरा निशान छोड़ा जिसने, और ये ताउम्र अब शायद लोगों के जहन में रहेगी कि हाँ, शांति प्रिय नूह में ऐसी घटना भी सामने आई थी। सड़कों पर आप देखते जाइए, सड़कों पर आप देखिए, सड़कों पर कैसे गाड़ियों को जलाया गया और गाड़ियों के पहियों के निशान आप देखिए। टायर जले हुए हैं संजीव, ये टायर जले हुए हैं, आप देखिए टायर जले हुए, टायर के निशान हम आपको दिखा रहे हैं। शायद गाड़ियां जलने के साथ अपने आप को बचाने की कोशिश करता है वो ड्राइवर, आगे गया होगा, और लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ के बाद आपको निशान नहीं मिलेंगे, शायद गाड़ियां यहीं जली। और उसके बाद ये तमाम जो जगह हैं जहाँ जो बुरी तरीके से जली हुई हैं, इनको देखकर आप अंदाजा लगाइए कि क्या हुआ होगा नूह में। कल शाम का वो मंजर, वो वक्त जब यहाँ हिंसा भड़की थी, उसके बाद यहाँ कैसा माहौल होगा, दहशत के साए में लोग होंगे। और एक दिन बाद की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, यहाँ सड़क पूरी तरह से काली है, मतलब आप समझिए यहाँ सबसे ज्यादा आगजनी हुई। उसके बाद आप देखिए, वहाँ अभी भी धुआं उठ रहा है, यानी आग अब भी है, यहाँ धुआं अब तक यहाँ मौजूद है। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि कितनी खतरनाक, कितनी भयावह वो मंजर होगी जब यहाँ पर आगजनी हुई होगी। देखिए, शायद गाड़ियों को जलाया गया है, यहाँ गाड़ियों को जलाया गया, आग के हवाले किया गया। पूरी सड़क यहाँ आपको काली नजर आ रही है। आप देखिए, धुआं अब भी उठ रहा है यहाँ से। ये टायर है, गाड़ी का टायर, जिसे जलाया गया, गाड़ी को जलाया गया, और अब भी यहाँ धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। पूरी सड़क आप देखिए, पूरी सड़क बिल्कुल काली हो गई है। और यहाँ गाड़ी जलाई गई थी। कौन सी गाड़ी थी भाई साहब, कितनी? देखिए, लगभग जो बच्चे हैं यहाँ, वो कह रहे हैं कि 20 गाड़ियों को इसी जगह जलाया गया था जिस जगह पर हम मौजूद है। देखिए, टायर के निशान, आप लोग भी थे। कितनी गाड़ियां जलाई गई थी भाई साहब, बताएंगे आप, कितनी गाड़ियां? 20 एक गाड़ी कम। कौन सी गाड़ियां? नो पता नहीं सर, नहीं पता है। आप भी थे भाई साहब, कुछ देखा था आपने कल जो हंगामा हुआ? आग लगी देखी थी बस। आप बता रहे हैं भाई साहब, आग जल रही थी यहाँ पे। हाँ। कितने लोग थे? कम से कम 20-25 गाड़ी। लोग बहुत थे। हथियार थे उनके हाथ में? हथियार तो नहीं थे। तो देखिए, तमाम लोग हैं जो अगल बगल के लोग हैं, ये भी कह रहे हैं कि 20 से ज्यादा गाड़ियां यहाँ जली है। और सड़क इस बात की तस्दीक कर रही है, जितनी काली सड़क आप देख पा रहे हैं, ये जले के निशान, टायर के निशान आप देखिए। ये जो तार निकले हुए हैं, टायर के तार हैं, और इनसे आप अंदाजा लगाइए कि क्या हाल हुआ होगा इन गाड़ियों का। हालांकि आज थोड़ी स्थिति सामान्य है, लेकिन जो हिंसा भड़की नूह में, उसके बाद की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरामैन संजीव के साथ रिपब्लिक भारत के नूह से अनूप कुमार की रिपोर्ट। And the latest that we are getting right now, of course, from Noo, where the situation continues to remain tense, is that 13 companies of paramilitary forces have been deployed here. And
news coming in suggests that 6 more companies will be reaching there shortly. Right now, there is no curfew that's been imposed in Faridabad, Palwal and Gurugram. However, Section 144 is imposed to avoid any more trouble in this area. A peace committee meeting will also proceed shortly in Sohna. Now, I think 11 o'clock was the time when the peace committee was supposed to meet and talk to both communities and try to resolve disputes. The state administration also was supposed to be part of this meeting. Now, even as this happens, of course, Section 144 has been imposed to make sure that the situation does not go out of hand. We are given to understand that as a precautionary measure, internet has also been restricted to make sure that message circulation can be stopped. Do remember that it was a message that actually started this entire sequence of violence over there and arson that was reported from No. So the Haryana administration, of course, not wanting to let trouble go out of hand, and more paramilitary forces being deployed in the area now. And coming up next, Amit Shah is likely to table the bill to replace the Delhi Ordinance in Parliament today. And a girder machine collapses near Thane. At least 17 people are killed. NDRF teams are deployed at the site. When the opposition starts celebrating not the victory of a no-confidence motion, but the admission of the motion in Parliament. The I.N.D.I.A cannot even push through the motion if there is external support. A no-confidence motion is a serious matter. It is not a necessary rite of passage. It's not like having breakfast or lunch. It is something serious which must be done when there is something serious to debate. I say debate Manipur, but why a no-confidence motion? They are not even united on basic issues among themselves, and they call themselves I.N.D.I.A, and they waste our time by bringing in a no-confidence motion. It is an act of absolute futility. The people are serious. The people want governance, and I say with all the conviction at my command, stop the futility of the no-confidence motion. The opposition should unitedly take back the no-confidence motion and not waste the nation's time. If it is for their amusement, then it is a very, very expensive source of amusement that we pay. When the opposition starts celebrating not the victory of a no-confidence motion, but the admission of the motion in Parliament. The I.N.D.I.A cannot even push through the motion if there is external support. A no-confidence motion is a serious matter. It is not a necessary rite of passage. It's not like having breakfast or lunch. It is something serious which must be done when there is something serious. Welcome back. Now, a crackdown is continuing on Rohingyas in Tripura. The DIGP of Tripura Police has said that 52 Rohingyas have been arrested this year and that their crackdown will continue against those involved in infiltration attempts. Century Laminate brings you this news report.
Tripura police has increased vigilance to prevent infiltration bids by Rohingyas. Speaking on the crackdown on Rohingyas in the state, Tripura DIGP said 52 Rohingyas have been arrested this year alone. अगेंस्ट द रोहिंग्यास त्रिपुरा पुलिस की तरफ से काफ़ी एफर्ट्स किए गए, पर्टिकुलरली लास्ट ईयर उससे कंपेयर टू दिस ईयर इंक्रीजिंगली वी आर डूइंग द एफर्ट्स. Rohingyas are residing in Bangladesh, that is a known fact. They use different routes. So when it came to our notice, so we started multi-pronged approach to deal with that. The Assam Chief Minister had earlier raised concerns over infiltration bids by the Rohingyas. Calling them a threat to India's sovereignty, the Chief Minister said that the state police is working closely with Tripura government to crack down on the infiltration bids. Bureau Report, Republic TV. Up next, Prime Minister Modi and Sharad Pawar will be sharing a stage at an event in Pune today. And Amit Shah is likely to table the bill to replace the Delhi Ordinance. When the opposition starts celebrating not the victory of a no-confidence motion, but the admission of the motion in Parliament. The I.N.D.I.A cannot even push through the motion if there is external support. A no-confidence motion is a serious matter. It is not a necessary rite of passage. It's not like having breakfast or lunch. It is something serious which must be done when there is something serious to debate. I say debate Manipur, but why a no-confidence motion? They are not even united on basic issues among themselves, and they call themselves I.N.D.I.A, and they waste our time by bringing in a no-confidence motion. It is an act of absolute futility. The people are serious. The people want governance, and I say with all the conviction at my command, stop the futility of the no-confidence motion. The opposition should unitedly take back the no-confidence motion and not waste the nation's time. If it is for their amusement, then it is a very, very expensive source of amusement that we pay. When the opposition starts celebrating not the victory of a no-confidence motion, but the admission of the motion in Parliament. The I.N.D.I.A cannot even push through the motion if there is external support. A no-confidence motion is a serious matter. It is not a necessary rite of passage. It's not like having breakfast or lunch. It is something serious which must be done when there is something serious to debate. I say debate Manipur, but why a no-confidence motion? They are not even united on basic issues among themselves, and they call themselves I.N.D.I.A, and they waste our time by bringing in a no-confidence motion. It is an act of absolute futility. The people are serious. The people want governance, and I say with all the conviction at my command, stop the futility of the no-confidence motion. The opposition should unitedly take back the no-confidence motion and not waste the nation's time. If it is for their amusement, then it is a very, very expensive source of amusement that we pay. Motorola, India's best 5G smartphone brand. Let's start with the top headlines at 10:30. Prime Minister Modi and Sharad Pawar to share stage at an event in Pune today.
Opposition parties under the INDIA to protest against Prime Minister Modi's Pune visit. Internet suspended in Haryana's new Section 144 imposed after the violent clashes. Additional forces deployed. A situation remains tense. Political parties appeal for peace. Amit Shah to likely table the bill to replace the Delhi ordinance in Parliament today. And thanks for staying tuned. It's 10:30. We continue to get you the latest on the tragic incident that's coming from Maharashtra's Thane district, where in an unfortunate mishap earlier today, at least 17 people have lost their lives and 3 have been seriously injured after a girder launching machine collapsed near the Jaipur area in Thane district. Now, as per information that is coming in, the machine was being used in the construction work of phase 3 of the Samruddhi Express highway. 2 NDRF personnel have also been deployed to help in the rescue operation that is still set to be underway as we speak. This as several workers are still said to be feared trapped in the collapse of the machine which happened in the wee hours today. And let's first listen in to the statement that has come in from the Maharashtra Chief Minister on the loss of lives and the rescue operations which are underway for 2 hours now. शहापूरजवळ समृद्धी एक्सप्रेसचं काम सुरू होतं. त्या ठिकाणी गर्डर लॉन्चिंग करत असताना गर्डर कोसळून त्यामध्ये जवळपास 17 लोकांचा दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे. झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे, दुःखद आहे आणि त्या बाबतीमध्ये सर्व आमचे अधिकारी, पालकमंत्री स्वतः त्या ठिकाणी आणि त्या खात्याचे मंत्री देखील स्वतः त्या स्पॉटवर आहेत. आणि लगभग हमें 1:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी. एसडीएमए की तरफ से सूचना प्राप्त हुई थी और सूचना के अनुसार यहाँ पे जो काम करने वाले लोग थे और एक्सीडेंटली यहाँ पे क्रेन कोलैप्स हुई थी और ब्रिज का पार्ट भी कुछ कोलैप्स हुआ था. ये हमें प्राथमिक सूचना मिली थी. उसके अनुसार ही हमारी एक थाने में एक टीम है वो इमीडिएटली वहाँ से रश हुई यहाँ स्पॉट के लिए और इमीडिएटली 5:30 बजे तक के आसपास यहाँ पे पहुँची. उसके बाद हमारी दूसरी टीम जो कंजूर मार्ग में स्थित है वहाँ से भी हमारी टीम आई और यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने चालू किया. अभी जैसे एनडीआरएफ की टीम आई 3 विक्टिम्स को इन्होंने निकाला है, 3 बॉडीज़ को निकाला है और अभी सर्च एंड रेस्क्यू हमारा काम चल रहा है. अभी तक तो जो तहसीलदार है उनके और यहाँ के लोकल्स के बयान के अनुसार यहाँ पे अभी बॉडीज़ ज़्यादा नहीं है. पर फिर से हम एक सरफेस सर्च कर रहे हैं, हमारा कैनन सर्च कर रहे हैं और जो भी हमारा टेक्निकल सर्च है और सर्च करने की कोई पश्चात हम बता पाएंगे कि यदि कोई बॉडी बची है तो उसकी हम पुष्टि करेंगे सभी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर. इस घटने में जो मजदूर का मृत्यु है वो बहुत दुर्दैवी है. यहाँ पे 27 मजदूर 27 मजदूर यहाँ पे काम करते थे. उसमें से 17 मजदूर का डेथ हुई है, उनका मृत्यु हुआ है और 3 मजदूर हॉस्पिटल में अपना उपचार कर रहे हैं. मेरा यही कहना है कि अभी भी 7 मजदूर यहाँ पे एक गार्डन के नीचे है. उनको निकालने के लिए हमारी पूरी शासकीय टीम, एनडीआरएफ के जवान और हमारे स्थानीय के लोग शासन को मदद करें, इन मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश करें. हम भी ये सब जो घटना हुई है वो शासन को बताने वाले हैं. हमारी यही मांग रहेगी कि मजदूर को उनको कुछ मदद की जाए और जिनके गलती से ये दुर्घटना हुई है उन पर कार्रवाई किया जाए. हाँ, वो क्या है कि देखिए मैं उस समय आया था डेड बॉडी निकालने के लिए. सब हमारा कंपनी का आदमी हम नियोजक हैं और इधर बीएसएल कंपनी है ये, उसके हिसाब से हम लोग आया था पूरा उससे हेल्प के लिए आया था. डेड बॉडी उस समय पे टोटल 17 अभी तक बताने के अनुसार से निकाल रहा है
और बाकी और 35 आदमी लगभग टोटल ड्यूटी पे था, जॉब पे, और बचा हुआ है। उसमें 17 में से 3 डैमेज है। पैर खाली टूट गया है, ऊपर से नीचे टूट गया है। और लॉन्चिंग बढ़ा रहा था, आगे बढ़ाते बोलने के अनुसार से मैं तो देखा नहीं, स्पार्किंग कर गया था वो बाहर। जो है ड्यूटी था उसका बताया कि स्पार्किंग की है, उसके हिसाब से डैमेज हुआ, सीधे नीचे आ गया, पलटी मार दिया। कितने बजे की घटना है? ये 11:30 बजे लगभग। आप लोग कितने बजे आए थे? हम यहाँ 11:30 बजे आ गया था, तब हाँ तो पलटी 11:30 बजे हम गिरा, आया तो पलटी हुआ हमको मिला। आपने मतलब उस टाइम पलटी हुई देखी? जी नहीं, पलटी हुआ नहीं, मैंने नहीं देखा, पलटी हो गया था तब मैं आया, डेड बॉडी जो था उसको साथ में निकाला। आप लोगों ने कुछ डेड बॉडी निकाले? हाँ, डेड बॉडी हम लोग 7 से 8 निकाला था ऐसे। आप लोगों ने कितने डेड बॉडी निकाले? 8 निकाला था। किसी को समृद्धि महामार्ग पर फिर से एक बार एक बड़ी दुर्घटना। इस बार समृद्धि महामार्ग पर काम करने वाले जो कर्मचारी थे, ठेकेदारों के अधिकारी थे, इन पे एक क्रेन गिरी और शाहपुर तहसील के पास ये दुर्घटना हुई। 15 लोग इसमें मर गए, उनकी मौत हो गई, बड़ी दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। क्या शिंदे फडणवीस सरकार का कोई दबाव इन ठेकेदारों पे है? इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्दी पूरा करना चाहिए। सारी सुरक्षा चीजों को बाजू में रखते हुए जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट पूरा किया जाए, ताकि सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इस प्रोजेक्ट को जनता के सामने चुनाव के पहले पेश किया जाए। क्या इस प्रकार का दबाव शिंदे फडणवीस सरकार समृद्धि महामार्ग के ठेकेदारों पे बना रही है क्या? ये निश्चित रूप से सवाल सभी के मन में आज निर्माण हो चुका है। All right, so 17 is the death toll as of now. The rescue operations are still underway as we speak. Let's go across to Alisha for more details. Alisha, tell us more about the teams that have been deployed in the rescue operations and how many people are still feared trapped. Well, Samisha, what we have been known by the NDRF that the rescue operation is completed and they are just removing the debris because the incident that happened that at least 17 people were killed and 3 persons were injured after a grinder launching crane collapsed in Shahpur town of Thane district, and the work in progress was part of the Samruddhi corridor, and the crane collapsed from a height of 90 to 100 feet. 3 people who were rescued from the debris are undergoing treatment in local hospital, and at least it was Maharashtra government has launched a probe into the incident, and even the compensation of 5 lakh has also been announced by the Chief Minister. But according to the available information, that around 25 to 27% was working in a shift at the site, and 17 people were killed and 3 other were injured, and 4 to 5 people are still trapped, is what we've been told. But now the rescue operation has been completed, is what the officials from the NDRF is been mentioning. But yes, the Chief Minister of Maharashtra, Eknath Shinde, and Deputy Chief Minister Ajit Pawar and Devendra Fadnavis had spoke to Darura, and they have taken the assessment of the situation. All right, Alisha, thank you for the moment. So, Alisha telling us the rescue operations are now complete, but 17 people, remember, have lost their lives in this incident. This is while the construction of Phase 3 of Samruddhi Expressway was happening at this location in Thane district of the state. Best 5G smartphone brand. Security has been heightened in Haryana's Nuh and adjoining areas after 2 home guards were shot dead and about a dozen policemen were injured after a clash broke out between 2 groups in the district on Monday. Internet services, however, would remain suspended for next 3 days, and Section 144 has also been imposed in the district as well. All educational institutions, including government schools, colleges and coaching centres, would also remain shut in Haryana's Gurugram. The order has been issued by the DM in wake of clashes between 2 groups in Nuh on Monday. देखिए, सोना में भी कुछ लोगों ने पथराव करने की कोशिश करी थी, उसमें भी अभी स्थिति अंडर कंट्रोल है, और हम बाकी गुड़गांव में भी पूरी पुलिस पूरे तरीके से तैनात है और सोशल मीडिया की प्रॉपर मॉनिटरिंग चल रही है। तो मैं सभी गुड़गांव वासियों से अपील करूंगा कि वो लोग भी मतलब पूरा अपना पेशेंस रखें और अपना पूरा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को नहीं बिगड़ने दें।
Crackdown continues on Rohingyas in Tripura. The DIGP of Tripura Police was quoted as saying that 52 Rohingyas have been arrested this year and that their crackdown would continue to in wake of the infiltration bids in the border areas. The Rohingyas त्रिपुरा पुलिस की तरफ से काफ़ी एफर्ट्स किए गए, particularly last year उससे compared to this year, increasingly we are doing the efforts. Rohingyas are residing in Bangladesh, that is a known fact. They use different routes. So when it came to our notice, so we started multi-pronged approach to deal with that. These 17 workers were killed as a grinder machine fell on the workers during construction of the third phase of Samruddhi Expressway in the state's Thane district in the wee hours today. The accident took place near a village in Jaipur, Tehsil of Thane district. Sharad Pawar would be sharing a stage with Prime Minister Modi at an award event in Pune today. This as the Lokmanya Tilak National Award constituted by Tilak Smarak Mandir Trust in 1983 to honour the legacy of legendary freedom fighter would be conferred on the Prime Minister today. The Indian Space Research Organisation has said that Chandrayaan-3 has completed its orbits around the Earth and is heading towards the Moon. ISRO has said it would attempt soft landing of the lander on the lunar surface on 23rd of August. Alright, let's focus then on the situation in the state of Haryana, where as per government officials, the situation has now been brought under control, particularly in areas which saw violent clashes on Monday, including Sona and Nu, precisely where the clashes broke out. Now 13 companies of paramilitary forces have been stationed. 6 more companies will also be reaching in a while from now. But we spoke exclusively to the State Home Minister, who said that there is a conspiracy behind these clashes which is being probed by the police. Also going on to add that such a situation couldn't have arisen had there not been had these clashes not been planned in advance, and that all of this was orchestrated by certain section of society. हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज, इनसे बातचीत करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल, आपने भी कल तस्वीरें देखी, रिपोर्ट्स भी आई होंगी, अभी स्थिति क्या है, क्योंकि कर्फ्यू और सेक्शन 144 इंटरनेट सस्पेंशन काफ़ी जिलों में हो गई? देखिए, एज ऑन नाउ जो परिस्थिति है वो पूरी तरह से नियंत्रण में है। हमने कल ही जो साथ लगते ज़िले हैं, फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, झज्जर, रुड़की की फोर्सेस वहाँ पे मूव कर दी थी। और उसके बाद हमें हरियाणा, मैंने यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला जी से बात की थी, तो उन्होंने 20 कंपनियां हमारे डिस्पोजल पर दे दी थी। हमें ये भी हमारा इंतज़ाम हो गया था कि एयरफोर्स से भी हमने टाई अप किया था कि अगर दूर से कंपनियां उठा के लानी हैं तो एयरफोर्स उनको लाकर दिल्ली पालम पर एयर ड्रॉप कर देगी ताकि वहाँ से जल्दी मूव हो जाए। कंपनियां आनी शुरू हो गई हैं। हरियाणा से भी हमने अतिरिक्त फोर्सेस अब भेज दी हैं और सीनियर अधिकारियों को भेज दिया है। हमारे डीजीपी पी.के. अग्रवाल खुद वहाँ पे रह के सारी स्थिति का मुआयना कर रहे हैं। हमारी एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह भी मेवात में हैं और कल उन्होंने बहुत बड़ा काम किया जब मंदिर में कुछ हजार लोग बंदी बना लिए गए थे और चारों तरफ से घेरा हुआ था, तो ममता सिंह ने खुद टीम को लीड किया और जाकर उन लोगों को छुड़वाया सारों को। तो और भी अधिकारी भेजे जा रहे हैं, सेक्टर वाइज आईपीएस अफसरों की तैनाती की जा रही है और उनको आवश्यकता अनुसार पुलिस मुहैया कराई जा रही है। सर, अभी तक का डेथ टोल क्या है, इंजर्ड कितने हैं और कितनी प्रॉपर्टी वहाँ पे डैमेज हो गई है, क्या कोई आंकड़ा शेयर कर सकते हैं आप? देखिए, इसका सारा असेस कर रहे हैं। कल जो मेरे पास आंकड़ा आया था वो 2 होम गार्ड के शहीद होने का
आया था वो गुड़गांव से जो गए थे उनका था, और शायद एक नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में भी है कोई वहाँ पर जो ब्रॉड डेड, तो वहाँ पर एडमिट भी है नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में। वहाँ पर 3 पुलिस वालों को जिनको गोली लगी है उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है। स्थिति उनकी नियमित जांच की जा रही है। और ये जो गुड़गांव से पुलिस गई थी जिनके ऊपर पथराव हुआ और कई अधिकारी पुलिस के और पुलिसमैन जख्मी हुए, वो सारे मैदान में हैं। सर, यानी कि पुलिस पे गोली चलाने वाले कौन हैं ये लोग? मास्टरमाइंड, यानी कि प्री मैन्युफैक्चर प्लानिंग हुई थी पहले कि किस तरह से ये सारी हिंसा को अंजाम दिया जाएगा। अगर गोली भी चली, पुलिस वालों को भी लगी, पथराव भी हुए, लोगों को हॉस्टेज भी बनाया मंदिर में, तो प्लानिंग तो कहीं ना कहीं थी इसके पीछे। ये डेफिनेटली ये जितना बड़ा बवाल हुआ है और जैसे ये फैला है, ये अचानक नहीं हो सकता। और जहाँ तक मुझे जानकारी है वहाँ पर दोनों कम्युनिटीज़ आपस में प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के सामाजिक कार्यक्रमों में भी आते जाते रहते हैं। इतनी नफरत नहीं है। ये तो किसी न किसी ने मास्टरमाइंड की है, किसी न किसी ने इंजीनियरिंग की है, लेकिन जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होता है, क्योंकि हम जांच करके तथ्यों सहित बात रखेंगे। मैंने अधिकारियों को कह दिया है कि एक एक दोषी को हम सजा देंगे, जिसने जो ये किया है, शांति भंग की है, एक आदमी को भी नहीं बख्शेंगे, लेकिन गहराई के साथ हम उसकी जांच कर रहे हैं। सब हर साल निकलती है यात्रा, ये कोई पहली बार नहीं निकली है, और हर साल इस तरह का माहौल नहीं बनता है। तो क्या कुछ लोग अभी तक आइडेंटिफाई कर पाई है पुलिस या इंटेलिजेंस की, आखिरकार इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है जिन्होंने ये सारी प्लानिंग की थी? क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी यात्रा वैसे ही निकली थी, लेकिन रिजल्ट कुछ और निका। देखिए, ये शांतिपूर्ण यात्रा निकलती है, हर साल यात्रा निकलती है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निकलती है, और इस बार भी शांतिपूर्ण तरीके से निकली। और हर साल जितनी पुलिस वहाँ मौजूद रहती है उतनी इस साल भी थी, लेकिन एकदम ये तो किसी ने प्लान किया हुआ था। इतने सारे लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, इतने सारे पत्थर नहीं आ सकते हैं कि एकदम इतने सारे पत्थर आ गए, और इतने पॉइंट्स के ऊपर नहीं हो सकता, इतनी जगहों का घेराव नहीं हो सकता कि अचानक तो कहीं पर कुछ हो सकता है। लेकिन इतनी जगह पर जिस प्रकार से इसका था, वो सारा मैं डाटा मंगवा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या हुआ, किस किस ने किया। अस्पतालों को घेरा गया, चौकियों को घेरा गया, मंदिर को घेरा गया। ये बिना प्लानिंग के नहीं हो सकता। मेरी भी 40 साल की राजनीति है, बिना प्लानिंग के ये ऐसा नहीं हो सकता। साहब, अगर बिना प्लानिंग के नहीं हो सकता तो इनके मास्टरमाइंड्स को एक्सपोज करना भी उतना ही ज़रूरी है। कौन है इनके पीछे लोग जिन्होंने बंदूकें थमा दी, जिन्होंने इस यात्रा के ऊपर गोलियां चलवा दी, पत्थरबाजी हुई है? क्या अभी तक कोई गिरफ्तार, कोई डिटेन, कोई आइडेंटिफाई हुआ? नहीं, एक एक पॉइंट पर देखिए, हमारा जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी ड्यूटी है वो है वहाँ पर शांति बहाल करना और स्थिति को अपने नियंत्रण में लेना। वो हमने वहाँ पर शांति बहाल है, स्थिति पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। अब हम बाकी जो काम है उस पर कार्रवाई करना आरंभ कर देंगे। कल शाम को डीसी के साथ दोनों कम्युनिटीज़ के लीडर्स की बैठक हुई थी, और उसके बाद कोई नतीजा निकला? क्योंकि आज फिर से रीशेड्यूल की गई है पीस मीटिंग। नहीं, देखिए, साइमल्टेनियसली हम बात भी कर रहे हैं, और क्योंकि शांति रहे और शांति से रहे सब, ये तो हमारा दायित्व है। तो इसलिए कल डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में मीटिंग भी बुलाई थी, लेकिन उसको हम जारी रखे हुए हैं, वो काम हम करेंगे। नू के बाद कुछ घटना सोना से भी आई सामने, और कई जगह पे, और पलवल, फरीदाबाद, कई जगह पे छोटी मोटी वायलेंस भी हो रही है। तो पैरामिलिट्री वहाँ पे भी डिप्लॉयड है, वहाँ की क्या स्थिति है? नहीं, सब जगह पर जो सफिशिएंट फोर्स है वो भेज दी गई है, सब जगह पर। आखिरी सवाल, आगे की कार्रवाई किस तरह से चलेगी? क्या पहले कार्रवाई शुरू हो जाएगी, या फिर अभी थोड़ा टाइम लेने के बाद उन मास्टरमाइंड्स को, उन लोगों को जो एक्यूज्ड हैं, जो इसके पीछे कॉन्स्पिरेटर्स हैं, उनको एक्सपोज किया जाएगा? नहीं, तथ्यों सहित सारी जानकारी एकत्रित करेंगे और बैठ के फिर कार्रवाई करने का निर्णय लेंगे। All right, so Anil, which they're saying that there is definitely a conspiracy behind these clashes. Let's go across to Amandeep, who's joining us live. Amandeep, tell us, where are you reporting from exactly? How's the situation looking like? And have those miscreants been identified so far, at least some of them by the state police?
Well, absolutely, Samiksha. There is a larger conspiracy that was hatched by the masterminds behind this entire new violence. And in fact, the police and certain investigating agencies are investigating this angle also. But so far, they are not revealing the names or the conspirators, and they have not arrested anyone. The fresh development in this entire episode is that 40 FIRs has been registered regarding this new violence in the different incidents and the different places. And in fact, 13 paramilitary companies are already landed in. Cutting across to these visuals that are just coming in of a meet of the opposition floor leaders, which is happening at Rajya Sabha LOP chamber or at Kharge's chamber, or so as to say, to discuss the strategy for the floor of the house. Remember that the bill to replace the Delhi ordinance is likely to be introduced by the Union Home Minister. And this is a strategy meet which is happening just ahead of the Parliament session that would begin in just 10 minutes from now. So, of course, remains to be seen whether it's going to be another day of complete washout in the Parliament or there's going to be some debate that happens in the Parliament today on day 9 of the monsoon session. So, this meet is happening of the opposition alliance leaders at Kharge's chamber to discuss the strategy for the floor of the House. This, of course, strategy meet, remember, comes in the backdrop of reports that there could be a bill that would be introduced by the Union Home Minister, a bill to replace the Delhi ordinance. And the opposition is, of course, in a huddle just ahead of the Parliament session that would just begin in minutes from now. मणिपुर पे चर्चा करो और मणिपुर पे चर्चा करो. So the protest also being staged by the opposition leaders at the Gandhi statue. Meanwhile, they are also in a huddle to discuss what is going to be the strategy ahead for the remainder of the Parliament sessions. This is week 2, of course, day 9th of the monsoon session. Remains to be seen whether there's going to be a constructive debate that takes place inside the House, something that the central government has been insisting on, or if it's going to be another day of sloganeering and ruckus with nothing substantial in the House on Manipur violence in the Parliament. We slip in a very short break, also closely tracking all updates from Pune, as Prime Minister Modi and Sharad Pawar would be sharing stage at an event in Pune today. Also, Amit Shah likely to table the bill to replace Delhi ordinance in Parliament today. When the opposition starts celebrating not the victory of a no-confidence motion, but the admission of the motion in Parliament. The I.N.D.I.A cannot even push through the motion if there is external support. A no-confidence motion is a serious matter. It is not a necessary rite of passage. It's not like having breakfast or lunch. It is something serious which must be done when there is something serious to debate. I say debate Manipur, but why a no-confidence motion? They are not even united on basic issues among themselves, and they call themselves I.N.D.I.A, and they waste our time by bringing in a no-confidence motion. It is an act of absolute futility. The people are serious. The people want governance, and I say with all the conviction at my command, stop the futility of the no-confidence motion. The opposition should unitedly take back the no-confidence motion and not waste the nation's time. If it is for their amusement, then it is a very, very expensive source of amusement that we pay.
When the opposition starts celebrating not the victory of a no confidence motion, but the admission of the motion in Parliament. The I.N.D.I.A cannot even push through the motion if there is external support. A no confidence motion is a serious matter. It is not a necessary rite of passage. It's not like having breakfast or lunch. It is something serious which must be done when there is something serious to debate. I say debate Manipur, but why a no confidence motion? They are not even united on basic issues among themselves, and they call themselves I.N.D.I.A, and they waste our time by bringing in a no confidence motion. It is an act of absolute futility. The people are serious. The people want governance, and I say with all the conviction at my command, stop the futility of the no confidence motion. The opposition should unitedly take back the no confidence motion and not waste the nation's time. If it is for their amusement, then it is a very, very expensive source of amusement that we pay. When the opposition starts celebrating not the victory of a no confidence motion, but the admission of the motion in Parliament. The I.N.D.I.A cannot even push through the motion if there is external support. A no confidence motion is a serious matter. It is not a necessary rite of passage. It's not like having breakfast or lunch. It is something serious which must be done when there is something serious to debate. I say debate Manipur, but why a no confidence motion? They are not even united on basic issues among themselves, and they call themselves I.N.D.I.A, and they waste our time by bringing in a no confidence motion. It is an act of absolute futility. The people are serious. The people want governance, and I say with all the conviction at my command, stop the futility of the no confidence motion. The opposition should unitedly take back the no confidence motion and not waste the nation's time. If it is for their amusement, then it is a very, very expensive source of amusement that we pay. When the opposition starts celebrating not the victory of Good morning and thank you very much for staying with us on Republic TV. This is live and breaking. I'm Nupur Talwar Suri. Well, the Parliament session will be reconvening any minute now. Both the Lok Sabha and the Rajya Sabha will have to wait
and watch out for what happens there. Do remember that the Home Minister is likely to table the bill to replace the Delhi ordinance, so one would expect a lot of ruckus in both houses. We'll get you all of what's happening there in just a bit. First, we look at the headlines. Prime Minister Modi and Sharad Pawar will be sharing a stage at an event in Pune today. Opposition parties under the India Alliance will be protesting against Prime Minister Modi's Pune visit. Internet is suspended in Haryana's Noor. Section 144 is imposed after violent clashes. Additional forces are deployed. Situation remains tense. Political parties appeal for peace. Amit Shah is likely to table the bill to replace the Delhi ordinance in Parliament today. And a girder machine collapses near Thane. At least 17 people are killed. The NDRF teams are still trying to recover people from the debris. Well, Prime Minister Narendra Modi has arrived in Pune, where he will be conferred with the Lokmanya Tilak National Award. Top NCP sources have confirmed to Republic TV that in fact Sharad Pawar, the NCP Supremo, will be attending the event. Now, this is the Lokmanya Tilak Award ceremony that is going to be held in Pune. The Prime Minister is being honoured over there. Apart from this, of course, the Prime Minister will also lay the foundation stone for various development works in the city. Now, meanwhile, the Prime Minister will start his day by offering prayers at a temple in Pune. So, pictures on your screen are of the BJP cadres welcoming the Prime Minister to Pune. Do remember that the Prime Minister, of course, is being conferred with an important award over there. Let's go across to a report that was filed by our correspondent Sandeep Walia. Prime Minister Narendra Modi is all set to visit Pune today. And in fact, for welcoming Prime Minister Narendra Modi, you see the people out here have gathered, and in fact, Prime Minister will be visiting the Dagdu Shet, the infamous Dagdu Shet temple out here, and he will be taking the darshan of Lord Ganesha out here. This is one of the prominent places in Pune, and in fact, Prime Minister Narendra Modi will be in fact offering prayers out here, and in fact heavy security has been deployed by the Pune police. As you see in the visuals, the local Punekars have in fact arrived here to just get one glimpse of Prime Minister Modi. Will try to speak to few people out here. आप बताएं, प्राइम मिनिस्टर मोदी आज आ रहे हैं पुणे को, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की सौगात मिली है, कितनी खुशी है? बहुत ही खुशी है हमें, हमारे प्राइम मिनिस्टर पुणे में पधार रहे हैं, इसलिए उनका स्वागत के लिए हम रुके इधर. वी हैव फ्यू मोर पीपल. आप मोदी जी को देखने के लिए आए? हाँ. कितनी खुशी है आपको, मोदी जी को पहली बार मिलेंगे? बहुत. आप बताएं, आप इनकी केंद्रीय वित्त आयोग और संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से पंचायतों को सक्षम करने के लिए पंचायत राज मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर प्रयास करते रहते हैं और बढ़ावा देते रहते हैं. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से क्षमता निर्माण के लिए पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की 2 बार ट्रेनिंग दी जाती है. ओरिएंटेशन प्रबोधन का ट्रेनिंग दिया जाता है तथा 2 साल के अंदर रिक्रिएशन यानी पुनश्चर्या के लिए भी प्रबोधन किया जाता है, ताकि प्रभावी ढंग से पंचायतों में चुन के आए वो जनप्रतिनिधि है वो अपना कार्य कुशलता से करे. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से पंचायतों को पंचायत भवन निर्माण के लिए और जिस पंचायत में कंप्यूटर नहीं है उसको कंप्यूटर देने के बारे में भी इसमें प्रावधान है. केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान के माध्यम से अनुसूची में शामिल 29 विषयों के तहत आवश्यक कई बुनियादी सुविधाएं हैं, उस सुविधाओं का काम किया जाता है, जैसे कि पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, सीवरेज, ऐसे काम वित्त आयोग के माध्यम से किए जाते हैं.
मुझे बताने में खुशी है कि जब 10वां वित्त आयोग आया था तो उसका बजट था 4,380 करोड़। 11वां वित्त आयोग आया, उसका बजट 8,000 करोड़ था। फिर 12वां वित्त आयोग आया, उसका बजट 20,000 करोड़ था। तो 13वां वित्त आयोग आया, 13वां वित्त आयोग का बजट 60,050 करोड़ था। देश में सत्ता परिवर्तन हुआ और देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई और पंचायतों को सक्षम करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया गया और 14 वित्त आयोग में 2,292 करोड़ रुपए का प्रावधान पंचायतों को सक्षम करने के लिए किया गया और 2021 से 26 के लिए 15 वित्त आयोग आया, उसके अंतरिम 20-21 के लिए 60,750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और 21 से लेकर 26 तक 2,36,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। अंतरिम और मूल दोनों को जो अगर जोड़ा जाए तो पंचायतों को सक्षम करने के लिए लगभग 2,97,555 करोड़ का प्रावधान फाइनेंस कमीशन के माध्यम से इस पंचायतों को सक्षम करने के लिए किया गया है। माननीय सदस्य ने मध्य प्रदेश के बारे में जनजाति के विषय में उन्होंने एक सवाल पूछा है। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से शाश्वत करना चाहूँगा कि संविधान के 90वें प्रावधान के तहत पंचायत स्तर के सभी प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी ये राज्य सरकार की है। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की सूची मैं माननीय सदस्यों को दूंगा। हाल ही में हमारे मंत्री जी ने सभी राज्य सरकार को पत्र लिखा है, उनमें उन्हें विनती की है कि सभी ग्राम सभाओं को सक्षम करके केंद्र सरकार की जितनी भी योजना है वो गांव तक जाने के लिए जिला पंचायत के माध्यम से गांव को जागृति लाने के लिए काम करे, ताकि जनजाति समाज के लिए जो योजना है वो उन तक पहुंचाने का काम करे। पार्लियामेंट्री हाँ जी, मेरा पूरक प्रश्न है कि जनजाति क्षेत्र में पंचायतों को क्या क्या विशेष अनुदान प्रदान किया जा रहा है जिससे जनजाति क्षेत्रों को लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, देश में जनजातीय आबादी के विकास के लिए सरकार के कई मंत्रालय, जैसे हाल ही में जनजाति मंत्रालय के माध्यम से इसी हाउस में उत्तर दिया गया था कि केंद्र सरकार के 42 ऐसे मंत्रालय हैं जो जनजाति के लिए काम करते हैं। जैसे शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट के माध्यम से निधियों का आवंटन किया जाता है। इसमें अपने अपने मंत्रालय के माध्यम से निधियों का आवंटन होता है। राज्यों के सभी पंचायतों के विकास के लिए हर एक मंत्रालय उनके विकास के लिए निधि का आरक्षित करना ये जरूरी समझ के उसका आरक्षण करते रहता है। जैसे हमारा Cutting across to pictures that we are getting of the Prime Minister reaching Pune. Do remember that he has a series of engagements there, including, of course, the award that he will be getting. So pictures on your screen are of the Deputy Chief Minister and the Chief Minister Eknath Shinde welcoming the Prime Minister. Both of them, of course, welcoming the Prime Minister in Pune. Now, there has been considerable controversy around the fact that Sharad Pawar of the NCP will also be at this award ceremony that takes place later in Pune. Now, apart from the award ceremony, there are several other engagements for the Prime Minister, including, of course, the inauguration of metro services in phase 2 of the Pune Metro. There are other engagements also, but he will begin his day with a visit to a temple. Thereafter, of course, he will be inaugurating those 2 metros and the award ceremony that then takes place. The Prime Minister, of course, is in the city for the award ceremony, and
he will be conferred with the Lokmanya Tilak National Award over there. Now, there was, of course, considerable controversy around Sharad Pawar being also there for this award ceremony. Do remember that the NCP has a split, and one faction of the NCP is supportive of the government in Maharashtra. In fact, Ajit Pawar is the second Deputy Chief Minister in the state of Maharashtra. Sandeep is joining us live from Pune, and he's covering this visit of the Prime Minister. Sandeep, give us a sense of what his day is looking like. We do know, of course, that apart from the award ceremony where he will be conferred the Lokmanya Tilak National Award, there are other engagements that he has as well. See, definitely several events are lined up for Prime Minister Narendra Modi, and in fact any time from now he will be, in fact a convoy is here. The convoy of Prime Minister Modi has arrived out here, and as I give you the visuals, Prime Minister Narendra Modi has arrived out here, giving you the live visuals. This is the visuals for exclusively from Republic TV. Prime Minister Narendra Modi has arrived here at Dagdu Shet Temple. Now he has several events lined up. He will be in fact offering prayers at Dagdu Shet Temple. Following which he will be in fact attending the Lokmanya Tilak. Live visuals from Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Narendra Modi, TV straight. He will be inaugurating the Metro Phase 1. Inaugurating the Metro Phase 1. The Metro Phase 1, in fact, project, and apart from that, several development projects will be, in fact, inaugurated. The Parliamentary Awas Yojana, several development projects will be, in fact, handed over to the people of Pune. And Chief Minister Eknath Shinde is out here. He is there with him in the convoy. And as you see, there are several events lined up, and in fact, Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis is also with Prime Minister Narendra Modi. So definitely Lokmanya Tilak Award is in fact conferred to Prime Minister Narendra Modi, and in fact after that he will be inaugurating several development projects in Maharashtra's Pune, and definitely a big gift for the people of Pune, and in fact we'll get live reactions. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी आपने देखा, क्या भावनाएं हैं आपकी? हमको बहुत सौभाग्य मिला उनको देखने का। बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है उसका उद्घाटन क्या मोदी जी ने क्या उद्घाटन करेंगे? आज दगड़ू शेठ आए हैं, बाकी दिन में लोकमान्य तिलक अवार्ड मिल रहा है, कितनी खुशी है? बहुत ही खुशी है। मोदी आज गणपति को आए तो बहुत एक नंबर का दिन है वो आज। पहले प्रधानमंत्री जो यहाँ पे दगड़ू शेठ के दर्शन करने पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं लोकमान्य तिलक अवार्ड भी उनको नेशनल अवार्ड मिल रहा है, कितनी खुशी है? बहुत बहुत खुशी है। हमारे पुणे के लिए सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ उनको अपने आंखों से उन्हें देख रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। The people out here are very delighted. In fact, we'll get some more reactions. आपने मोदी जी को देखा, कितनी खुशी हुई आपको? बहुत हो गई। So definitely, as you just heard the reactions out here from the people. Definitely, a lot of development projects will be in fact inaugurated by Prime Minister Modi. Metro Phase 1 will be inaugurated. Apart from that, the Parliamentary Awas Yojana, more than 3,000 houses will be in fact inaugurated by and handed over by Prime Minister Modi. In fact, this is the huge gift for the people of Pune out here, and remember for the upcoming elections, in fact it will be very much crucial for Bharatiya Janata Party and the ruling government as well. Now at this point of time, one of the most important thing out here is that NCP chief Sharad Pawar will be in fact sharing stage with Prime Minister Narendra Modi in the Lokmanya Tilak Award, and in fact what we've been told is that there are most chances that Ajit Pawar will also be present at that very point. So definitely where the states and the national politics will take turn, that is something that we have to look out for. But yes, Prime Minister Narendra Modi has in fact arrived out here in Pune. He will be taking darshan at Dagdu Shet Temple of Lord Ganesha. After that, he will be going to SP College, where he will be in fact conferred the Lokmanya Tilak National Award. After that, he has an event at the police line, and in fact he will be addressing the people out there. So definitely a lot of things lined up out here. We have few more people out here. We'll speak to them. Pradhan Mantri Narendra Modi
पुणे आए हैं, काफ़ी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे, कैसे देखते हैं आप इसे? ये पुणे के लिए प्राउड मूवमेंट है, हमको खुशी है पीएम के हाथ से ये इनॉग्रेशन हो रहा है इसका। आप बताएं कितनी खुशी की बात है आपके लिए? बहुत ही बड़े, ये ऐतिहासिक ठिकान है जो पुणे है, और शनिवार के पास से गए तो हमारा भी भाग्य है और पूरा पुणे वासी का भाग्य है। भगवान गणेश के दर्शन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं उनके साथ। आप क्या चाहते हैं एज अ पुणेकर, आपकी क्या राय है? पुणेकरों के हिसाब से उन्होंने जो काम किए हैं वो फायदे की किए हैं। ये शनिवारवाड़ी का जो 100 मीटर का दायरा है वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकते या रिपेयरिंग नहीं हो सकता। मोदी जी के हाथ में है, अगर वो रिपेयरिंग के बारे में कुछ सोचे। So definitely a lot of expectations from the people of Pune, but yes, a huge gift for Punekars as there are multiple and development projects will be in fact inaugurated by Prime Minister Modi. It is a mega event that is happening in the state of Maharashtra, and several political things also lined up as of today. As National Award, Lokmanya Tilak National Award is also being conferred to Prime Minister Narendra Modi. NCP Chief Sharad Pawar will be in fact present at that very function, and in fact there are high chances that Ajit Pawar will also be present out there with Prime Minister Modi and his uncle Sharad Pawar. So definitely a lot of things that is gonna happen today in Pune's Maharashtra's Pune's in fact. Right, Sandeep, what I wanted to ask you was that politically, is this visit being viewed as being significant? Because, both factions of the NCP will be at the award ceremony. What are you hearing from your sources? Are there talks likely between Sharad Pawar and senior BJP leaders? See, as far as my sources are concerned, I have been informed by my sources that it was in fact NCP Chief Sharad Pawar to make a call to Prime Minister Narendra Modi and invite him for this very event. Now, this is one of the prominent award function that is taking place, and in fact, Lokmanya Tilak National Award will be in fact conferred to in fact Prime Minister Narendra Modi. So there are definitely a lot of things behind the doors, and now there are also gossips about several things regarding to the upcoming turn over in the state of Maharashtra. Remember how things changed within the Nationalist Congress Party, how Ajit Pawar in fact switched the side and formed and joined the government. In fact, there is still hopes within the NCP that there are high chances that Sharad Pawar may soon join Ajit Pawar, but there is no confirmation over it. As of now, Sharad Pawar is still with I.N.D.I.A, that is the opposition alliance. But yes, definitely we have seen in the past as well how Ajit Pawar and his colleagues had been meeting Sharad Pawar to convince him to join the National Democratic Alliance. All right. Sandeep, do stay with us. We'll come back to you in just a bit. But our senior executive editor, Abhishek Kapoor, also joining us on the phone line right now. Abhishek, obviously, with the fact that Sharad Pawar will be in attendance at that award ceremony, there are, multiple meanings that are being taken out of it. Politically, it is significant considering the fact that there is only one faction of the NCP which actually supports the current Maharashtra government. Ajit Pawar is the Deputy Chief Minister, but Sharad Pawar in the past has made it clear that he has no intention of, essentially joining this section. Well, obviously not, but this award ceremony, Nupur, the Lokmanya Tilak Memorial Award, which is being given by the Tilak Smarak Trust, which is run by the family of Lokmanya, is, I believe, an impression is, or a message is being sent that this is about politics. Because remember, one of the trustees of the trust is, of course, Rohit Tilak, who's great grandson of Lokmanya Bal Gangadhar Tilak. Also, one of the trustees is Congress veteran Sushil Kumar Shinde. And so obviously, while we have Congress party saying that, when the Prime Minister goes to Pune, they would be holding black flag protests. We have these Congress leaders. Remember, Rohit Tilak also is a congressman in Pune. And these are Congress leaders who are trustees of the Lokmanya Tilak Smarak Trust. And they have decided that the award has to be given
to Prime Minister Modi. Earlier also given to Atal Bihari Vajpayee, for example. So I think this is the family of the Lokmanya wanting the award and the trust to be above politics, and Sharad Pawar perhaps respecting that. But what is important is that this is the first time that Prime Minister Modi and Sharad Pawar would be face to face after that very vertical split in the Nationalist Congress Party, and Sharad Pawar having left with only a rump centered around his family and effectively essentially his daughter, Supriya Sule. So I think this is going to be interesting. The optics, number one, and the chemistry, number two. Because remember, it is Prime Minister Modi's government that had given the Padma Bhushan to Sharad Pawar. And I remember, in fact, in 2015 or 2016, when Sharad Pawar completed 80 years of his life, 75 years of his life, there was an event in Delhi in Vigyan Bhavan where Sharad Pawar was felicitated, and one of the key speakers was Prime Minister Narendra Modi. So I think that kind of courtesies of public life, decencies of public life, they have been maintained by both the sides. On the side of Prime Minister, by being present in the felicitation event of Sharad Pawar, and then of course his government giving him the Padma, and then Sharad Pawar perhaps now reciprocating when the Tilak Award is being given to Prime Minister for his public service. Sharad Pawar is physically present there, or going to be present there when the Prime Minister reaches there in a while from now. Now, Abhishek, do you think that too much is being made in that sense, of this meeting? But given the fact that, Mr. Pawar is known to be quite a wily politician, obviously, his every move is watched very, very closely. Well, yes, in some ways, every politician has to be wily. That's how politics is. So it's not just about Sharad Pawar. But then in politics also, optics are a substantial part of the messaging. The pictures speak as much as a verbal message would be. So it would be interesting how the two really meet when they come face to face. Prime Minister Modi and Sharad Pawar after that split in the party, which essentially was led by Ajit Pawar. Let there be no doubt that irrespective of what narrative is pushed about BJP doing this, BJP doing that, the issue is the discontent of Ajit Pawar led him into the lap of the BJP, and the BJP has accommodated him like it has multitude of congressmen, from the latest one being Anil Antony being taken into the core committee of the national president of the BJP, of his list of office bearers, his name being found, despite that he joined the party just about 3-4 months back, to seniors like Himanta Biswa Sarma and Jyotiraditya Scindia, who both are in the first case the chief minister, or a very successful chief minister of Assam, and Jyotiraditya Scindia, who's a cabinet minister in the government now. So obviously the BJP has been broad basing its talent pool by this inorganic growth, so to say, taking in who have mass base, but at the same time perhaps not very happy where they are, or perhaps they don't see their own future in whichever political party they are. That happens to be the case with Ajit Pawar also, which he so eloquently, with a lot of emotion, brought out in that rally after his marching out of the NCP, where he said that I've been Deputy Chief Minister 4 times, do I not want to be the Chief Minister? Though, of course, that's another set of problems for the BJP, because if Ajit Pawar has quit NCP because he wants to be Chief Minister, what happens to Devendra Fadnavis? And in all likelihood, then the most shaky ground is beneath Eknath Shinde, who can be seen in these pictures receiving the Prime Minister, and Ajit Pawar watching from the side. So I think it's going to be very interesting. The politics itself, anyway, always is interesting. But for me, the optics of Sharad Pawar and Narendra Modi sharing the dash when the award is given to the Prime Minister, and how the chemistry pans out would be interesting to watch out. All right, Abhishek, thank you for the moment for joining us. So, of course, we are now learning that the Prime Minister, after the visit to the temple, will then be going to receive the award, and Sharad Pawar may already be on his way to the venue. I think we're getting some reactions to it. Let's listen in. I think we should not look at it from a political angle. Honorable Pawar Sahab is attending a function in respect to Lokmanya Bal Gangadhar Tilak ji,
who is revered in Maharashtra. He is one of our tallest leaders and everybody reveres him. So Pawar Sahib is attending that function as a mark of respect to Lokmanya Tilak, and there is no political overtones to this. The trust has invited Pawar Sahib and the trust is giving away the award. So attending the function is just on a private basis. अभी शिवसेना यस ये तिलक मंदिर स्मारक ट्रस्ट जो है, उन्होंने ये जो पुरस्कार जो है उसका आयोजन किया है. ये कार्यक्रम में आदरणीय शरद पवार साहब जा रहे हैं. वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को एक सम्मान देने के रूप में जा रहे हैं. वहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी साहब को ये अवार्ड दिया जा रहा है. तो इसे राजकीय स्वरूप देना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक प्राइवेट संस्था है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है. और पवार साहब सिर्फ ये फंक्शन अटेंड कर रहे हैं क्योंकि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के नाम पे है. Motorola, India's best 5G smartphone brand. A look at some other news from across the country. 2 home guards were shot dead and about a dozen policemen were injured after a clash broke out between 2 groups in Haryana's Noor district on Monday. Internet services have been suspended for 3 days and Section 144 has been imposed in the district. All educational institutions, including schools, colleges and coaching centres, will remain closed for today in Gurugram. The order has been issued by the district magistrate in wake of clashes between 2 groups in Noor on Monday. सोना में भी कुछ लोगों ने पथराव करने की कोशिश करी थी, उसमें भी अभी स्थिति अंडर कंट्रोल है और हम बाकी गुड़गांव में भी पूरी पुलिस पूरे तरीके से तैनात है और सोशल मीडिया की प्रॉपर मॉनिटरिंग चल रही है. तो मैं सभी गुड़गांव वासियों से अपील करूंगा कि वो लोग भी मतलब पूरा अपना पेशेंस रखें और अपना पूरा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को. Crackdown continues on Rohingyas in Tripura. The DGIP Tripura Police has said that 52 Rohingyas have been arrested this year and they have launched a nationwide network to trade out illegal trespass of Rohingyas who are trying to infiltrate India. At least 17 workers were killed as a girder machine fell on them during construction of the 3rd phase of the Samruddhi Expressway in Maharashtra's Thane district in the wee hours today. The accident took place near a village in Jaipur Tehsil of Thane district. Sharad Pawar will be sharing the stage with the Prime Minister at an event in Pune. This as the Lokmanya Tilak National Award constituted by the Tilak Smarak Mandir Trust in 1983 to honour the legacy of the legendary freedom fighter will be conferred on the Prime Minister today. Sharad Pawar has been invited as the chief guest. The Indian Space Research Organisation has said that Chandrayaan-3 has completed its orbit around the Earth and is heading towards the Moon. ISRO has said that it would attempt a soft landing on the lander on the lunar surface on the 23rd of August. You are with Republic TV. On the other side, Amit Shah is likely to table the bill to replace the Delhi Ordinance in Parliament today. And a girder machine collapses near Thane. At least 17 people are killed in the mishap. When the opposition starts celebrating not the victory of a no-confidence motion, but the admission of the motion in Parliament. The I.N.D.I.A cannot even push through the motion if there is external support. A no-confidence motion is a serious matter.
हरये नमः श्री कृष्ण परमं पूर्णं कर्तुं शिवात्मको धुना देवा एतद चंपक पुष्पं समर्पयामि महागणपतये नमः शमीपत्रं समर्पयामि ओम गंगणपतये नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यं हरये नमः श्री कृष्ण परमं पूर्णं कर्तुं शिवात्मको धुना देवा एतद चंपक पुष्पं समर्पयामि महागणपतये नमः शमीपत्रं समर्पयामि ओम गंगणपतये नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यं हरये नमः श्री कृष्ण परमं पूर्णं कर्तुं शिवात्मको धुना देवा एतद चंपक पुष्पं समर्पयामि महागणपतये नमः शमीपत्रं समर्पयामि ओम गंगणपतये नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् All right, viewers. So the Prime Minister offering prayers there. The Prime Minister arrived and we see a very rousing welcome in Pune a short while back. Right now he's offering prayers at a temple in Pune. The Prime Minister was greeted with an enthusiastic reception in Pune when he was en route, in fact, to this temple where he's seeking blessings from Lord Ganesha. And on his way to Pune, the Prime Minister made his way to the temple, people lining the streets, eagerly waving at him. Let's go straight to Abhishek Kapoor, who's joining us on the phone line, our senior executive editor. Abhishek, take us through the latest details that are coming in. Well, we are seeing in the pictures Shivangi Prime Minister participating in the prayers at the very famous Dagadu Kshetra Ganapati Mandir in Pune, and it's a very famous landmark. I mean, you go to Pune and you don't visit the State Temple, the visit remains incomplete, as they say. So the Prime Minister, of course, he does that wherever he travels and wherever these landmarks are. But he's there to, among other things, receive an award in the memory of Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, the powerful statesman of our freedom struggle. And it's given annually on the death anniversary of Bal Gangadhar Tilak in Pune, and it's run by the family of Lokmanya, and it just so happens that it is causing some controversy because the trustees happen to be senior Congress leaders, including former Chief Minister of Maharashtra and former Union Home Minister Sushil Kumar Shinde, for example, and that has and to add to it the fact that the NCP patriarch Sharad Pawar is going to be there. He has consented to be present when the award ceremony happens, and the Prime Minister has bestowed that award for his public service to the nation. And this is the first time Sharad Pawar and Prime Minister Modi would be coming face to face after the vertical split in Sharad Pawar's party, the NCP, which was led by his nephew Ajit Pawar, who is now the Deputy Chief Minister in the Maharashtra government led by the BJP. So I think it's going to be very interesting. Prime Minister, of course, is going to be inaugurating a few projects, development works in Pune, dedicating or transferring the ownership of about 4,000 plus homes under the Prime Minister's Awas Yojana, or the Parliamentary Awas Yojana as it is called, to the beneficiaries. Apart from that, he's going to inaugurate or dedicate to the residents of Pune the final section of the Pune Metro, among other things. So it's going to be an important day there for the people of Pune. But then this controversy around the Prime Minister's award, there will be a couple of things to be watched out for. So the address that the Prime Minister makes while receiving the award, which has maintained the tradition of being bipartisan. So despite the fact that it's run by a family which still owes its allegiance to the Congress party, this is an award which is now being given to the Prime Minister. Earlier it has been given to
Atal Bihari Vajpayee, for example. So I think it would be, and also the other aspect would be apart from watching for the Prime Minister's speech, how the exchange of pleasantries, the exchange of courtesies pans out between Sharad Pawar and Prime Minister Modi, given the fact that they are coming face to face for the first time after the split in NCP. The trustees have sent across a message that they want to keep their trust and the award above politics. And yet, in politics, optics are also a message. So when Sharad Pawar shares the stage with Prime Minister, what's going through the body language and how they, reconcile with that split, which Sharad Pawar perhaps would want to blame it on the BJP, but the fact is that it was Nehru who was discontented and unhappy being in NCP because he thought that his ambitions are being given a go by in the interest of the career of Supriya Sule, who happens to be the daughter of Sharad Pawar. So I think those would be important markers to watch out in the overall discomfiture that Sharad Pawar saying yes to be present and actually being present at the award ceremony goes. As of now, of course, we are seeing pictures of Prime Minister carrying on with the prayers at the Guru Tirth temple, and then of course he would be coming to the Narayan Peth where the award is to be given and bestowed on him for his public service to the nation by the Tilak Smarak Trust. It would also be interesting whether Prime Minister uses this opportunity only to speak about his governance and public service through governance. I think he has completed his prayers and now he's getting up. He's completed his prayers and these are repeat pictures. I believe Prime Minister would have gotten up and left. But coming back to the conversation we were having, essentially it would be interesting to see whether Prime Minister limits his speech to his own governance and his public service through his government, and not just during his Prime Minister days, but from 2001 onwards, being 20 plus years, 22 years now that he has been in an executive role. The service to the nation through his role as Chief Minister of Gujarat and then Prime Minister of the country. But would he also take the opportunity to comment on politics? Would he, for example, speak about the fact that the phasing out of Lokmanya Tilak because of a certain brand of politics that the Lokmanya practiced by the time that the Gandhi-Nehru thought became mainstream in the Congress party? It would be interesting whether he does that, because we have seen increasingly the BJP appropriating to itself the legacy of Sardar Patel, who was a Congress leader, B.R. Ambedkar, who happened to be in Congress, among others. So I think it would be interesting how this particular speech of the Prime Minister pans out. And as I said, apart from the address, the optics when Sharad Pawar and Prime Minister come face to face. Absolutely, Abhishek. So the Prime Minister is visiting Maharashtra's Pune city, where he will lay the foundation stone of various development projects, and the Lokmanya Tilak National Award, he will receive that. Abhishek, if you could take our viewers a little bit more about what exactly are these development projects, because we know that he'll open a new metro rail line extension that will make commuting between Pimpri-Chinchwad and Pune easier and faster. Now, Pimpri-Chinchwad is an area in Pune where there are a lot of IT companies. It's pretty far away from the main Pune city. And this, I'm sure, will be a great blessing for those who are working in Pimpri-Chinchwad, especially those who stay in Pune who commute, and the other way around as well. Yeah, of course. Shivangi, the Prime Minister, is in Pune because he has to inaugurate all these projects which have a substantial amount of central funding. So, a solid waste management project in Pimpri-Chinchwad municipal area, then the metro about which you mentioned, and the Prime Minister's Awas Yojana houses that will be delivered to the beneficiaries, about between 4,000 to 5,000 of them, and the award. So I think the next couple of hours are going to be interesting to watch out for in terms of Maharashtra politics. We have seen how
the Congress party has expressed its displeasure at Sharad Pawar agreeing to be present, while at the same time one of the trustees in the Tilak Smarak Trust happens to be Sushil Kumar Shinde, who is a former Chief Minister of Maharashtra and a former Union Home Minister and a Congress veteran. And yet the Congress party, I think, finds itself in a pick-one situation. You see in the pictures, Prime Minister having completed the prayers, now engaging with the priests. These pictures seem to be from earlier, when Prime Minister entered with the Guru-shaped Ganpati, very famous landmark of Pune, and Prime Minister there carrying out prayers after. All right, so Abhishek Kapoor, senior executive editor, we'll just get back with him in just a moment, but the visuals on a screen of the Prime Minister offering prayers at the iconic Ganesh temple there in Pune, and we also know the Prime Minister will be receiving the Lokmanya Tilak Award. That is going to be a very big event, which will be happening in just 5 minutes. As the counter is on your screen, we're counting down for Pawar to confer the awards to the Prime Minister Modi. Remember, the award is given to the people and those distinguished individuals who have worked very hard for progress and development of the nation, and whose contributions can only be looked upon as remarkable and extraordinary. So it is presented every year on August 1st, which is today. August 1st being the death anniversary of Lokmanya Tilak. So viewers, in fact, the NCP chief Sharad Pawar also has been invited as the chief guest for the event. So visuals coming in right now, and like Abhishek Kapoor, our senior executive editor, was telling us, we will also be seeing many development projects being inaugurated. Let's go back to Abhishek Kapoor, our senior executive editor. Abhishek, glad you're back with us right now. And our viewers, if you could help our viewers understand what's the significance of the Lokmanya Tilak Award. And I was also telling our viewers that this is an award which is conferred to those individuals whose work has been remarkable in the development of the nation. So Lokmanya Tilak celebration as a We will be getting back with Abhishek Kapoor in just a moment, but like we were telling you, the Prime Minister will be receiving this award. He'll become the 41st recipient of the award, and it has been previously presented to Dr. Shankar Dayal Sharma, Pranab Mukherjee, Atal Bihari Vajpayee, Indira Gandhi, among others. So this is a very special event. We're counting down to it, just around 3.5 minutes left for that. But like we were telling you, the Prime Minister will also be flagging off metro trains, marking the inauguration of services on completed sections of the 2 corridors of the Pune Metro Phase 1. Let's go straight back to Abhishek Kapoor. Abhishek, go ahead. Well, Shivangi, yes. So we have, for example, the great grandson of Lokmanya Tilak, Rohit Tilak, who is actually a Congress leader in Pune, and he is also a trustee of the Tilak Smarak Trust, which is bestowing this award on the Prime Minister. He has come out and responded to the charge of the Congress that the Congress or anyone associated with the Congress should not be seen to be soft on the Prime Minister, not the least giving him an award, at the very least not giving him an award. And Rohit Tilak has responded by saying that we want to keep this award and the trust above politics and bipartisan, and the proof of which is that even Atal Bihari Vajpayee has been bestowed this award, and it has been going on since 1983. And if you look at it, this completes 40 years now, and we are seeing Prime Minister Modi being awarded in the presence of none other than Sharad Pawar, to which the Congress party also had taken umbrage. And in fact, I believe as we speak, Shivangi, there are some protests which are on in some parts of Pune, where the Congress leaders locally are protesting this
giving of Lokmanya Tilak Award to Prime Minister Modi for his public service and through his public service, furthering the cause of India's progress. So I think this is going to be interesting, as I said, on a couple of fronts. The pictures that will come out tomorrow in the newspapers of Sharad Pawar and Prime Minister Modi exchanging pleasantries or sitting together. The address that Prime Minister is going to make is going to use the opportunity to, in any manner, whatever he says, obviously is going to be seen as the BJP's next outreach in terms of appropriating one more freedom stalwart. The fact that BJP has already done so in the case of Sardar Patel, has already done so in the case of B.R. Ambedkar, among others. So those aspects are going to be very interesting to watch out for. Right, Abhishek. Abhishek is getting us top updates right now. Abhishek Kapoor getting us top updates. It's almost about time. We're counting down to that event where the Prime Minister will be receiving the award. He will be receiving the Lokmanya Tilak Award, and we're counting down to that. It's going to begin any moment now. And those are the visuals coming in from the iconic Ganesh temple where the Prime Minister had offered prayers just a short while back. Abhishek, if you're with us, if you could take our viewers to the political angle of what is going to happen next, because we know that Sharad Pawar and the Prime Minister will be sharing the stage, and this is very significant. All right, we'll go straight back to Abhishek Kapoor on that. So the Prime Minister will be visiting, is in fact there in Pune city, where he will lay the foundation stones of various development projects and also receive the Lokmanya Tilak National Award. We are counting down to the award being conferred to the Prime Minister. And right now, the visuals on the screen of the Prime Minister offering prayers and doing a darshan and a puja at the iconic Ganesh temple in Pune. And anytime now, he will confer the Lokmanya Tilak National Award, which is constituted by the Tilak Mandir Trust to honor the legacy of Lokmanya Tilak, as per, in fact, it's going to be an award which is given to the people, the individuals who have worked extremely hard for the progress and development of the nation and whose contribution can only be looked upon as remarkable and extraordinary. Now, this award is presented every year on August 1st on the death anniversary of Lokmanya Tilak. NCP Chief Sharad Pawar has also been invited as a chief guest for the event, and the Prime Minister will be conferred the award shortly. We'll be soon joined by our correspondents right now to help us understand the significance of this event, but the Prime Minister will be becoming the 41st recipient of the award, and it has been previously presented to individuals who have done a lot for the progress of a nation, including Dr. Shankar Dayal Sharma, Pranab Mukherjee, Atal Bihari Vajpayee, among others, viewers. At around 12:45 p.m., later on, in fact, this event will happen later on today. The Prime Minister will flag off metro trains and inaugurate and lay the foundation stone for various development projects. The Prime Minister will flag off the metro trains, marking the inauguration of services, completed sections of the 2 corridors of the Pune Metro Phase 1. Let's go ahead and play the reactions coming in. Honorable Sharad Pawar Sahab attending the Tilak Smarak Mandir Trust Award function in Pune, where the Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, will be awarded. One must understand that this function has been organized by a private trust and there is no political involvement in it. I think we should not look at it from a political angle. Honorable Pawar Sahab is attending a function in respect to Lokmanya Bal Gangadhar Tilak ji, who is revered in Maharashtra. He is one of our tallest leaders and everybody reveres him. So Pawar Sahab is attending that function as a mark of respect to Lokmanya Tilak, and there is no political overtones to this. The trust has invited Pawar Sahab and the trust is giving away the award. So attending the function is just on a private basis.
So every time we see that the vision which Lokmanya Tilak ji had thought that time, so according to that we try to look in the names, and the fourfold program which was given by him of Swaraj, Swadeshi, boycott and national education. So Swadeshi means to have a self-reliant India, to grow our own business, not to be dependent on anybody, and to create employment here, create manufacturing units here, and make our own business house very, very powerful. So this government is working on the same policy through Atmanirbhar Bharat, Make in India. Environment is created for setting up the factories, then young entrepreneurs are promoted here. And even the national education policy, if you see, more it is skill based, what they have done. So the national education also, what Lokmanya Tilak ji had said, proposed that time, it was not just mere what we learn, but it is for what he appealed to everybody was learn what is required to grow our own business. And this skill-based policy is for same. To grow our own business, we can have our own workers and experts here to grow Indian business, to make India self-reliant. And same way, what we can see in the Prime Minister's vision is he has a lot of confidence in our cultural roots, and he is always connected to that. So through Ganesh Utsav, even Tilak ji had and Chhatrapati Shivaji Maharaj Utsav gathered people together and had educated them to that. So considering all these things, this year all the trustees decided that we would honor our Honorable Prime Minister with this national award. All right, let's go straight to Sandeep, who's joining us. Our correspondent Sandeep is joining us live. Take us through what we can expect next, because you're in Pune right now, and we know that the Prime Minister will be inaugurating many such projects which will lead to the further development of the Pune city and the other areas around. Right, Shivangi, as you rightly mentioned, Prime Minister Narendra Modi is in Pune, and several development projects will be in fact inaugurated. Specifically, I just want to mention that he has in fact started his day by taking darshan out here at the infamous Dagadu Shet temple, and in fact he was just a year 5 minutes ago and has in fact left for the award function that is gonna take place at SP College in Pune. Apart from that, there are several events lined up, from taking the Lokmanya Tilak National Award, 41st in fact National Award has been in fact conferred to Prime Minister Narendra Modi, and this NGO is in fact run by the Tilak family. Now Rohit Tilak, who is also a congressman, and in fact he's one of the trustee of this very organization. Apart from that, Sushil Kumar Shinde, the congressman, in fact he is also the trustee there, and in fact NCP chief Sharad Pawar is also someone who will be attending that very event, wherein Prime Minister Narendra Modi will be present, and in fact NCP chief Sharad Pawar will also be present. Apart from that, Shivangi, we are listening that Ajit Pawar, the Deputy Chief Minister, will also be sharing the stage for the first time with his uncle after they both had parted ways from NCP. Now, there are several development projects, including the Metro Phase 1 Pune, which will be in fact inaugurated by Prime Minister Modi. The trains will be running from the Fugewadi station to the civil court area, and in fact this will cover several prime locations of Pune. Apart from that, Prime Minister Narendra Modi will be handing over more than 3,000 houses that has been constructed under the Parliamentary Yojana scheme. So there are multiple events that are going to happen, and multiple development projects will be in fact inaugurated by Prime Minister Modi. This visit has also a political meaning, because this is the first time wherein people across party are attending the event with Prime Minister Narendra Modi. Remember, Congress party leaders will be there, Bharatiya Janata Party leaders will be there, and NCP chief Sharad Pawar himself will be there, sharing stage with Prime Minister Modi. Remember, in the past, Shivangi, when Prime Minister Narendra Modi had visited Rajasthan,
Ashok Gehlot was in fact not was there with Prime Minister Modi, and Prime Minister Modi had said that he couldn't attend the event because he was not well. Although there were several other reactions from Ashok Gehlot. But here in Maharashtra, it has a different stage and a different meaning, and almost all party leaders will be in fact present. So a lot of political meanings have been taken out from this very visit. Shwangi. All right, thank you so much for getting us those details, Sandeep. And anytime now, the Prime Minister will be receiving the Lokmanya Tilak Award, and we'll be getting all our viewers all those updates live on Republic TV. Motorola, India's best 5G smartphone brand. Police shot and killed 2 history cheaters in Chennai after they tried to evade a police cordon. The jeep in which they were travelling rammed into a police car, after which the suspects got down and attacked the police with machetes before being shot dead. Aam Aadmi Party MP Raghav Chadha has filed a suspension of business notice in the Parliament to discuss the breakdown of law and order in the state of Manipur due to the failure of central and state governments. The NIA carried out raids across 9 locations in Kashmir, including Kupwara, Srinagar, Pulwama, Shopia and others in connection with terror funding. The house of an advocate was also being searched by the agency. Operations were underway for the 3rd consecutive day in the narco terror case by security agencies. We are seeing that Rafi Lala's associate Mohammed Farooq has been nabbed and will be brought to Jammu for further proceedings. Maharashtra AT has recovered bomb-making materials from 4 suspects, including chemical powder, charcoal, thermometer, dropper. A professional bomb maker, Shamim Kazi, has been arrested in the case. Price of Nandini milk was hiked by 3 rupees across Karnataka. The public got people's reaction on the price hike. Prices of curd, ghee and paneer have also been increased. Northern Army Command facilitated Asha Malviya, a national athlete and mountaineer who was on a mission across India to spread awareness on women's safety and empowerment. Viewers, much more coming up. 3 killed in clashes that were reported in New. Deployment of forces beefed up in and around New districts of Haryana. The Amity Law School, ranked among the top 10 in India, educates some of the most brilliant students who get recruited by top law firms and go for higher studies to leading universities like Harvard, Oxford, Cambridge and UCL. To apply, visit amity.edu. When the opposition starts celebrating not the victory of a no-confidence motion, but the admission of the motion in Parliament. The I.N.D.I.A cannot even push through the motion if there is external support. A no-confidence motion is a serious matter. It is not a necessary rite of passage. It's not like having breakfast or lunch. It is something serious which must be done when there is something serious to debate. I say debate Manipur, but why a no-confidence motion? They are not even united on basic issues among themselves, and they call themselves I.N.D.I.A, and they waste our time by bringing in a no-confidence motion. It is an act of absolute futility. The people are serious. The people want governance, and I say with all the conviction at my command, stop the futility of the no-confidence motion. The opposition should unitedly take back the no-confidence motion and not waste the nation's time. If it is for their amusement, then it is a very, very expensive source of amusement that we pay. When the opposition
लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक तिलक जी से विनम्र निवेदन है कि वे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का लोकमान्य तिलक जी ने लिखा हुआ श्रीमद् भगवत गीता रहस्य का गुजराती भाषा में किया हुआ अनुवादित ग्रंथ भेंट देकर स्वागत करें। धन्यवाद। इस प्रोग्राम की परंपरा अनुसार इस शुभ अवसर पर श्री ऋषिकेश बड़वे लोकमान्य स्तवन प्रस्तुत करेंगे। श्री ऋषिकेश बड़वे। वंदन तुझ लोकमान्य टिळक भास्करा, वंदन तुझ लोकमान्य टिळक भास्करा, स्फूर्ती देई बालकास स्फूर्ती सागरा, वंदन तुझ लोकमान्य टिळक भास्करा, पारतंत्र्य गाढतिमिर देश झोपला, पारतंत्र्य गाढतिमिर देश झोपला, सिंहनाद केसरी करून गर्जला, जागताच देश घेत तवची आसरा, वंदन तुझ लोकमान्य टिळक भास्करा, त्याग धैर्य चातुरी न वर्णवे मला, त्याग धैर्य चातुरी न वर्णवे मला, बुद्धी वैभवास बघून लोक मोहला, शुद्ध चरित तूच राजकारणी खरा, वंदन तुझ लोकमान्य टिळक भास्करा, स्वराज्य जन्मसिद्ध हक्क आमुचा असे, स्वराज्य जन्मसिद्ध हक्क आमुचा असे, इंग्रजास सांगताच लागले पिसे, साहिल्या अनेक यातना धुरंधरा, वंदन तुझ लोकमान्य टिळक भास्करा, गीतेचे ते रहस्य स्पष्ट उकलले, गीतेचे ते रहस्य स्पष्ट उकलले, आर्यांचे मूळ स्थान तूच शोधिले, धन्य महाराष्ट्र जा सुपुत्र तू खरा, वंदन तुझ लोकमान्य टिळक भास्करा, स्फूर्ती देई बालकास स्फूर्ती सागरा, वंदन तुझ लोकमान्य टिळक भास्करा, टिळक भास्करा, टिळक भास्करा, वंदन तुझ लोकमान्य तिलक भास्करा। अब मैं लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर दीपक तिलक जी से निवेदन करता हूं कि आप कार्यक्रम की प्रस्तावना करें। डॉक्टर दीपक तिलक। आज आपण ज्यांना लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करणार आहोत ते आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी, आजचे प्रमुख पाहुणे श्री शरदचंद्र पवार, मंचावर उपस्थित
महामहिम राज्यपाल श्री रमेश बैस, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री एकनाथराव शिंदे, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस आणि श्री अजित पवार, माझे सहकारी विश्वस्त श्री सुशीलकुमार शिंदे, डॉक्टर रोहित टिळक, टिळक विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉक्टर गीताली टिळक, डॉक्टर प्रणती टिळक, श्री रामचंद्र नामदोशी, श्रीमती सरिता साठे, तसेच सभागृहात उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर आणि टिळकप्रेमी बंधू भगिनींनो, मी स्वराज्य संघातर्फे आपणा सर्वांचे स्वागत करतो. आज 1 ऑगस्ट लोकमान्य टिळकांची 103वी पुण्यतिथी. या पुण्यतिथीच्या निमित्ताने लोकमान्य टिळकांच्या चरणी श्रद्धांजली अर्पण करण्याकरता आपण सारे उपस्थित आहोत. या निमित्ताने टिळक विचारांची, कृतीची व किंवा त्यागाची एखादी तरी घटना आत्मसात करून आपल्या आचरणात आणण्याकरता आपण प्रयत्नशील राहतो. सर्वप्रथम टिळक स्मारक ट्रस्ट, केसरी मराठा ट्रस्ट, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, टिळक पुण्यतिथी मंडळ आणि तसेच टिळक परिवारातर्फे मी लोकमान्य टिळकांच्या चरणी आदरांजली वाहतो. लोकमान्य टिळकांच्या व्यक्तिमत्वास अनेक पैलू आहेत. स्वराज्याचे उद्गाते, राष्ट्रीयत्वाचे द्रष्टे, ज्योतिर्गणिताचे अभ्यासक, संशोधक, संपादक, युगप्रवर्तक, श्रीमद भगवद्गीतेचे भाष्यकार, भारतीय असंतोषाचे जनक अशा कितीतरी उपाधींनी टिळकांना संबोधित केले जाते. महात्मा गांधींनी तर त्यांना आधुनिक भारताचे शिल्पकार म्हणून संबोधित केले. या सगळ्या गोष्टींवर बोलण्यास वेळ नाही, पण दरवर्षी मी 1 ऑगस्टला काहीतरी नवीन सांगत असतो. आणि लोकमान्य टिळक हे पहिले हिंदुस्थानचे नेते होते हे मी अगोदर सांगितलेलं आहे. परंतु त्याही पेक्षा अजून एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की लोकमान्य टिळक हे यांनी स्वराज्याचा लढा हा चौफेर दिला. चौफेर अशा यांनी म्हणता येईल की ब्रिटिश केवळ राजकीय वर्चस्व इथे लादू इच्छित नव्हते, तर त्यांना आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या सगळ्यावर वर्चस्व पाहिजे होतं. आणि तशा तऱ्हेची नीती त्यांनी सगळ्यावर आखली होती. लोकमान्य टिळक हे त्यावेळेचे असे द्रष्टे की त्यांनी या सगळ्या विरुद्ध स्वातंत्र्याचा लढा उभारला. त्याचप्रमाणे त्यावेळी अनेक नेते होते आणि कोणी राजकारणावर बोललं, कोणी आर्थिक याच्यावर बोललं, कोणी सुधारणांवर बोललं, परंतु सगळ्या विरुद्ध लढा उभा करणं हे फक्त लोकमान्यांनी केलं. आणि त्याच्याकरता त्यांनी जी चतुसूत्री वापरली ती चतुसूत्री जर पाहिली तर स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार आणि राष्ट्रीय शिक्षण ह्या सगळ्यावर मुळे तो जो लढा होता हा चौफेर असा झाला. जर कुठेही अतिरेक यांनी ब्रिटिशांनी केला असेल तर त्यावेळेला क्रांतिकारकांनी त्यांना उत्तर दिलं, किंवा इतर जे काही लढे आहेत ते जर पाहिले तर त्याच्यातून आपल्या असं लक्षात येईल. मग शिवजयंती असो किंवा गणेशोत्सव असो, ओरायन असो, आर्टिकवेदास असो, या सगळ्यातून त्यांनी या देशाच्या लढ्याकरता लोकांना एकत्र केलं, त्यांना राष्ट्राभिमानी केलं आणि हा लढा उभा केला. त्यावेळे स्वराज्य जेव्हा लोकमान्य म्हणत होते तेव्हा ते दरवेळेला लोकशाही म्हणत होते. कधीच त्यांनी दुसरा राजा येईल, एक गोरा राजा जाईल आणि काळा राजा जाईल असं कधी म्हटलेलं नव्हतं. त्यामुळे एवढ्या वर्षानंतर, लढ्यानंतर सुद्धा ज्या वेळेला देश स्वतंत्र झाला त्यावेळेला इथे लोकशाही प्रस्थापित झाली, लोककल्याणकारी राज्य प्रस्थापित झालं. तसंच दुसरी एक गोष्ट सगळ्यांना माहिती आहे खरं म्हटलं तर, की पहिल्या महायुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर लोकमान्य टिळक हे ब्रिटिश सरकारकडून काही ना काहीतरी फायदा मिळवू इच्छित होते, काही अधिकार ज्यादाचे मिळवू इच्छित होते. परंतु त्यांना पहिल्यांदा व्हिसा नाकारला. परंतु 1918 साली त्यांनी परत प्रयत्न केला
आणि चिरोलवर खटला भरण्याकरता म्हणून ते इंग्लंडला गेले आणि तो खटला हरले. त्यावेळेला खटला हरल्यानंतर त्यांनी अनेक तिथले जे वेगवेगळे पक्ष होते त्या पक्षांना भेटी दिल्या, त्यांच्याशी चर्चा केली आणि त्यावेळेला नवीन असा लेबर पार्टी त्या ठिकाणी त्यांना मिळाली आणि त्या लेबर पार्टीला त्यावेळेला गरज होती आणि म्हणून लोकमान्य टिळकांनी त्यांना 2000 पाऊंडाची देणगी त्यावेळेला दिली. एवढी मोठी देणगी त्या काळी एका व्यक्तीने कोणी दिलेली नाही. टिळक हे काही खूप श्रीमंत होते अशातलं नाही, परंतु त्यांनी कर्ज काढलं आणि आल्यानंतर लोकांनी ते कर्ज फेडलं त्यांचं, पण त्याचा फायदा पुढे मात्र झाला. त्यावेळेस ज्या इंग्रजांकडे आपण हे मागत होतो, स्वातंत्र्य मागत होतो, ती पार्लमेंटरी कशी होती हेही खरं जाणून घेण्याचं आपल्याला जाणून घेणं आवश्यक आहे की त्यावेळेला इंग्लंडच्या पार्लमेंटमध्ये सगळ्यांना मतदानाचा अधिकार नव्हता. काही ठराविक लोकांनाच मतदानाचा अधिकार होता, परंतु 18 साली जेव्हा त्या ठिकाणी गेले त्यावेळेला प्रथम 21 वर्षावरील मुलांना किंवा पुरुषांना आणि 30 वर्षावरील महिलांना, म्हणजे त्यांनी सुद्धा तेव्हा 21-30 हा भाग केलेलाच होता, परंतु त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळाला. टिळकांनी जो देणगी दिली होती त्या देणगीचा फायदा आला. ते सगळ्या प्रचारसभातून फिरले आणि त्याचा फायदा असा आला की जिथे 7% जनाधार होता तिथे 27% जनाधार त्या लेबर पार्टीला मिळाला आणि त्यांच्याकडून लिहून घेण्यात आलं होतं की जर आम्ही सत्तेत आलो तर देशाच्या स्वातंत्र्याकरता आम्ही निश्चित मदत करू. आणि पुढे 45 साली 49% त्यांनी मतं मिळवली, संपूर्ण लेबर पार्टी जिंकून आली आणि मग आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं. भारत के प्रगति में अतुलनीय योगदान देने वाले व्यक्ति को हर वर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, जिससे ऐसे महान व्यक्ति का उचित सम्मान हो और युवा पीढ़ी के सामने एक आदर्श एवं प्रेरणादायी सिद्ध हो, ऐसे इस पुरस्कार का उद्देश्य है. हर साल 1883 से हम पहले SM जोशी को पुरस्कार दिया था हमने, और फिर कॉमरेड डांगे, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, शरद पवार, ऐसे राजकीय क्षेत्र में हमने पुरस्कार दिए हैं. वैसे सामाजिक काम जो करते थे बाबा आमटे और उनके लड़कों को हमने पुरस्कार दिया, स्वामीनाथन को दिया, वर्गीस कुरियर को दिया. ऐसे बहुत लोगों को 40 लोगों को आज तक हमने पुरस्कार दिए है. इस बार सब विश्वस्त पुरस्कार के लिए चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए तो हमारे सामने एक ही नाम आया, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का. या पुरस्काराकरता आदरणीय नरेंद्र मोदीजींची निवड याकरता केली कारण लोकमान्य टिळकांनी स्वतंत्र, आधुनिक आणि बलाढ्य हिंदुस्थानचे स्वप्न पाहिले होते. राष्ट्रीयत्व, हिंदुस्थानच्या पुरातन विद्या, वैभवशाली इतिहास, राष्ट्रप्रेम, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षण, आधुनिक तंत्रज्ञान, स्वदेशी अर्थकारण लोकमान्यांनी सांगितले होते आणि ते सूत्र श्री नरेंद्र मोदीजींच्या लोककल्याणकारी बलाढ्य राष्ट्रात आम्हाला त्यातच आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, नवे तंत्रज्ञान, नवे शैक्षणिक धोरण हे कार्यक्रम त्यांच्या कार्यक्रमात आढळतात आणि म्हणूनच आमची ही निवड, सर्व विश्वासाने केलेली निवड तुम्हा सर्वांना भावेल असा मला विश्वास वाटतो. माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजींनी हा पुरस्कार स्वीकारला म्हणून टिळक स्वराज्य संघातर्फे मी त्यांचे आभार मानतो. तसेच श्री शरदराव पवार
यांचेही आभार मानतो, कारण खास करून ते मुद्दामून या कार्यक्रमाकरता आले. तसेच सुशीलकुमार शिंदेही आले. त्या सगळ्यांचेच आभार मानतो आणि इथंच विरमतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद डॉक्टर तिलक. आज जिस व्यक्तित्व विशेष को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित कर हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, उस व्यक्तित्व के योगदान के बारे में एवं उनका जीवन परिचय देने हेतु मैं डॉक्टर रोहित तिलक जी को निवेदन करता हूं. डॉक्टर रोहित तिलक. Honorable Prime Minister, dignitaries on the dais, and respected audience. It is my distinct honor and privilege to introduce a leader who has been instrumental in shaping India's global footprint, a visionary who has tirelessly devoted himself to his nation's progress, and a statesman who has redefined leadership with his dynamic, people-centric approach. With his unwavering determination and leadership skills, he rose through the ranks to become the Chief Minister of Gujarat in 2001. During his tenure as Chief Minister, Shri Modi ji implemented numerous innovative policies and initiatives that transformed Gujarat into one of India's most economically vibrant and progressive states. His emphasis on infrastructure development, investment in renewable energy, and effective governance earned him widespread acclaim and established him as a visionary leader. From the corridors of Gujarat as its longest-serving Chief Minister to the vast expanses of India as its Prime Minister, he has left indelible imprints with his leadership. A person of humble beginnings who rose to hold the highest office of the world's largest democracy is a beacon of hope for billions, a catalyst for change, and an embodiment of relentless perseverance. Under his stewardship, India has taken monumental strides on the world stage, fueling a new era of innovation, development, and inclusive growth. His flagship initiatives from Make in India to Swachh Bharat have been pivotal in transforming the lives of millions, reflecting his vision of progressive and prosperous India. Prime Minister Modi is playing an enormous role in eradicating poverty in India. A recent report showed that 13.5 crore people moved out of poverty in 5 years under him. PM Modi's sensitivity and concern for the poor has created a new paradigm of welfare in India, with the poor getting houses, tap water, toilets, gas connections, electricity, free ration, and much more. His digital savviness is reflected in his significant presence on the social media platforms, where he connects directly with the people, underscoring his belief in a transparent and accountable governance model. Beyond his achievements in governance, Sri Narendra Modi ji has inspired millions with his charismatic personality, eloquence, and ability to connect with people from all walks of life. He has shown exemplary leadership during times of crisis, such as the COVID-19 pandemic, by implementing nationwide measures to combat the virus and support those affected by the economic fallout. Prime Minister Modi's vision for a new India encompasses the principles of development, innovations, and social empowerment. His efforts to empower women, uplift marginalized communities, and address pressing environmental challenges have been commendable. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming a leader whose life and work echo the ethos of service above self, an inspiring figure on the global stage, the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji. Thank you. अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किए जाने वाले सम्मान पत्र का एक छोटा ध्वनि चित्र देखेंगे जो तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ ने बनाया है. एवी प्लीज. The trustees of the Lokmanya Tilak Smarak Mandir Trust are honored to bestow the Lokmanya Tilak National Award 2023 on
Prime Minister Shri Narendra Modi, recognizing your exceptional service to our great nation. Your life and work echo Lokmanya Tilak's tireless efforts toward establishing a strong and prosperous India. Lokmanya Tilak's enduring call of Swarajya is my birthright is a message that resonates in your work. You have also taken this a step further by advocating for Surajya, highlighting the importance of good governance and development. Your tireless work for the welfare of the most vulnerable and marginalized sections of our society, ensuring Surajya for all, is exemplary. During India's colonial period, Lokmanya Tilak championed Swadeshi, aiming to make India an economic power. Today, you have strongly emphasized Atmanirbharta, or self-reliance, a principle that is truly the need of the hour. This push towards self-reliance is reflected in the numerous reform measures your government has introduced. It is due to such transformative policies that India has risen from being the 10th largest economy in 2014 to the 5th largest today, with prospects of soaring even higher. No society can thrive without a profound connection with its roots and culture. Lokmanya Tilak, by popularizing the Ganesh and Chhatrapati Shivaji Maharaj festivals, deepened cultural consciousness among all Indians. Throughout your tenure in public life, you have placed paramount importance on preserving and promoting our great Indian culture. Over the past 9 years, under your leadership, there has been a significant shift in India's growth trajectory. The world now sees India as a beacon of hope, a nation that can play a major role in creating a more sustainable planet. Your stewardship has significantly elevated India's global prestige. Therefore, sir, we are indeed exhilarated to present you with the Lokmanya Tilak National Award 2023. थैंक यू। अब मैं महाराष्ट्र राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी से अनुरोध करता हूं, कृपया आप अपने विचार व्यक्त करें। मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे। आजच्या लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्याला उपस्थित आपले गौरवमूर्ती आणि देशाचे लोकप्रिय आणि यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेब, माजी केंद्रीय मंत्री आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार साहेब, सुशील कुमार शिंदे साहेब, राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, दुसरे आपले उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार जी, टिळक स्मारक ट्रस्टचे आदरणीय दीपक टिळक जी, रोहित टिळक जी, डॉक्टर गीताली टिळक, डॉक्टर प्रणिती टिळक, उपस्थित सर्व मान्यवर आणि उपस्थित सर्व बंधू भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचे जनक आणि बहुमुखी प्रतिभावंत लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांना मी त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त सर्वप्रथम विनम्र अभिवादन करतो। दिलेल्या लढ्यामुळे आपण स्वातंत्र्याचा सूर्य पाहिला, त्यात लोकमान्य टिळक हे नाव अग्रणी होतं, हे मला आपल्याला सांगण्याची आवश्यकता नाही। लोकमान्य टिळक हे प्रखर देशभक्त राष्ट्रभक्त होते। ब्रिटिशांविरोधात लढताना त्यांच्या शब्दांना कमालीची धार येत असे
अशा लोकमान्य टिळक यांच्या नावाचा पुरस्कार आदरणीय मोदी साहेबांना आपल्या लोकप्रिय प्रधानमंत्री महोदयांना मिळणार आहे, त्याबद्दल मी मोदीजींचं आपल्या सगळ्यांच्या वतीने, महाराष्ट्राच्या वतीने मनापासून अभिनंदन करतो. हा पुरस्कार स्वर्गीय इंदिरा गांधी, अटलजी, प्रणव मुखर्जी, बाळासाहेब देवरतजी, मनमोहन सिंगजी असं अनेक शास्त्रज्ञ, उद्योजक, संशोधक ज्यांनी समाजामध्ये चांगलं काम केलं त्या लोकांचा आजवर या पुरस्काराने सन्मान झालेला आहे. व्यासपीठावर बसलेल्या आदरणीय पवार साहेबांना देखील हा पुरस्कार या संस्थेने दिलेला आहे. आणि म्हणून वर्ल्ड लीडर, जागतिक नेता म्हणून नावलौकिक कमावलेल्या मोदीजी यांची यंदाच्या पुरस्कारासाठी टिळक प्रतिष्ठान स्मारक ट्रस्टने निवड केली, त्याबद्दल टिळक ट्रस्टला देखील मनापासून मी धन्यवाद देतो, त्यांचे आभार मानतो. लोकमान्य टिळक हे सामान्य माणसाच्या मनातली भावना अचूक ओळखायचे आणि आजच्या काळात समाजाच्या सामान्य माणसाचं मन ओळखणारे आपले आदरणीय पंतप्रधान मोदीजी हे राष्ट्रीय स्तरावरील नेते ठरलेले आहेत. मी त्यांचं पुनश्च अभिनंदन करतो. शिक्षक, वकील, समाजसेवक, स्वातंत्र्य सैनिक असलेले लोकमान्य टिळक हे बहुआयामी नेतृत्व, इतिहास, संस्कृत, खगोलशास्त्र आणि गणित या विषयात त्यांचं प्रावीण्य होतं. मगाशी प्रास्ताविकामध्ये देखील सांगितलं. ते आपल्या कर्तृत्वाने लोकमान्य झाले होते आणि आदरणीय मोदीजींनी देखील गेल्या 9 वर्षांमध्ये आपल्या देशासाठी केलेल्या कामांना लोकमान्यता मिळालेली आहे. टिळकांनी स्वराज्यासाठी लढा दिला, पण स्वातंत्र्यानंतर स्वराज्याचे सुराज्यात रूपांतर करण्यामध्ये आपल्याला किती यश आलेलं आहे हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. आणि म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी देशाची सूत्र हातात घेतल्यानंतर हेच मुख्य ध्येय ठेवून सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वासचा नारा देश सुराज्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्या दिशेने त्यांची वाटचाल सुरू आहे आणि म्हणूनच त्यांच्या कार्याची पोचपावती आज या राष्ट्रीय सन्मानाने होते असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आज परदेशामध्ये देखील आपण जातो, तिकडे देखील पाहतो आदरणीय मोदीजींचं नाव सन्मानाने घेतलं जातं. फ्रांस और अरब देशों ने भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च सम्मान दिया है. ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है. विभिन्न देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनके कितना सम्मान करते हैं हमने देखा है. उनका ऑटोग्राफ लेते हैं, कोई बॉस कहते हैं, कोई उन्हें प्यार आदर से गले लगाता है, तो कोई झुककर प्रणाम करता है. अमेरिका के राष्ट्रपति जब उन्हें यू आर ग्लोबली पावरफुल कहते हैं तो हमारे देशवासियों का सीना अभिमान से, गर्व से फूल जाता है. जब बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, तब हमारे देश की अर्थव्यवस्था बनाए रखने का काम नहीं, बल्कि उसे 10वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया. यह भी हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है. 150 वर्ष ब्रिटिशांनी आपल्यावर राज्य केलं. त्यांना देशातून हद्दपार करण्यासाठी लोकमान्यांनी लढा उभा केला. त्याच ब्रिटिशांच्या अर्थव्यवस्थेला देखील भारताने आदरणीय मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली मागे टाकलंय. हा देखील आपल्यासाठी सर्वोच्च अभिमान आहे. आणि म्हणून आदरणीय प्रधानमंत्रींचं कर्तृत्व आहे.
आणि म्हणूनच त्यांना हा पुरस्कार या ठिकाणी मिळालाय. खरं म्हणजे या पुरस्काराचे साक्षीदार, या ऐतिहासिक सोहळ्याचे साक्षीदार होण्याची संधी आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांना मिळाली, हे आमचं भाग्य समजतो. आणि म्हणून लोकमान्यांनी विदेशी वस्तूंवर बहिष्कार घालण्याचं आवाहन करत स्वदेशीचा नारा दिला. आज माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी आपल्याला आत्मनिर्भर भारत करा म्हणून असा मंत्र मोदीजींनी दिला. लोकमान्य टिळक यांच्या एका सभेत बोलताना लोकमान्य म्हणाले होते, योग्य रस्ता येण्याची वाट पाहत आपण दिवस घालवतो. आपल्याला याचा विसर पडतो की रस्ते हे वाट बघण्यासाठी नसतात तर चालण्यासाठी असतात. आणि मोदीजींनी लोकमान्य टिळकांचा हाच उपदेश आत्मसात केलाय आणि त्याचा अंमल करण्याचा, त्याची अंमलबजावणी करण्याचं काम ते या ठिकाणी करतात. त्यांनी एकदा ठरवलं की ते त्या मार्गाने जातातच जातात. मग काश्मीर मधलं 370 कलम असू द्या, राम मंदिराचा विषय असू द्या, वाराणसीचा कायापालट असू द्या, अथवा देशातली गरिबांच्या कल्याणाचा आणि सर्वांगीण विकासाचा विषय असू द्या. कारण आपण पाहतोय गेल्या 9 वर्षामध्ये या देशामध्ये आदरणीय मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी असतील, कष्टकरी असतील, कामगार असतील, महिला भगिनी असतील, विद्यार्थी असतील, युवा असतील, सगळे लोक या सर्वच क्षेत्रामध्ये त्यांना पुढे आणण्याचं, त्यांच्या जीवनामध्ये बदल घडवण्याचं काम आपल्या आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांनी केलेलं आहे. हे वारंवार आपण पाहतोय, अनुभवतोय आणि यापुढे देखील आपण अनुभवत राहणार आहोत, त्याचा अनुभव घेत राहणार आहोत. हे देखील आपल्यासाठी फार महत्वाचं आहे. आणि म्हणून लोकमान्य टिळकांना अपेक्षित असलेल्या देशाला, समाजाला आणि सामान्य नागरिकाला सामर्थ्यवान बनवण्याचं जे ध्येय लोकमान्य टिळकांनी त्यावेळेस स्वप्न पाहिलं, आज तीच वाटचाल आपण आज पाहतोय. म्हणून विरोधक असतील, टीका असतील, राजकारणाचा विषय नाही. आज खूप ऐतिहासिक सोहळा आहे, परंतु कशाची पर्वा न करता या ठिकाणी अंतिम ध्येय म्हणजे सर्वसामान्य माणसाचा जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल, हे अंतिम ध्येय ठेवूनच मोदीजी वाटचाल करतायत. हे आपल्यासाठी खूप महत्वाचं आहे आणि त्यामुळेच आज जगभरातले लोक त्यांच्याकडे एक महत्वाचा नेता म्हणून पाहतायत. हे आपल्या भारत देशासाठी देखील, आपल्या भारतवासियांसाठी अभिमानाचं आणि म्हणून लोकमान्यांसारखा नेते हे राष्ट्राचे प्राण आणि त्यांच्या कल्पनेतला बलवान देश घडवणे हीच खरी श्रद्धांजली त्यांना ठरेल असं मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो. आणि म्हणून रात्रंदिवस देशाच्या विकासाचा, प्रगतीचा ध्यास घेतलेले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजी त्याच बुलंद भारताचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न करतायत. आणि म्हणूनच या पुरस्काराने त्यांना आता लोकमान्यांच्या आशीर्वादाचं बळ प्राप्त होणार आहे, ताकद प्राप्त होणार आहे, आशीर्वाद प्राप्त होणार आहेत आणि ऊर्जा प्राप्त होणार आहे. आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांचं मनापासून अभिनंदन करतो, मनापासून शुभेच्छा देतो आणि लोकमान्य टिळकांना देखील मी वंदन करतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जबरदस्त भाषण. लोकमान्य टिळक स्मारक ट्रस्टचे शुभचिंतक आदरणीय शरद पवार साहेब. देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल श्री वैस, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमंत्री द्वय देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार, तिलक स्वराज्य संघ एवं लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्टचे अध्यक्ष
डॉक्टर दीपक तिलक, त्याचे उपाध्यक्ष डॉक्टर रोहित तिलक या ठिकाणी उपस्थित असलेले सगळे मान्यवर आणि बंधू भगिनींनो, आजचा दिवस हा लोकमान्यांचा 103 पुण्यतिथीचा आहे आणि त्याचा सोहळा या ऐतिहासिक पुणे शहरामध्ये होतोय. मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि देश में पुणे शहर का एक अलग महत्व है. छत्रपति शिवाजी महाराज और इनका इतिहास पूरी दुनिया जानती है. शिवाजी महाराज का जन्म इसी जिले में शिवनेरी के किले में हुआ और इसी पुणे शहर के लाल महल में उनका बचपन उन्होंने गुजारा. यहाँ उन्होंने हिंदवी स्वराज्य के निर्माण किए. या देशामध्ये अनेक राजे राजवाडे होऊन गेले. त्यांचं राज्य, त्यांचं संस्थान त्यांच्या नावाने ओळखलं जायचं. मग कुठं देवीजींचं यादवांचं संस्थान असेल, कुठं मोगलांचं दिल्लीचं संस्थान असेल, अनेकांचे संस्थानं या देशात होऊन गेली. पण शिवछत्रपतींचं काम हे का वेगळ्या दिशेवर झालं. त्यांनी राज्य उभं केलं, पण ते भोसल्यांचं राज्य नव्हतं. ते हिंदवी स्वराज्य होतं. ते रयतेचं राज्य होतं आणि ते रयतेचं राज्य प्रस्थापित करण्याच्या संबंधीचं काम या पुणे शहरामध्ये झालं. हा पुण्याचा एक गौरवशाली इतिहासाचा भाग आहे. अलीकडच्या काळामध्ये या देशानं आणि या देशाच्या जवानानं देशाचं रक्षण करण्याच्यासाठी एक प्रकारचा सर्जिकल स्ट्राईक केलेला होता. सर्जिकल स्ट्राईकची चर्चा आत्ता होते, पण लाल महालामध्ये शाहिस्तेखांनी ताबा घेण्याचा प्रयत्न केल्याच्या नंतर या देशाचा पहिला सर्जिकल स्ट्राईक हा शिवछत्रपतींच्या काळामध्ये झाला. ही गोष्ट these days, but the first surgical strike was conducted when during the regime of Shivaji Maharaj. 1865 मध्ये लोकमान्यांचे वडील गंगाधर यांनी रत्नागिरी सोडली आणि पुण्यामध्ये त्यांचं आगमन झालं. पुण्यामध्ये आगमन झाल्याच्या नंतर ते नुसतं आगमन नव्हतं, ती एक प्रकारची चिंगारी होती. संपूर्ण स्वराज्य स्थापन करण्याच्या संबंधीची ती मशाल बनलेली होती. आणि त्या कालखंडामध्ये लोकमान्यांचा सुरुवातीचा काळ या पुणे शहरामध्ये गेला. त्यांचं एकंदर लक्ष सगळ्या परिस्थितीवर होतं आणि ते असताना ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून बाहेर पडायचं असेल तर सामान्य माणसाला जागृत केलं पाहिजे आणि त्यासाठी एक जबरदस्त अशा प्रकारचं Get out of slavery, there was a message given to awaken the common man. This was the message given by Anti-infiltration. 25 साल की उम्र में मराठी भाषा में केसी अखबार और अंग्रेजी में मराठा साप्ताहिक शुरू किया और इन पत्रों के माध्यम से इंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने कड़ा प्रहार किया. केसरी का मतलब सिंह या शेर है. केसरी और मराठा द्वारा टिळकाजींनी एकंदर या देशाच्या परकीय लोकांच्यावर प्रचंड प्रहार केले
आणि एक प्रकारची लोकजागृती करण्याच्या संबंधीचं काम त्यांच्या काळामध्ये त्यांनी केलं होतं. ते नेहमी म्हणत असत पत्रकारिता याचा पुराचा दबाव असता कामा नये. त्या दबावातून आणि ती भूमिका त्यांनी 1885 साली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचा जन्म झाला, गठन झाला. त्या काळामध्ये पहिलं अधिवेशन या पुणे शहरात होणार होतं, परंतु फ्लेगची साथ या ठिकाणी आली आणि त्यामुळं हे अधिवेशन मुंबईच्या गावाला या टँकवर दिलं गेलं, ज्याला ऑगस्ट क्रांती मैदान म्हणून आज त्या ठिकाणी ओळखलं जातं. त्या काळामध्ये दोन प्रकारचे नेते त्या संघटनेमध्ये होते, ज्यांना मवाळ म्हणून ओळखलं जायचं आणि जहाल म्हणून ओळखलं जायचं. आणि या जहालांचं प्रतिनिधित्व हे लोकमान्यांनी केलेलं होतं. लोकमान्यांनी स्वराज्यवादा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी घेतल्याशिवाय स्वस्त जन्मांसाच्या समोर मांडली. स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षण ही त्रिसूत्री आणि त्याच्या माध्यमातून संपूर्ण स्वराज्याचं आंदोलन हे त्यांच्या काळामध्ये मांडलेलं होतं, ज्याचा उल्लेख आधीच्या वर्षांनी केला. गणेशोत्सव असेल, शिवजयंती असेल, या सगळ्यामध्ये लोकमान्यांचं योगदान हे फार मोठं होतं. आणि त्या माध्यमातून एक नवीन इतिहास तयार करण्याचं काम त्यांनी केलं. त्या कालखंडामध्ये दोन युगं होती, एक टिळक युग आणि दुसरं महात्मा गांधींचं गांधी युग. या ठिकाणी या आणि या कर्तृत्वान दृष्टीच्या नेत्यांचा आदर्श हा अखंडपणानं प्रेरणा देईल याची मला खात्री आहे. आणि या पार्श्वभूमीवर टिळक पुरस्कार याला एक आगळं वेगळं अशा प्रकारचं महत्त्व आहे. आज आपण आणि टिळक स्मारकानं मोदीजींची निवड या स्मारकाच्यासाठी, या पुरस्काराच्यासाठी केली. ज्या पुरस्कारामध्ये होते, बाळासाहेब देवरस होते, शंकरदयाळ शर्मा होते, अशी अनेक मान्यवरांची नावं या ठिकाणी होती. आणि या मान्यवरांच्या यादीमध्ये, पंक्तीमध्ये आज नरेंद्र मोदींच्या नावाचा सुद्धा या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं त्यांचं या ठिकाणी जी निवड झाली, त्यांना हा जो पुरस्कार देण्यात येतोय त्याबद्दल त्यांच्या अंतःकरणापासून अभिनंदन करतो. आणि जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आता तो मंगल क्षण आलेला है. मैं डॉक्टर दीपक तिलक जी से निवेदन करता हूं कि 41वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान करे. लोकमान्य टिळक वापरत असत असेच उपरणे, जे उपरणं लोकमान्य टिळक वापरत असत तशाच पद्धतीचं खास उपरणं बनवून घेतलेलं आहे आदरणीय पंतप्रधानजींसाठी. लोकमान्य तिलक जी की पहचान पुणेरी पगड़ी और लोकमान्य जी का उत्तरीय, त्याचप्रमाणे सम्मान पत्र,
आणि एक विशिष्ट अशी बनवलेली ट्रॉफी, ज्या ट्रॉफीमध्ये विशिष्ट ट्रॉफी, ज्या ट्रॉफीमध्ये आपण पाहू शकता श्रीमद भगवद्गीता, त्याचप्रमाणे लोकमान्यांची पगडी, केसरीचा पहिला अंक आणि लोकमान्यांची प्रतिमा. एक विशेष बात है इस समारोह की 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, जी आदरणीय पंतप्रधान मोदीजींच्या सूचनेनुसार नमामि गंगे प्रोजेक्टला डोनेट करण्यात आलेली आहे. लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके कार्य एवं विचार हमारी प्रेरणा है. आदरणीय मोदी जी, आपल्या कार्य कौशल्यामुळे, आपल्या कार्य कर्तृत्वामुळे आपण संपूर्ण जगामध्ये लोकप्रिय प्रधानमंत्री आहात. तरीही तुम्ही स्वतःला प्रधान सेवक म्हणवता आणि म्हणून आम्हा सगळ्यांना तुम्ही खूप आवडता. मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इस शुभ अवसर पर आप आपके मन की बात कहे. जी. लोकमान्य टिळकांची आज 103वी पुण्यतिथी आहे. देशाला अनेक महानायक देण्याच्या महाराष्ट्राच्या भूमीला मी कोटी कोटी वंदन करते. कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्री शरद पवार जी, राज्यपाल श्रीमान रमेश बैस जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान अजित पवार जी, ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान दीपक तिलक जी, पूर्व मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान सुशील कुमार शिंदे जी, तिलक परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण एवं उपस्थित भाई और बहनों, आज का ये दिन मेरे लिए बहुत अहम है. मैं यहां आकर जितना उत्साहित हूं उतना ही भावुक भी हूं. आज हम सब के आदर्श और भारत के गौरव बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्यतिथि है. साथ ही आज अन्ना भाऊ साठे जी की जन्म जयंती भी है. लोकमान्य तिलक जी तो हमारे स्वतंत्रता इतिहास के माथे के तिलक है. साथ ही अन्ना भाऊ ने भी समाज सुधार के लिए जो योगदान दिया वह अप्रतिम है, असाधारण है. मैं इन दोनों ही महापुरुषों के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं. आज या महत्वाच्या दिवशी मला पुण्याच्या या पावन भूमीवर महाराष्ट्राच्या धर्तीवर येण्याची संधी मिळाली, हे माझे भाग्य आहे.
ये पुण्य भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है। ये चाफेकर बंधुओं की पवित्र धरती है। इस धरती से ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले की प्रेरणाएं और आदर्श जुड़े हैं। अभी कुछ ही देर पहले मैंने दगड़ू सेठ मंदिर में गणपति जी का आशीर्वाद भी लिया। ये भी पुणे जिले के इतिहास का बड़ा दिलचस्प पहलू है। दगड़ू सेठ पहले व्यक्ति थे जो तिलक जी के आह्वान पर गणेश प्रतिमा की सार्वजनिक स्थापना में शामिल हुए थे। मैं इस धरती को प्रणाम करते हुए इन सभी महान विभूतियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज पुणे में आप सबके बीच मुझे जो सम्मान मिला है, ये मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव है। जो जगह, जो संस्था सीधे तिलक जी से जुड़ी रही हो, उसके द्वारा लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं इस सम्मान के लिए हिंद स्वराज संघ का और आप सभी का पूरी विनम्रता के साथ हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर ऊपर ऊपर से थोड़ा नजर करें तो हमारे देश में काशी और पुणे दोनों की एक विशेष पहचान है। विद्वत्ता यहां पर चिरंजीव है, अमरत्व को प्राप्त हुई है। और जो पुणे नगरी विद्वत्ता की दूसरी पहचान हो, उस भूमि पे सम्मानित होना जीवन का इससे बड़ा कोई गर्व और संतोष की अनुभूति देने वाली घटना नहीं हो सकती है। लेकिन साथियों, जब कोई अवार्ड मिलता है तो उसके साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। आज जब उस अवार्ड से तिलक जी का नाम जुड़ा हुआ हो तो दायित्व बोध और भी कई गुना बढ़ जाता है। मैं लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड को 140 करोड़ देशवासियों के चरणों में समर्पित करता हूं। मैं देशवासियों को विश्वास भी दिलाता हूं कि उनकी सेवा में, उनकी आशाओं अपेक्षाओं की पूर्ति में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। जिनके नाम में गंगाधर हो, उनके नाम पर मिले इस अवार्ड के साथ जो धनराशि मुझे दी गई है, वो भी गंगा जी को समर्पित कर रहा हूं। मैंने पुरस्कार राशि नमामि गंगे परियोजना के लिए दान देने का निर्णय लिया है। साथियों, भारत की आजादी में लोकमान्य तिलक की भूमिका को, उनके योगदान को कुछ घटनाओं और शब्दों में
नहीं समेटा जा सकता है। तिलक जी के समय और उनके बाद की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी जो भी घटनाएं और आंदोलन हुए, उस दौर में जो भी क्रांतिकारी और नेता हुए, तिलक जी की छाप सब पर थी, हर जगह थी। इसलिए खुद अंग्रेजों को भी तिलक जी को द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट कहना पड़ा था। तिलक जी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की पूरी दिशा ही बदल दी थी। जब अंग्रेज कहते थे कि भारतवासी देश चलाने के लायक नहीं है, तब लोकमान्य तिलक ने कहा कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अंग्रेजों ने धारणा बनाई थी कि भारत की आस्था, संस्कृति, मान्यताएं, ये सब पिछड़ेपन का प्रतीक है। लेकिन तिलक जी ने इसे भी गलत साबित किया। इसलिए भारत के जनमानस ने न केवल खुद आगे आकर तिलक जी को लोकमान्यता दी, बल्कि लोकमान्य का खिताब भी दिया। और जैसा अभी दीपक जी ने बताया, स्वयं महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा। हम कल्पना कर सकते हैं कि तिलक जी का चिंतन कितना व्यापक रहा होगा, उनका विजन कितना दूरदर्शी रहा होगा। साथियों, एक महान नेता वो होता है जो एक बड़े लक्ष्य के लिए न केवल खुद को समर्पित करता है, बल्कि उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संस्थाएं और व्यवस्थाएं भी तैयार करता है। इसके लिए हमें सबको साथ लेकर आगे बढ़ना होता है, सबके विश्वास को आगे बढ़ाना होता है। लोकमान्य तिलक के जीवन में हमें ये सारी खूबियां दिखती हैं। उन्होंने अंग्रेजों ने जब उन्हें जेल में डाला, उन पर अत्याचार हुए, उन्होंने आजादी के लिए त्याग और बलिदान की पराकाष्ठा की। लेकिन साथ ही उन्होंने टीम स्पिरिट के, सहभाग और सहयोग के अनुकरणीय उदाहरण भी पेश किए। लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल के साथ उनका विश्वास, उनकी आत्मीयता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का स्वर्णिम अध्याय है। आज भी जब बात होती है तो लाल, बाल, पाल के तीनों नाम एक त्रिशक्ति के रूप में याद किए जाते हैं। तिलक जी ने उस समय आजादी की आवाज को बुलंद करने के लिए पत्रकारिता और अखबार की अहमियत को भी समझा। अंग्रेजी में तिलक जी ने, जैसा शरद राव ने कहा, द मराठा साप्ताहिक शुरू किया। मराठी में गोपाल गणेश अगरकर और विष्णु शास्त्री चिपलुंकर जी के साथ मिलकर उन्होंने केसरी अखबार शुरू किया। 140 से भी ज्यादा समय से केसरी अनवरत आज भी महाराष्ट्र में छपता है, लोगों के बीच पढ़ा जाता है। ये इस बात का सबूत है कि तिलक जी ने
कितनी मजबूत नींव पर संस्थाओं का निर्माण किया था। साथियों, संस्थाओं की तरह लोकमान्य तिलक ने परंपराओं को भी पोषित किया। उन्होंने समाज को जोड़ने के लिए सार्वजनिक गणपति महोत्सव की नींव डाली। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के साहस और आदर्शों की ऊर्जा से समाज को भरने के लिए शिव जयंती का आयोजन शुरू किया। ये आयोजन भारत को सांस्कृतिक सूत्र में पिरोने के अभियान भी थे और इनमें पूर्ण स्वराज की संपूर्ण संकल्पना भी थी। यही भारत की समाज व्यवस्था की खासियत रही है। भारत ने हमेशा ऐसे नेतृत्व को जन्म दिया है जिसने आजादी जैसे बड़े लक्ष्यों के लिए भी संघर्ष किया और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ नई दिशा भी दिखाई। आज की युवा पीढ़ी के लिए यह बहुत बड़ी सीख है। भाई और बहनों, लोकमान्य तिलक इस बात को भी जानते थे कि आजादी का आंदोलन हो या राष्ट्र निर्माण का मिशन, भविष्य की जिम्मेदारी हमेशा युवाओं के कंधों पर होती है। वो भारत के भविष्य के लिए शिक्षित और सक्षम युवाओं का निर्माण चाहते थे। लोकमान्य में युवाओं की प्रतिभा पहचानने की जो दिव्य दृष्टि थी, इसका एक उदाहरण हमें वीर सावरकर से जुड़े घटनाक्रम में मिलता है। उस समय सावरकर जी युवा थे। तिलक जी ने उनकी क्षमता को पहचाना। वो चाहते थे कि सावरकर बाहर जाकर अच्छी पढ़ाई करें और वापस आकर आजादी के लिए काम करें। ब्रिटेन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ऐसे ही युवाओं को अवसर देने के लिए 2 स्कॉलरशिप चलाते थे। एक स्कॉलरशिप का नाम था छत्रपति शिवाजी स्कॉलरशिप और दूसरी स्कॉलरशिप का नाम था महाराणा प्रताप स्कॉलरशिप। वीर सावरकर के लिए तिलक जी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा से सिफारिश की थी। इसका लाभ लेकर वो लंदन में बैरिस्टर बन सके। ऐसे कितने ही युवाओं को तिलक जी ने तैयार किया। पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज जैसे संस्थानों, उसकी स्थापना उनके इसी विजन का हिस्सा है। इन संस्थाओं से ऐसे कितने ही युवा निकले जिन्होंने तिलक जी के मिशन को आगे बढ़ाया, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। व्यवस्था निर्माण से संस्था निर्माण, संस्था निर्माण से व्यक्ति निर्माण और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, ये विजन राष्ट्र के भविष्य के लिए रोड मैप की तरह होता है। इसी रोड मैप को आज देश प्रभावी ढंग से फॉलो कर रहा है। साथियों, वैसे तो तिलक जी पूरे भारत के लोकमान्य नेता है, लेकिन जैसे पुणे और महाराष्ट्र के लोगों के लिए उनका एक अलग स्थान है, वैसा ही रिश्ता गुजरात के लोगों का भी उनके साथ है। मैं आज इस विशेष अवसर पर मैं उन बातों को भी याद कर रहा हूं। स्वतंत्रता संग्राम के समय वो करीब 1.5 महीने अहमदाबाद साबरमती जेल में रहे थे। इसके बाद 1916 में तिलक जी अहमदाबाद आए और आपको जानकर के खुशी होगी, उस समय
जब अंग्रेजों की पूरी तरह जुल्म चलते थे, अहमदाबाद में तिलक जी के स्वागत में और उनको सुनने के लिए उस जमाने में 40,000 से ज्यादा लोग उनका स्वागत करने के लिए आए थे। और खुशी की बात यह है कि उनको सुनने के लिए उस समय ऑडियंस में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। उनके भाषण ने सरदार साहब के मन में एक अलग ही छाप छोड़ी। बाद में सरदार पटेल अहमदाबाद नगर पालिका के प्रेसिडेंट बने, म्युनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट बने। और आप देखिए उस समय के व्यक्तित्व की सोच कैसी होती थी। उन्होंने अहमदाबाद में तिलक जी की मूर्ति लगाने का फैसला किया। और सिर्फ मूर्ति लगाने का फैसला किया नहीं, उनके निर्णय में भी सरदार साहब की लौह पुरुष की पहचान मिलती है। सरदार साहब ने जो जगह चुनी वो जगह थी विक्टोरिया गार्डन। अंग्रेजों ने रानी विक्टोरिया की हीरक जयंती मनाने के लिए अहमदाबाद में 1897 में 1897 में विक्टोरिया गार्डन का निर्माण किया था। यानी ब्रिटिश महारानी के नाम पर बने पार्क में उनकी छाती पर सरदार पटेल ने इतने बड़े क्रांतिकारी लोकमान्य तिलक की मूर्ति लगाने का फैसला कर लिया। और उस समय सरदार साहब पर इसके खिलाफ कितना ही दबाव पड़ा, उन्हें रोकने की कोशिश हुई, लेकिन सरदार तो सरदार थे। सरदार ने कह दिया वो अपना पद छोड़ देना पसंद करेंगे, लेकिन मूर्ति तो वहीं पर लगेगी। और वो मूर्ति बनी और 1929 में उसका लोकार्पण महात्मा गांधी ने किया। अहमदाबाद में रहते हुए मुझे कितनी ही बार उस पवित्र स्थान पर जाने का मौका मिला है और तिलक जी की प्रतिमा के सामने सर झुकाने का अवसर मिला है। वो एक अद्भुत मूर्ति है जिसमें तिलक जी विश्राम मुद्रा में बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे वो स्वतंत्र भारत के उज्जवल भविष्य की ओर देख रहे हैं। आप कल्पना करिए, गुलामी के दौर में भी सरदार साहब ने अपने देश के सपूत के सम्मान में पूरी अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दे दी थी। और आज की स्थिति देखिए, अगर आज हम किसी एक सड़क का नाम भी किसी विदेशी आक्रांता की जगह कर बदलकर भारतीय विभूति पर रखते हैं तो कुछ लोग उस पर हल्ला मचाने लग जाते हैं। उनकी नींद खराब हो जाती है। साथियों, ऐसा कितना ही कुछ है जो हम लोकमान्य तिलक के जीवन से सीख सकते हैं। लोकमान्य तिलक गीता में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति थे। वो गीता के कर्मयोग को जीने वाले व्यक्ति थे। अंग्रेजों ने उन्हें रोकने के लिए उन्हें भारत के दूर पूरब में मांडले की जेल में डाल दिया, लेकिन वहां भी तिलक जी ने गीता का अपना अध्ययन जारी रखा। उन्होंने देश को हर चुनौती से पार पाने के लिए गीता रहस्य के जरिए कर्मयोग की सहज समझ दी, कर्म की ताकत से परिचित करवाया। साथियों, बाल गंगाधर तिलक जी के व्यक्तित्व के एक और पहलू की तरफ मैं आज देश के युवा पीढ़ी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तिलक जी की एक बड़ी विशेषता थी कि वो लोगों को खुद पर विश्वास करने के बड़े आग्रही थे और करना सिखाते थे। वो उन्हें आत्मविश्वास से भर देते थे।
पिछली शताब्दी में जब लोगों के मन में ये बात बैठ गई थी कि भारत गुलामी की बेड़ियां नहीं तोड़ सकता, तिलक जी ने लोगों को आजादी का विश्वास दिया। उन्हें हमारे इतिहास पर विश्वास था, उन्हें हमारी संस्कृति पर विश्वास था, उन्हें अपने लोगों पर विश्वास था, उन्हें हमारे श्रमिकों उद्यमियों पर विश्वास था, उन्हें भारत के सामर्थ्य पर विश्वास था। भारत की बात आते ही कहा जाता था यहां के लोग ऐसे ही हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तिलक जी ने हीन भावना के इस मिथक को तोड़ने का प्रयास किया, देश को उसके सामर्थ्य का विश्वास दिलाया। साथियों, अविश्वास के वातावरण में देश का विकास संभव नहीं होता। कल मैं देख रहा था, पुणे के ही एक सज्जन श्रीमान मनोज पोचाट जी ने मुझे एक ट्वीट किया है। उन्होंने मुझे 10 साल पहले की मेरी पुणे यात्रा को याद दिलाया है। उस समय जिस फर्ग्यूसन कॉलेज की तिलक जी ने स्थापना की थी, उसमें मैंने तब के भारत में ट्रस्ट डेफिसिट की बात की थी। अब मनोज जी ने मुझे आग्रह किया है कि मैं ट्रस्ट डेफिसिट से ट्रस्ट सरप्लस तक की देश की यात्रा के बारे में बात करूं। मैं मनोज जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस अहम विषय को उठाया है। भाई और बहनों, आज भारत में ट्रस्ट सरप्लस पॉलिसी में भी दिखाई देता है और देशवासियों के परिश्रम में भी झलकता है। बीते 9 वर्षों में भारत के लोगों ने बड़े बड़े बदलावों की नींव रखी, बड़े बड़े परिवर्तन करके दिखाए। आखिर कैसे भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? ये भारत के लोग ही हैं जिन्होंने ये करके दिखाया। आज देश हर क्षेत्र में अपने आप पर भरोसा कर रहा है और अपने नागरिकों पर भी भरोसा कर रहा है। कोरोना के संकट काल में भारत ने अपने वैज्ञानिकों पर विश्वास किया और उन्होंने मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाकर दिखाई और पुणे ने भी उसमें बड़ी भूमिका निभाई। हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि भारत ये कर सकता है। हम देश के आम आदमी को बिना गारंटी का मुद्रा लोन दे रहे हैं क्योंकि हमें उसकी ईमानदारी पर, उसकी कर्तव्य शक्ति पर विश्वास है। पहले छोटे छोटे कामों के लिए आम लोगों को परेशान होना पड़ता था। आज ज्यादातर काम मोबाइल पर एक क्लिक पर हो रहे हैं। कागजों को अटैच करने के लिए आपके अपने हस्ताक्षर पर भी आज सरकार विश्वास कर रही है। इससे देश में एक अलग माहौल बन रहा है, एक सकारात्मक वातावरण तैयार हो रहा है और हम देख रहे हैं कि विश्वास से भरे हुए देश के लोग देश के विकास के लिए कैसे खुद आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। स्वच्छ भारत आंदोलन को इस जन विश्वास ने ही जन आंदोलन में बदला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को इस जन विश्वास ने ही जन आंदोलन में बदला। लाल किले से मेरी एक पुकार पर कि जो सक्षम हैं उन्हें गैस सब्सिडी छोड़नी चाहिए, लाखों लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी थी। कुछ समय पहले ही कई देशों का एक सर्वे हुआ था। इस सर्वे में सामने आया कि जिस देश के नागरिकों को अपनी सरकार में सबसे ज्यादा विश्वास है
उस सर्वे ने बताया उस देश का नाम भारत है। ये बदलता हुआ जनमानस, ये बढ़ता हुआ जनविश्वास भारत के जन जन की प्रगति का माध्यम बन रहा है। साथियों, आज आजादी के 75 वर्ष बाद देश अपने अमृतकाल को कर्तव्य काल के रूप में देख रहा है। हम देशवासी अपने अपने स्तर से देश के सपनों और संकल्पों को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। इसलिए आज विश्व भी भारत में भविष्य देख रहा है। हमारे प्रयास आज पूरी मानवता के लिए एक आश्वासन बन रहे हैं। मैं मानता हूं कि लोकमान्य आज जहां भी उनकी आत्मा होगी वो हमें देख रहे हैं, हम पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। उनके आशीर्वाद से, उनके विचारों की ताकत से हम एक सशक्त और समृद्ध भारत के अपने सपने को जरूर साकार करेंगे। मुझे विश्वास है हिंद स्वराज संघ तिलक के आदर्शों से जन जन को जोड़ने में इसी प्रकार आगे आकर के अहम भूमिका निभाता रहेगा। मैं एक बार फिर इस सम्मान के लिए आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। इस धरती को प्रणाम करते हुए, इस विचार को आगे बढ़ाने में जुड़े हुए सबको प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। So, Prime Minister Modi conferred with the Lokmanya Tilak National Award constituted by the Tilak Smarak Mandir Trust in 1983 to honor the legacy of Lokmanya Tilak. There you see Prime Minister Modi, who's now been conferred with the Lokmanya Tilak National Award. Not just that, the Prime Minister has even laid foundation stones of various development projects and has now received the Lokmanya Tilak National Award as well. Now remember, this award is given to people who have worked for the progress and development of the nation and whose contribution can only be looked upon as remarkable and extraordinary. With that, we slip into a very short break. On the other side, we'll get you the latest on the clashes in Haryana. As known as 3 people have died in the clashes that broke out on Monday. Also, 17 dead in Maharashtra, tragedy in Thane after the machine crashed.
The Amity Law School, ranked among the top 10 in India, educates some of the most brilliant students who get recruited by top law firms and go for higher studies to leading universities like Harvard, Oxford, Cambridge and UCL. To apply, visit amity.edu. When the opposition starts celebrating not the victory of a no-confidence motion, but the admission of the motion in Parliament. The I.N.D.I.A cannot even push through the motion if there is external support. A no-confidence motion is a serious matter. It is not a necessary rite of passage. It's not like having breakfast or lunch. It is something serious which must be done when there is something serious to debate. I say debate Manipur, but why a no-confidence motion? They are not even united on basic issues among themselves, and they call themselves I.N.D.I.A, and they waste our time by bringing in a no-confidence motion. It is an act of absolute futility. The people are serious. The people want governance, and I say with all the conviction at my command, stop the futility of the no-confidence motion. The opposition should unitedly take back the no-confidence motion and not waste the nation's time. If it is for their amusement, then it is a very, very expensive source of amusement that we pay. When the opposition starts celebrating not the victory of a no-confidence motion, but the admission of the motion in Parliament. The I.N.D.I.A cannot even push through the motion if there is external support. A no-confidence motion is a serious matter. It is not a necessary rite of passage. It's not like having breakfast or lunch. It is something serious which must be done when there is something serious to debate. I say debate Manipur, but why a no-confidence motion? They are not even united on basic issues among themselves, and they call themselves I.N.D.I.A, and they waste our time by bringing in a no-confidence motion. It is an act of absolute futility. The people are serious. The people want governance, and I say with all the conviction at my command, stop the futility of the no-confidence motion. The opposition should unitedly take back the no-confidence motion and not waste the nation's time. If it is for their amusement, then it is a very, very expensive source of amusement that we pay. And in Newsbreak, update coming in on the no trust vote that would be taken up in the Parliament between the 8th and the 10th of August. So the discussion on no confidence motion would happen between the 10th and 8th and 10th of August. And Prime Minister would be responding to that on 10th of August. That's the latest that is just coming in. The discussion on no confidence motion would be held between the 8th and 10th of August, and it would be on 10th of August that Prime Minister would be replying to that no trust vote. So it's a 3-day discussion on no confidence motion that would begin on 8th of August, which is 7 days from now. Let's go across to our executive editor for politics, Aishwarya Kapoor, joining us. Aishwarya, tell us more. It is, of course, going to fall flat given that the government, of course, has the numbers in the Lok Sabha. Samiksha, though a symbolic one, but yes, a discussion for 3 days has been sanctioned by the chair from the 8th, noon exactly, from noon on the 8th till the evening
of the 10th, that is when the discussion on no confidence motion will be taking place. The Prime Minister will be responding on the evening of 10th to the no confidence motion, despite knowing the fact that the present government is not only comfortable but basically has handsome numbers, not only Lok Sabha but both the houses. The opposition deliberately, just to seek a reply from the Prime Minister, has brought this no confidence motion, and the chair has also approved it because it has the requisite conditions, and hence we are being told that a discussion for 3 days has been allowed. And as you were very correctly mentioning, that this is going to fall because the numbers are in favor of the Modi government, undoubtedly, not only Lok Sabha but also in the upper house now, going by the present strength. But the opposition, because they were not able to come up with any other formula to get the Prime Minister's reaction onto the prevailing situation in Manipur. All right, Ishwara, thank you for those details. A network problem there, but that's a big news break that is coming in. Prime Minister would be responding on 10th of August to the no trust vote that would be taken up in just 7 days from now in the lower house. So on 7th of, 8th of August, that the no trust vote would be taken up in the Parliament, and Prime Minister would be responding to that on 10th of August. With that, we slip into a very short break. Coming up on the other side, ground reports from Ground Zero as 3 people die in the clashes that broke out on Monday. 17 killed as machine collapses in Maharashtra's Thane. At least rescue operations concluded. When the opposition starts celebrating not the victory of a no-confidence motion, but the admission of the motion in Parliament. The I.N.D.I.A cannot even push through the motion if there is external support. A no-confidence motion is a serious matter. It is not a necessary rite of passage. It's not like having breakfast or lunch. It is something serious which must be done when there is something serious to debate. I say debate Manipur, but why a no-confidence motion? They are not even united on basic issues among themselves, and they call themselves I.N.D.I.A, and they waste our time by bringing in a no confidence motion. It is an act of absolute futility. The people are serious. The people want governance, and I say with all the conviction at my command, stop the futility of the no confidence motion. The opposition should unitedly take back the no confidence motion and not waste the nation's time. If it is for their amusement, then it is a very, very expensive source of amusement that we pay. When the opposition starts celebrating not the victory of a no confidence motion, but the admission of the motion in Parliament. The I.N.D.I.A cannot even push through the motion if there is external support. A no confidence motion is a serious matter. It is not a necessary rite of passage. It's not like having breakfast or lunch. It is something serious which must be done when there is something serious to debate. I say debate Manipur, but why a no confidence motion? They are not even united on basic issues among themselves,
and they call themselves I.N.D.I.A, and they waste our time by bringing in a no confidence motion. It is an act of absolute futility. The people are serious. The people want governance. And I say with all the conviction at my command, stop the futility of the no confidence motion. The opposition should unitedly take back the no confidence motion and not waste the nation's time. If it is for their amusement, then it is a very, very expensive source of amusement that we pay. When the opposition starts celebrating not the victory of a no-confidence motion, but the admission of the motion in Parliament. The I.N.D.I.A cannot even push through the motion if there is external support. A no-confidence motion is a serious matter. It is not a necessary rite of passage. It's not like having breakfast or lunch. It is something serious which must be done when there is something serious to debate. I say debate Manipur, but why a no-confidence motion? They are not even united on basic issues among themselves, and they call themselves I.N.D.I.A. I'm Shivangi Shukla getting you the latest. A short while back, the Prime Minister PM Modi had received the prestigious Lokmanya Tilak National Award in Pune, which is given to those individuals who help and do great, remarkable work in the progress of our nation. That's a top story. We'll get you more details on that. But first, the headlines we are tracking at this moment. उस समय सावरकर जी युवा थे। तिलक जी ने उनकी क्षमता को पहचाना। वो चाहते थे कि सावरकर बाहर जाकर अच्छी पढ़ाई करें और वापस आकर आजादी के लिए काम करें। PM Modi invokes Savarkar's nationalism as he pays tribute to Bal Gangadhar Tilak in Pune. Sharad Pawar shares stage with Prime Minister, praises him as he facilitates him with Tilak National Award. Debate on no trust motion on August 8th. Prime Minister to reply on August 10th in Parliament. 4 killed in clashes in New. Deployment of forces beefed up in and around New district of Haryana. जितना बड़ा बवाल हुआ है और जैसे ये फैला है, ये अचानक नहीं हो सकता। ये तो किसी ना किसी ने मास्टरमाइंड किया है। Haryana Home Minister Anil Vij speaks to Republic, says riots in New were pre-planned. 17 people killed and several injured in a massive crane crash tragedy reported in Thane in Maharashtra. Viewers, let's go to the top story we're tracking on Republic TV. It's a big statement being made. Haryana Home Minister Anil Vij claimed that someone who wanted to disturb the peace in Haryana engineered the violence in New. Meanwhile, authorities imposed a curfew in the district after the previous day's violence. 4 people have been killed, reportedly. Several others injured in New following violence that erupted on Monday. That's yesterday. A curfew has been clamped on New district. Meanwhile, Chief Minister Manohar Lal Khattar is holding a meeting with Vij and officials, including the Chief Secretary and senior police officers, to take stock of the situation in New. So viewers, now what we are seeing right now is
the details coming in, where we are seeing that the Home Minister of Haryana, Anil Vij, claiming that there was somebody who wanted to disturb the peace in Haryana, and that somebody engineered the violence in New. Now, a meeting is underway at the Chief Minister's residence as we speak right now. The CM holding a very high-level meeting as we speak right now, viewers. And what we are also seeing at this point of time is many statements coming out. Now, remember that curfew has been imposed in Haryana's New district. The authorities have imposed a curfew in Haryana's New district. In fact, let's go ahead and play out this conversation that the public had with Haryana Home Minister Anil Vij. तो प्लानिंग तो कहीं ना कहीं थी इसके पीछे। ये डेफिनेटली ये जितना बड़ा बवाल हुआ है और जैसे ये फैला है ये अचानक नहीं हो सकता। और जहाँ तक मुझे जानकारी है वहाँ पर दोनों कम्युनिटीज़ आपस में प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के सामाजिक कार्यक्रमों में भी आते जाते रहते हैं। इतनी नफरत नहीं है। ये तो किसी ना किसी ने मास्टरमाइंड की है, किसी ना किसी ने इंजीनियरिंग की है, लेकिन जल्दी किसी नतीजे पर पहुँचना ठीक नहीं होता है, क्योंकि हम जांच करके तथ्यों सहित बात रखेंगे। मैंने अधिकारियों को कह दिया है कि एक एक दोषी को हम सजा देंगे, जिसने जो ये किया है, शांति भंग की है, एक आदमी को भी नहीं बख्शेंगे, लेकिन गहराई के साथ हम उसकी जांच कर रहे हैं। सब हर साल निकलती है यात्रा, ये कोई पहली बार नहीं निकली है और हर साल इस तरह का माहौल नहीं बनता है। तो क्या कुछ लोग अभी तक आइडेंटिफाई कर पाई है पुलिस या इंटेलिजेंस की आखिरकार इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है जिन्होंने ये सारी प्लानिंग की थी? क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी यात्रा वैसे ही निकली थी, लेकिन रिजल्ट कुछ और निकला। नहीं, देखिए ये शांतिपूर्ण यात्रा निकलती है, हर साल यात्रा निकलती है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निकलती है और इस बार भी शांतिपूर्ण तरीके से निकली। और हर साल जितनी पुलिस वहाँ मौजूद रहती है उतनी इस साल भी थी, लेकिन एकदम ये तो किसी ने प्लान किया हुआ था। इतने सारे लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, इतने सारे पत्थर नहीं आ सकते हैं कि एकदम इतने सारे पत्थर आ गए, और इतने पॉइंट्स के ऊपर नहीं हो सकता, इतनी जगहों का घेराव नहीं हो सकता कि अचानक तो कहीं पर कुछ हो सकता है। लेकिन इतनी जगह पर जिस प्रकार से इसका था वो सारा मैं डाटा मंगवा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या हुआ, किस किस ने किया। अस्पतालों को घेरा गया, चौकियों को घेरा गया, मंदिर को घेरा गया। ये बिना प्लानिंग के नहीं हो सकता। मेरी भी 40 साल की राजनीति है, बिना प्लानिंग के ये ऐसा नहीं हो सकता। साहब, अगर बिना प्लानिंग के नहीं हो सकता तो इनके मास्टरमाइंड्स को एक्सपोज करना भी उतना ही ज़रूरी है। कौन है इनके पीछे लोग जिन्होंने बंदूकें थमा दी, जिन्होंने इस यात्रा के ऊपर गोलियां चलवा दी, पत्थरबाजी हुई है? क्या अभी तक कोई गिरफ्तार, कोई डिटेन, कोई आइडेंटिफाई हुआ? नहीं, एक एक पॉइंट पर देखिए, हमारा जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी ड्यूटी है वो है वहाँ पर शांति बहाल करना और स्थिति को अपने नियंत्रण में लेना। वो हमने वहाँ पर शांति बहाल है, स्थिति पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। अब हम बाकी जो काम है उस पर कार्रवाई करना आरंभ कर देंगे। कल शाम को डीसी के साथ दोनों कम्युनिटीज़ के लीडर्स की बैठक हुई थी और उसके बाद कोई नतीजा निकला? क्योंकि आज फिर से रीशेड्यूल की गई है पीस मीटिंग। नहीं, देखिए साइमल्टेनियसली हम बात भी कर रहे हैं, और क्योंकि शांति रहे और शांति से रहें सब, ये तो हमारा दायित्व है। तो इसलिए कल डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में मीटिंग भी बुलाई थी, लेकिन उसको हम जारी रखे हुए हैं, वो काम हम करेंगे। नू के बाद कुछ घटना सोना से भी आई सामने और कई जगह पे, और पलवल, फरीदाबाद, कई जगह पे छोटी मोटी वायलेंस भी हो रही है। तो पैरामिलिट्री वहाँ पे भी डिप्लॉयड है, वहाँ की क्या स्थिति है? नहीं, सब जगह पर जो सफिशिएंट फोर्स है वो भेज दी गई है सब जगह पर। आखिरी सवाल, आगे की कार्रवाई किस तरह से चलेगी? क्या पहले कार्रवाई शुरू हो जाएगी या फिर अभी थोड़ा टाइम लेने के बाद उन मास्टरमाइंड्स को, उन लोगों को जो एक्यूज्ड हैं, जो इसके पीछे कॉन्स्पिरेटर्स हैं, उनको एक्सपोज किया जाएगा? नहीं, तथ्यों सहित सारी जानकारी एकत्रित करेंगे और बैठ के फिर कार्रवाई करने का निर्णय लेंगे। All right, let's go to Amandeep. Amandeep, we heard your exclusive conversation you had right over there with Haryana Home Minister Anil Vij. We heard that conversation. Now, what he said there is that the incident in New does not appear to have happened all of a sudden. The level of violence
is something which is quite suspicious. Somebody could have engineered this. That's what he is saying. Take us through exactly what the Haryana Home Minister told you and what's the latest from New. Well, absolutely, Shivangi. The Haryana government has smelled that there is a larger conspiracy behind this entire incident. And that is the reason Chief Minister has conveyed a very important meeting with the Home Minister, Anil Vij, and in fact taking the stock of the situation. And we are just reporting outside the Chief Minister's residence, where the meeting is still underway. And in fact, Haryana Home Minister is giving all kind of details to Chief Minister and regarding the present situation in Nuh, Palwal, Mewat and Faridabad, Gurgaon. Every single position is being discussed with the Chief Minister, and further course of action is also being discussed, just because the larger conspiracy has been smelled by Haryana government. And in fact, they have also identified the masterminds, that this is not the spur of the movement. It was pre-planned conspiracy that was hatched by some people, and in fact later it has been executed on the day of the yatra when it was carried out in Nuh. And even if we just talk about the details, 26 civilians has been injured into this entire incident. 19 cops has been injured, 2 Home Guard Jawans has lost their life, and 1 civilian have lost their life. Almost 40 FIRs has been registered in this entire incident, and in fact CCTV footages has been procured by the police to identify the accused involved into this entire violence. And they are also trying to identify the people who are in touch, who are not in Nuh, but they were continuously in touch with the people who indulge into this kind of violence as well. So the entire position of the government is very tight, and in fact they are trying to take a step ahead to the investigation as well. The priority of the government is essentially they are talking about the law and order situation in that entire area that is adjoining to national capital, and law and order situation is the priority of the government. First they are trying to maintain the peace and calm, and then the investigation will be carried out, and the other step is to identify, to nail down the accused who are involved into this entire case. So this is how the process is going on. But this meeting is actually very important, where Chief Minister is taking stock of all the incident and the situation, what all is happening on the ground, and what could happen beyond that, just because uncertainty is still prevailing in the adjoining areas of national capital. Yes. Absolutely, Amandeep, absolutely. And Section 144 is imposed in Nuh post violence, and we are seeing that security is stepped up, curfew imposed, and we are seeing that even the security, like we just told you, it is on high alert. The CM holding a high-level meeting as we speak. The Republic is on ground, tracking every update post the clashes in Nuh. Now, while the situation remains tense, and residents in the area are still in disbelief and shock, my colleague spoke to the locals who narrated what really happened on Monday afternoon. Listen in. Where I am right now is the bus stand of Nuh, where this bus, if you see, has been completely burnt into ashes. This is yesterday. When the public buses, the state transport buses were completely burnt into ashes. As you see, the remains of it still stays, and such horrific situation prevailed. And all of this while the security forces were at play. And not just this, if you see, this is a public transport bus which has been torched. Now if you walk and if you see there, it was just not buses but police vehicles which were also torched. So if I count the number of police vehicles that were torched, and that the remains that are there in front of my eyes, this is one police vehicle that was torched. As you see, the remains are still there. That is another vehicle which was torched. It is also a police van, and here you see is a SHO's police van that was put on fire yesterday. Apart from this, there are several other public vehicles that were set on fire. Trucks have been set on fire. All in all, about 12 to 13 vehicles were set on fire by the unruly mob yesterday. These were the scenes that were witnessed in Haryana's Nuh. Slowly, the fire started spreading to other areas like
Gurugram, Faridabad, where clashes were also reported last evening. Now, when we talk about the clampdown, Section 144 has been imposed. Internet has been shut down till 2nd of August, late night till 2nd of August. And Haryana government has requested to maintain peace, and he has promised that the unruly mob, the people responsible for this, will be brought to book. But the question is, where ample amount of security put into place when it was known that this yatra will be taken out remains to be the question. We are right now at ground zero, where clashes between two communities in Haryana's Nuh took place at noon yesterday. This is the area at the exact spot where the stone pelting started from. As you see, the remains of things that were burnt into ashes are still here. There is a number plate. There is a number plate of a car that is here. It's totally burnt down. There are few remains of the cars here. As you see, there is a helmet as well, which has been completely burnt into ashes. If you go far away, there is also remains of the glasses here. Remember, yesterday several cars were destroyed, including police vans as well. You have here smoke still coming out from the fire that was put on the forest areas. Here are the remains of the car that's here. These are the things that were used to hit out at the communities here. As you can see, there are several things that were used here. If I can ask our camera person to zoom into this area, as you can see, stone pelting did happen yesterday. This is the proof of it. Sticks are here. The bamboo sticks that were used yesterday are here. Bricks have been used, and all of this at a stretch of about 1 kilometer. This was the epicenter from where the clashes actually took place. The remains are still here. Most of the cars were also burnt here. About 100 people have already been injured. Stones are still at its place. And if you see that side, that's the housing area. So what we are also getting to know is that people from two communities clashed. Internet was shut down at 8:30 p.m. yesterday. The shutdown of internet orders have been put into place till 2nd of August, 11:30 p.m. The situation still remains tense, and this is the exact spot from where Republic is reporting right now, the exact spot of the clashes. The whole road, if you see, it has been burnt down into ashes. Fire was put on, and the motive was certainly to cause large scale damage. Viewers, much more coming up. Prime Minister Modi in Pune set to launch several developmental projects. And in a big operation, Sachin Bishnoi, an accused in Moosewala case, has been extradited. Stay tuned. When the opposition starts celebrating not the victory of a no-confidence motion, but the admission of the motion in Parliament. The I.N.D.I.A cannot even push through the motion if there is external support. A no-confidence motion is a serious matter. It is not a necessary rite of passage. It's not like having breakfast or lunch. It is something serious which must be done when there is something serious to debate. I say debate Manipur, but why a no-confidence motion? They are not even united on basic issues among
themselves, and they call themselves I.N.D.I.A, and they waste our time by bringing in a no confidence motion. It is an act of absolute futility. The people are serious. The people want governance. And I say with all the conviction at my command, stop the futility of the no confidence motion. The opposition should unitedly take back the no confidence motion and not waste the nation's time. If it is for their amusement, then it is a very, very expensive source of amusement that we pay. When the opposition starts celebrating not the victory of a no confidence motion, but the admission of the motion in Parliament. The I.N.D.I.A cannot even push through the motion if there is external support. A no confidence motion is a serious matter. It is not a necessary rite of passage. It's not like... Alright viewers, more breaking updates coming in. Gujarat ATS has busted a terror network. 3 suspects, I repeat, 3 suspects have been arrested from Rajkot. The arrests have been made in connection with a probe into illegal immigrants. I repeat, illegal immigrants from Bangladesh who have been running the Al-Qaeda network. And for more, I just want to go across to Priyanka, who's joining us on the phone line. Priyanka, take us through the latest we're learning about this case. A terror network busted. Well, that's right, Shivangi. This was an ongoing investigation that was being carried out by the Gujarat ATS that they had made these busts in May as well, where 4 accused had been taken into custody from Ahmedabad, where they had been also illegal Bangladeshi citizens, in fact, illegal immigrants who had come to India, and they were residing in Gujarat, specifically in cities like Ahmedabad and Rajkot, where they were carrying out these radicalizations. Now, apart from this, based on the intel that was gotten by the Gujarat ATS from these 4 accused that had been taken into custody, 3 more have been arrested from Raj. They have been identified as Abdul Shukr, Saif, Nawaz are the 3 names that have come to light. And in fact, we are also being told that the Gujarat ATS officers had to go undercover, and there are several seizures as well that have been made from the particular premises there where it had been busted and the accused had been taken into custody from. Now, the accused will be remanded by the Gujarat ATS, and they will be interrogating them further, because the ATS officers, Shivangi, have also confirmed to us that there is larger nexus of the Al-Qaeda that has been working for radicalization of the Indian youth, and specifically in areas like Rajkot, where they were using the social media platforms for recruiting youth as well. All right, thank you, Priyanka, for getting us all the details. So, like Priyanka is telling us, ATS is questioning the suspects as we speak, and the Gujarat ATS has busted a terror network. 3 suspects arrested from Rajkot. Taking a very short break, much more coming up. 3 people dead in clashes in Haryana's new internet suspended, curfew imposed as the situation remains tense. The Amity Law School, ranked among the top 10 in India, educates some of the most brilliant students who get recruited by top law firms and go for higher studies to leading universities like Harvard, Oxford, Cambridge and UCL. To apply, visit amity.edu. When the opposition starts celebrating not the victory of a no confidence motion, but the admission of the motion in Parliament. The I.N.D.I.A cannot even push through the motion if there is external support. A no confidence motion is a serious matter. It is not a necessary rite of passage. It's not like having breakfast or lunch. It is something serious which must be done when there is something serious to debate. I say debate Manipur, but why a no confidence motion? They are not even united on basic issues among themselves,
and they call themselves I.N.D.I.A, and they waste our time by bringing in a no confidence motion. It is an act of absolute futility. The people are serious. The people want governance. And I say with all the conviction at my command, stop the futility of the no confidence motion. The opposition should unitedly take back the no confidence motion and not waste the nation's time. If it is for their amusement, then it is a very, very expensive source of amusement that we pay. When the opposition starts celebrating not the victory of a no confidence motion, but the admission of the motion in Parliament. The I.N.D.I.A cannot even push through the motion if there is external support. A no confidence motion is a serious matter. It is not a necessary rite of passage. It's not like having breakfast or lunch. It is something serious which must be done when there is something serious to debate. I say debate Manipur, but why a no confidence motion? They are not even united on basic issues among themselves, and they call themselves I.N.D.I.A, and they waste our time by bringing in a no confidence motion. It is an act of absolute futility. The people are serious. The people want governance. And I say with all the conviction at my command, stop the futility of the no confidence motion. The opposition should unitedly take back the no confidence motion and not waste the nation's time. If it is for their amusement, then it is a very, very expensive source of Viewers, in a notable ceremony held in Pune, Prime Minister Modi was honoured with the esteemed Lokmanya Tilak National Award, becoming the 41st recipient of this prestigious award. Maharashtra Governor, Chief Minister Eknath Shinde, Deputy Chief Ministers, the Ajit Pawar and Devendra Fadnavis were present when PM Modi was conferred the award. Ahead of the award ceremony, the Prime Minister paid a visit to the iconic Ganesh temple in heart of Pune to offer prayers. The Prime Minister also performed the puja. Debate on opposition's no trust motion is scheduled to take place on August 8 during the ongoing monsoon session. 3 days have been assigned to debate the motion. PM Modi is expected to respond to the motion on August 10th. Haryana CM Manohar Lal Khattar held a high-level meeting with Home Minister Anil Vij regarding the situation in new at his residence. Haryana Chief Secretary and DGP, including all administrative officers, were also present at that meeting. Viewers, much more coming up. PM Modi in Pune set to launch several developmental projects. Stay tuned. The Amity Law School, ranked among the top 10 in India, educates some of the most brilliant students who get recruited by top law firms and go for higher studies to leading universities like Harvard, Oxford, Cambridge and UCL. To apply, visit amity.edu.
the opposition starts celebrating not the victory of a no confidence motion, but the admission of the motion in Parliament. The I.N.D.I.A cannot even push through the motion if there is external support. A no confidence motion is a serious matter. It is not a necessary rite of passage. It's not like having breakfast or lunch. It is something serious which must be done when there is something serious to debate. I say debate Manipur, but why a no confidence motion? They are not even united on basic issues among themselves, and they call themselves I.N.D.I.A, and they waste our time by bringing in a no confidence motion. It is an act of absolute futility. The people are serious. The people want governance, and I say with all the conviction at my command, stop the futility of the no confidence motion. The opposition should unitedly take back the no confidence motion and not waste the nation's time. If it is for their amusement, then it is a very, very expensive source of amusement that we pay. When the opposition starts celebrating not the victory of a no confidence motion, but the admission of the motion in Parliament. The I.N.D.I.A cannot even push through the motion if there is external support. A no confidence motion is a serious matter. It is not a necessary rite of passage. It's not like having breakfast or lunch. It is something serious which must be done when there is something serious to debate. I say debate Manipur, but why a no confidence motion? They are not even united on basic issues among themselves, and they call themselves I.N.D.I.A, and they waste our time by bringing in a no confidence motion. It is an act of absolute futility. The people are serious. The people want governance, and I say with all the conviction at my command, stop the futility of the no confidence motion. The opposition should unitedly take back the no confidence motion and not waste the nation's time. If it is for their amusement, then it is a very, very expensive source of amusement that we pay. Hello and welcome, ladies and gentlemen. My name is Ankit Prasad and you are watching India's #1 English news channel, Republic TV. We are tracking a number of stories this Tuesday afternoon. The Prime Minister is in Pune. He has received the Tilak National Award this year from no less than Sharad Pawar, whose NCP party just split a couple of weeks ago. We also have dates for further action in Parliament. The no confidence motion will be taken up from the 8th of August onwards, and the Prime Minister will reply there also. We're also tracking the aftermath of the riots that were witnessed in Haryana in Nuh yesterday. We have a lot coming from there as well in terms of exclusive bites. We'll start first with the headlines and take it from there. समय सावरकर जी युवा थे, तिलक जी ने उनकी क्षमता को पहचाना। वो चाहते थे कि सावरकर बाहर जाकर अच्छी पढ़ाई करें और वापस आकर आजादी के लिए काम करे। Prime Minister Modi invokes Veer Savarkar's nationalism as he pays tribute to Bal Gangadhar Tilak in Pune. Sharad Pawar shares the stage with PM Modi, praises him as he felicitates him with the Tilak National Award. Debate on the no confidence motion to be held starting August the 8th. PM Modi to reply on August the 10th in Parliament.
4 killed in clashes in New Haryana. Deployment of forces beefed up in and around the district. Haryana Home Minister Anil Vij speaks to Republic, says the riots in New were pre-planned. 17 people killed and several injured in a massive crane crash tragedy in Maharashtra's Thane district. We start off, viewers, with the latest from Haryana's New, where you'll remember yesterday afternoon onwards, there were communal riots and tensions that prevailed over there. There were over 24 people who were injured. A similar number of FIRs have been filed, and there are also 4 people who have died. Now, we have spoken to Haryana's Home Minister Anil Vij, and he claims that someone who wanted to disturb the peace in Haryana engineered the violence in New. And meanwhile, the authorities in New have imposed a curfew in the district after the violence the previous day. Even in surrounding areas, Section 144 has been imposed. There have been a number of peace marches also that have been taken out. 4 people have been killed and several others have been injured. The violence that we saw yesterday has also left a very large number of vehicles that have been torched, and what really needs to be understood is how such violence took place. Let's listen in to what the Home Minister of Haryana, Anil Vij, had to say when he spoke to us. तो प्लानिंग तो कहीं ना कहीं थी इसके पीछे। ये डेफिनेटली ये जितना बड़ा बवाल हुआ है और जैसे ये फैला है, ये अचानक नहीं हो सकता। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, वहाँ पर दोनों कम्युनिटीज़ आपस में प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के सामाजिक कार्यक्रमों में भी आते जाते रहते हैं। इतनी नफरत नहीं है। ये तो किसी न किसी ने मास्टरमाइंड की है, किसी न किसी ने इंजीनियरिंग की है, लेकिन जल्दी किसी नतीजे पर पहुँचना ठीक नहीं होता है, क्योंकि हम जांच करके तथ्यों सहित बात रखेंगे। मैंने अधिकारियों को कह दिया है कि एक एक दोषी को हम सजा देंगे, जिसने जो ये किया है, शांति भंग की है, एक आदमी को भी नहीं बख्शेंगे, लेकिन गहराई के साथ हम उसकी जांच कर रहे हैं। सब हर साल निकलती है यात्रा, ये कोई पहली बार नहीं निकली है, और हर साल इस तरह का माहौल नहीं बनता है। तो क्या कुछ लोग अभी तक आइडेंटिफाई कर पाई है पुलिस या इंटेलिजेंस की आखिरकार इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है जिन्होंने ये सारी प्लानिंग की थी? क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी यात्रा वैसे ही निकली थी, लेकिन रिजल्ट कुछ और निकला। देखिए, ये शांतिपूर्ण यात्रा निकलती है, हर साल यात्रा निकलती है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निकलती है, और इस बार भी शांतिपूर्ण तरीके से निकली। और हर साल जितनी पुलिस वहाँ मौजूद रहती है उतनी इस साल भी थी, लेकिन एकदम ये तो किसी ने प्लान किया हुआ था। इतने सारे लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, इतने सारे पत्थर नहीं आ सकते हैं कि एकदम इतने सारे पत्थर आ गए, और इतने पॉइंट्स के ऊपर नहीं हो सकता, इतनी जगहों का घेराव नहीं हो सकता कि अचानक तो कहीं पर कुछ हो सकता है। लेकिन इतनी जगह पर जिस प्रकार से इसका था, वो सारा मैं डाटा मंगवा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या हुआ, किस किस ने किया। अस्पतालों को घेरा गया, चौकियों को घेरा गया, मंदिर को घेरा गया। ये बिना प्लानिंग के नहीं हो सकता। मेरी भी 40 साल की राजनीति है, बिना प्लानिंग के ये ऐसा नहीं हो सकता। साहब, अगर बिना प्लानिंग के नहीं हो सकता तो इनके मास्टरमाइंड्स को एक्सपोज करना भी उतना ही ज़रूरी है। कौन है इनके पीछे लोग जिन्होंने बंदूकें थमा दी, जिन्होंने इस यात्रा के ऊपर गोलियां चलवा दी, पत्थरबाजी हुई है? क्या अभी तक कोई गिरफ्तार, कोई डिटेन, कोई आइडेंटिफाई हुआ? नहीं, एक एक पॉइंट पर देखिए, हमारा जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी ड्यूटी है वो है वहाँ पर शांति बहाल करना और स्थिति को अपने नियंत्रण में लेना। वो हमने वहाँ पर शांति बहाल है, स्थिति पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। अब हम बाकी जो काम है उस पर कार्रवाई करना आरंभ कर देंगे।
कल शाम को डीसी के साथ दोनों कम्युनिटीज़ के लीडर्स की बैठक हुई थी और उसके बाद कोई नतीजा निकला, क्योंकि आज फिर से रीशेड्यूल की गई है पीस मीटिंग? नहीं, देखिए, साइमल्टेनियसली हम बात भी कर रहे हैं, और क्योंकि शांति रहे और शांति से रहे सब, ये तो हमारा दायित्व है। तो इसलिए कल डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में मीटिंग भी बुलाई थी, लेकिन उसको हम जारी रखे हुए हैं, वो काम हम करेंगे। नू के बाद कुछ घटना सोना से भी आई सामने, और कई जगह पे, और पलवल, फरीदाबाद, कई जगह पे छोटी मोटी वायलेंस भी हो रही है। तो पैरामिलिट्री वहाँ पे भी डिप्लॉयड है, वहाँ की क्या स्थिति है? नहीं, सब जगह पर जो सफिशिएंट फोर्स है वो भेज दी गई है, सब जगह पर। आखिरी सवाल, आगे की कार्रवाई किस तरह से चलेगी? क्या पहले कार्रवाई शुरू हो जाएगी, या फिर अभी थोड़ा टाइम लेने के बाद उन मास्टरमाइंड्स को, उन लोगों को जो एक्यूज्ड हैं, जो इसके पीछे कॉन्स्पिरेटर्स हैं, उनको एक्सपोज किया जाएगा? नहीं, तथ्यों सहित सारी जानकारी एकत्रित करेंगे और बैठ के फिर कार्रवाई करने का निर्णय लेंगे। So that was the Haryana Home Minister Anil Vij speaking to Amandeep, and he is adamant that there was planning that was carried out, and only that's the reason why there was so much violence, there were so many stones pelted. The fact also that there were guns clearly at the hands of those who were pelting the stones. We're also being joined by Amandeep, even as I believe the Chief Minister of Haryana, ML Khattar, is holding a high-level meeting with the Chief Secretary, with the Home Minister also present. Amandeep, since you have spoken to the Home Minister, has there been any action taken as the people who had guns in their hands, who stockpiled stones, has anyone been nabbed? What is the current state also of the peace situation at Nu? Well, Ankit, if we talk about the action, that action is not visible on the ground. And though Haryana Home Minister has confirmed that it was a conspiracy hatched by some masterminds who have actually engineered this entire violence episode in Nu. And in fact, slowly, gradually, Haryana police is getting the information and they will get their hands on the conspirators as well. But meanwhile, there is an important meeting that has just ended up at the residence of Chief Minister of Haryana, Manohar Lal Khattar, where I am standing outside. And in fact, that meeting was with Home Minister Anil Viz, Chief Secretary, DGP and Intel DGP. They have all joined through the video conferencing just because they are camping in Nu itself. And in fact, this meeting is all about the briefing of the entire incident. One part of the meeting was discussed that how the peace and calm will be sustained in all the disturbed and unrested areas. And in fact, the second point, second agenda of the meeting is that how to go further, how to take the action and how to expose the conspirators who were behind this violence, just because it was not spur of the moment. It was a conspiracy hatched by some people, and in fact that is the reason the people have gathered their guns in their hands. Stone has been pelted at the yatra, and the resulted is that 3 people died, including 2 home guard jawans, 1 civilian, 19 cops injured, 26 civilians injured, almost 40 FIRs has been registered, 13 companies of paramilitary forces are already in the Nu, 6 are on the way, and the entire unrest areas has completely jam-packed with the forces, and the forces are completely visible, flag marches on the road. So the reason of this meeting is that they are deciding that how to maintain peace and calm in the areas, and in fact further how to proceed the legal action against those who are involved into this entire incident. And meeting has just ended up, and slowly we are just getting the information that the officials will started coming out very soon from the residence of Chief Minister Manohar Lal Khattar, and one message has also been recorded by Chief Minister Manohar Lal Khattar regarding this meeting after taking stock of the situation, just because Chief Minister has been briefed from all aspects, even the law and order situation, deployment of the police and the paramilitary forces, involvement of the people, and what is the present situation and who all are involved. Everything has been briefed to Chief Minister, and later he has decided to come out with a message to the people to maintain calm and peace in the areas, and simultaneously the police will start their action on the ground against the conspirators. Yes. Absolutely. So Amandeep is on the ground, and I thank him for sharing those details. He's on the ground tracking all the updates there after the meeting chaired by the Chief Minister. Meanwhile, the situation in Nu remains tense. The residents in the area are still in shock. Many hundred people had to be rescued yesterday from the line of fire. Now, my colleague Tanisha spoke to the locals who narrated what exactly happened yesterday afternoon. Listen into these conversations.
We are right now in front of the Naleshwar Mahadev temple in New in Haryana. Remember, clashes broke out yesterday. We have right now with us the temple priest who was there yesterday when all of this happened. Remember, there were about thousands of people who took refuge in this very temple. He was there at the time when there were thousands of people who were rescued, who took refuge in the temple. We'll get to know what he actually saw, what was actually happening, till when did it continue, and what were the major reasons behind these clashes. Pandit ji, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ एक बेसिक सवाल, क्या देखा, क्या सुना आपने? जी हमने तो श्रद्धालुओं की भीड़ देखी और मंदिर के अंदर ही रहे, लेकिन ये है कि माहौल बिगड़ा हुआ देखा दोपहर के बाद जी। कितने बजे के बाद आपने देखा? यही कोई 3 बजे के बाद जी। क्या As the bill vindicates the outrageous infringement of this government upon the territory of the states, it is designed of digging up a graveyard for cooperative federalism. सर, ये विधायक निर्वाचित दिल्ली विधानसभा से सेवाओं से संबंधित मामलों को कानून बनाने की शक्ति को वापस ले लेता है। बड़े संक्षेप में 4 बिंदु पे बात करना चाहते हैं। ये तो आप जब डिटेल पे चर्चा होगी तब करना है। पॉइंट पे आप तो ये संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सेवाएं राज्य का विषय है, इसलिए एनसीटी विधानसभा को एनसीटी की सेवाओं से संबंधित सभी विषयों पर बिना किसी गतिरोध अड़चन के कानून पारित करने का अधिकार होना चाहिए था। इस प्रकार यह विधायक संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि अनुच्छेद 239 के स्पष्ट रूप से दिल्ली विधानसभा को राज्य और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामले पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इससे संविधान की अपेक्षा करने और उच्चतम न्यायालय की अनदेखी करने में केंद्र सरकार की दृष्टिकोण को बारे में गंभीर प्रश्न उठता है। इस विधायक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय की फैसले से ज्यादा स्थापित दिल्ली सरकार के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को कम करने का है। उच्चतम न्यायालय के फैसले को बदलने की कोशिश कर और दिल्ली सरकार के मामले में हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार संघवाद के सर, आई राइज टू जो हमारी मजबूत और आप बोलना, जब बिल पे डिबेट हो तो आप जितनी देर कहेंगे आपको पर्याप्त मौका देंगे। आप अभी विषय क्या है कि विधायी पावर है नहीं, ये विषय है ना, आप विद्वान है ना। हाँ बोले आप, हाँ बोलने का जब इच्छा तो भी नहीं बोले आपको पर्याप्त। ये क्या बात है सर? बोलेंगे सर। ये 4 बिंदु पे सर, एक बिंदु आप पता नहीं, आप माइक दिया, माइक चालू है आपका? नहीं, ये तो अभी चालू किया सर, दोबारा पढ़ना पड़ता है। आदत मत बनाओगे हमेशा। इस विधायक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय की फैसले से जता स्थापित दिल्ली सरकार के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को कम करना है। उच्चतम न्यायालय की फैसले को बदलने की कोशिश कर और दिल्ली सरकार के मामलों में हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार संघवाद के उस महत्व को कमजोर करना चाहती है जो हमारी मजबूत और कार्यात्मक लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। 3 नंबर सर, आप विधायक और अध्यादेश उच्चतम न्यायालय की इस फैसले को निष्प्रभावी करने का प्रयास करते हैं, जिसमें दिल्ली सरकार की शक्तियां को बहाल करते हुए कहा गया था कि अगर सरकार को अपने नौकरों पर नियंत्रण नहीं। कॉम्पिटेंस के बारे में सिर्फ बोल सकते हैं और कॉम्पिटेंस के बारे में नहीं बोलता है तो तुरंत कंसिडरेशन करने के लिए बोल दीजिए, हम मेरिट पर चर्चा करने के लिए हम तुरंत तैयार हैं। एन के प्रेमचंदन जी, यस, आपका विषय, आप तो इस विषय पर बताओ। लास्ट सर, ये विधायक दिल्ली में उपराज्यपाल के अधिकार का विस्तार करता है। ये दिल्ली सरकार और संघ सरकार के बीच संबंधों को सरोकार में उपराज्यपाल के विवेकाधीन अधिकार का विस्तार करता है। प्रेमचंदन जी, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री। थैंक यू वेरी मच स्पीकर सर। हाँ, हमेशा सदन की नियम प्रक्रिया के तहत आप बोले। जब एक नहीं माननीय आप नेता हैं, मैं पर्याप्त अवसर आपको पर्याप्त समय दूंगा जब बिल पर डिटेल चर्चा होगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सदन नियमों प्रक्रियाओं के तहत है, जिस विषय पर आप आपत्ति करना चाहते हैं उस विषय पर आपत्ति बोले, नियमों के तहत बोले। सर, I vehemently oppose the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 on 3 grounds. आप तो नियम से बोलोगे ना? आप नियम से बोला है। रूल्स की बात बोलना। रूल्स के बाद बोला है।
Sir, Rule 72(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am questioning the legislative competence of the government in having the legislation of the bill number 1. Sir, it is against the principles of federalism which is being envisaged by the Constitution of India. Sir, federalism is one of the basic features of Indian Constitution. An elected government in the state of Delhi, it is not having the administrative and legislative control over the bureaucrats means the government has, there is no meaning in having the government of Delhi. That is why I am saying that it is absolutely taking away, sir, taking away. अनेक क्रांतिवीर, स्वतंत्रता सेनानी देश को दिए। आज ही लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे की जयंती भी है। ये हम सब के लिए बहुत ही खास दिन है। अन्नाभाऊ साठे महान समाज सुधारक थे। बाबा साहब आंबेडकर के विचारों से प्रभावित थे। आज भी बड़ी संख्या में छात्र और विद्वान उनके साहित्य पर शोध करते हैं। अन्नाभाऊ साठे के कार्य, उनका आह्वान आज भी हम सबको प्रेरित करता है। साथियों, पुणे देश की अर्थव्यवस्था को गति देने, देश भर के युवाओं के सपनों को पूरे करने वाला एक जीवंत शहर है। आज जो प्रोजेक्ट पुणे और पिंपरी चिंचवड़ को मिले हैं, उससे ये भूमिका और सशक्त होने वाली है। अभी यहां करीब 15,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। हजारों परिवारों को पक्के घर मिले। वेस्ट से वेल्थ बनाने का, कचरे से कंचन बनाने का आधुनिक प्लांट मिला है। इन परियोजनाओं के लिए मैं सभी पुणे वासियों को, यहां के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारी सरकार शहरों में रहने वाले, विशेष करके मध्यम वर्ग की, प्रोफेशनल्स की, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर बहुत गंभीर है। जब क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरती है तो उस शहर का विकास भी और तेजी से होता है। पुणे जैसे हमारे शहरों में क्वालिटी ऑफ लाइफ और बेहतर हो, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। यहां आने से पहले पुणे मेट्रो के एक और सेक्शन का लोकार्पण हुआ। मुझे याद है जब पुणे मेट्रो के लिए काम शुरू हुआ था तो मुझे इसके शिलान्यास का अवसर मिला था और देवेंद्र जी ने बड़े मजेदार ढंग से उसका वर्णन भी किया। इन 5 वर्षों में यहां लगभग 24 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क शुरू हो चुका है। साथियों, हमें भारत के शहरों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर अच्छा बने और उसे अगर हमें नई ऊंचाई देनी है तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक बनाना ही होगा।
और इसीलिए ही आज भारत के शहरों में लगातार मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है, नए नए फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, रेड लाइट्स की संख्या कम करने पर बल दिया जा रहा है। साल 2014 तक भारत में 250 किलोमीटर से भी कम मेट्रो नेटवर्क था। इसमें से भी अधिकतर दिल्ली एनसीआर में था। अब देश में मेट्रो नेटवर्क बढ़कर 800 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गया है। इसके अलावा 1000 किलोमीटर की नई मेट्रो लाइन के लिए काम भी चल रहा है। 2014 में सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो का नेटवर्क था। आज देश के 20 शहरों में मेट्रो नेटवर्क संचालित है। महाराष्ट्र में ही पुणे के अलावा मुंबई और नागपुर में भी मेट्रो का विस्तार हो रहा है। ये मेट्रो नेटवर्क आधुनिक भारत के शहरों की नई लाइफलाइन बनती जा रही है। पुणे जैसे शहर में पर्यावरण की रक्षा के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए मेट्रो का विस्तार बहुत जरूरी है। इसलिए भी हमारी सरकार मेट्रो नेटवर्क बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है। भाइयों और बहनों, क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने का एक अहम फैक्टर शहरों में साफ सफाई की व्यवस्था भी है। एक समय था जब विकसित देशों के शहरों को देखकर कहा जाता था, वाह कितना साफ शहर है। अब हम भारत के शहरों को भी उसी तरह से समाधान दे रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ टॉयलेट्स के निर्माण तक सीमित नहीं है। इस अभियान में वेस्ट मैनेजमेंट पर भी बहुत अधिक फोकस किया जा रहा है। हमारे शहरों में बड़े बड़े कचरे के पहाड़ बहुत बड़ी समस्या बन गए। आप भी जानते हैं कि पुणे में जहां मेट्रो का डिपो बना है, वो पहले कोथरूड कचरा डंपिंग यार्ड से जाना जाता था, डंपिंग यार्ड से जाना जाता था। अब ऐसे कूड़े के पहाड़ों को हटाने के लिए भी मिशन मोड पर काम चल रहा है और हम कचरे से कंचन यानी वेस्ट टू वेल्थ के मंत्र पर काम कर रहे हैं। पिंपरी चिंचवड़ का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। इसमें कचरे से बिजली बन रही है। यहां जो बिजली पैदा होगी उससे निगम अपनी जरूरत भी पूरी कर पाएगा, यानी प्रदूषण की समस्या भी नहीं रहेगी और नगर निगम को बचत भी होगी। साथियों, आजादी के बाद से ही महाराष्ट्र के औद्योगिक विकास ने भारत के औद्योगिक विकास को निरंतर गति दी है। महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास को और बढ़ाने के लिए यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण उतना ही जरूरी है। इसलिए आज हमारी सरकार महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना निवेश कर रही है वो अभूतपूर्व है। आज यहां बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, नए नए रेलवे रूट, नए नए एयरपोर्ट्स का निर्माण किया जा रहा है। रेलवे के विकास के लिए यहां
2014 से पहले की तुलना में 12 गुना अधिक खर्च किया जा रहा है। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों को आसपास के राज्यों के इकोनॉमिक हब से भी जोड़ा जा रहा है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल से गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को फायदा होगा। दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर महाराष्ट्र को मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के अन्य राज्यों से जोड़ेगा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये महाराष्ट्र और उत्तर भारत के बीच रेल कनेक्टिविटी भी बिल्कुल बदल जाएगी। महाराष्ट्र को तेलंगाना छत्तीसगढ़ और अन्य पड़ोसी राज्यों से जोड़ने के लिए जो ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क बिछाया गया है उससे भी महाराष्ट्र के उद्योगों को नई गति मिलने वाली है। ऑयल और गैस पाइपलाइन हो, औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी हो, नवी मुंबई एयरपोर्ट हो, सैंद्र बिडकिन इंडस्ट्रियल पार्क हो, ये महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को नई गति देने का सामर्थ्य रखते हैं। किसी भी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। दूसरा मुद्दा उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जो हमारे माननीय सांसद बीजेडी के बताया सर्वोच्च न्यायालय के पैरा 6 जजमेंट के पैरा 6, 95 और पैरा 164 F इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है। इसलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए। माननीय सदस्य, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपको पर्याप्त मौका दिया, आपका ये व्यवहार उचित नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, देश पूरा देख रहा है। आप संसद के अंदर इस तरीके का व्यवहार करते हैं, ये उचित नहीं है। प्रश्न ये कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। श्री नित्यानंद राय महोदय, मैं विधेयक प्रस्तावित करता हूं। चेतावनी दे रहा हूं कि मुझे कुछ सदस्यों के नाम करना पड़ेगा। नेम
Viewers, what we are seeing right now is Amit Shah, who just tabled the bill in Lok Sabha. The Delhi Ordinance Bill was just tabled in the Lok Sabha. Amit Shah just tabled that, and he was speaking on the Delhi bill as we saw that happening live. The Delhi bill was introduced in Lok Sabha. And remember that it's a very controversial bill, and it has sparked a lot of debate. It seeks to replace an ordinance. I fixed date. I fixed time. I got issued a supplementary list of business. I indicated to the leaders in my meeting that 2.5 hours is a limitation which I would relax. And I will not have an upper limit of time. We will discuss and deliberate Manipur for as much time as the honorable members want. That opportunity was not availed. It defies common sense, logic, rational. We want to do it under 267. In the process, they want me to revisit my decision, which I had declined on a number of occasions. So, honorable members, we will continue with legislative business, but do please use your good offices. Reach out to your friends. Reach out to anyone who cares for Indian democracy. And let us have an ecosystem whereby everyone can make a contribution. I am pained and surprised every morning when members who occupy public space make no substantive contribution here. I have pointedly indicated to Mr. Derek O'Brien today. Would he indicate the substantive contribution made in the House? We have legal luminaries, we have stalwarts, we have people with great exposure and experience. They don't avail. It was absolutely sickening for me to notice that you raise concerns of the people by way of questions. You are lucky to have your question in the ballot as a start question. And you are not present to discharge your minimum duty to the people. You are failing to discharge minimum courtesy to parliamentary democracy to at least ask the question. I do hope, Deputy Chairman, I do hope all of you will take it as a mission. Reach out to opinion makers, influencers, so that we as a body act in a manner exemplifying our actions which are worth emulation by others. All right, viewers, so what we are seeing, a big storm, a big face-off in the Lok Sabha over the Delhi bill, which was introduced by Amit Shah short while back. हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भी उस समय बने हुए 50,000 से अधिक घर ऐसे ही खाली पड़े थे। रुपया की बर्बादी है, लोगों की मुसीबतों की चिंता नहीं। भाइयों और बहनों, 2014 में आप सबने हमें सेवा करने का मौका दिया। सरकार में आने के बाद हमने सही नीयत से काम शुरू किया और नीति भी बदली। पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने गांव और शहरों में गरीबों के लिए 4 करोड़ से अधिक पक्के घर बनाए। 4 करोड़। इसमें भी शहरी गरीबों के लिए 75 लाख से अधिक घर बनाए गए हैं। हम इन नए घरों के निर्माण में पारदर्शिता भी लाए हैं और इनकी क्वालिटी भी सुधारी है। हमारी सरकार ने एक और बड़ा काम किया है। जो घर सरकार गरीबों को बनाकर दे रही है, उसमें से ज्यादातर घर महिलाओं के नाम रजिस्टर किए जा रहे हैं। इन घरों की कीमत कई लाख रुपए है। यानी बीते 9 वर्षों में देश में करोड़ों बहनें ऐसी हैं
जो लखपति बनी है, मेरी लखपति दीदी बन गई है। उनके नाम पर पहली बार कोई संपत्ति रजिस्टर हुई है। आज भी जिन भाइयों और बहनों को अपने घर मिले हैं, उन्हें मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। और इस बार का गणेशोत्सव तो उनके लिए बड़ा शानदार होने वाला है। भाई और बहनों, गरीब हो या मिडिल क्लास परिवार, हर सपने को पूरा करना ही मोदी की गारंटी है। एक सपना जब पूरा होता है तो सफलता की कोख से सैकड़ों नए संकल्प जन्म लेते हैं। यही संकल्प उस व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। हमें आपके बच्चों, आपकी वर्तमान और आपकी भावी पीढ़ियों की चिंता है। साथियों, सत्ता येते आणि जाते, समाज आणि देश तेथेच राहतो। इसलिए हमारा प्रयास आपके आज के साथ साथ आपके कल को बेहतर बनाने का भी है। विकसित भारत के निर्माण का संकल्प इसी भावना का प्रकटीकरण है। इसके लिए हम सभी को मिलकर एक साथ काम करना होगा। यहां महाराष्ट्र में इतने अलग अलग दल एक साथ इसी ध्येय के साथ आए हैं। लक्ष्य यही है कि सबकी भागीदारी से महाराष्ट्र के लिए और बेहतर काम हो सके, महाराष्ट्र तेज गति से विकास करे। महाराष्ट्र ने हम सभी को हमेशा बहुत प्यार दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है। ये आशीर्वाद यूं ही बना रहेगा। इसी कामना के साथ फिर से विकास परियोजनाओं की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय श्री राम। Development projects. The Prime Minister laying the foundation stone of multiple development projects in Pune, addressing the event after flagging of metro trains and inaugurating the development projects in Pune. The Prime Minister said, "Our aim is to provide quality of life to the people. Our government is continuously working for that aim." So, taking a very short break, viewers, right now, as we continue getting the top updates on India's #1 news channel, Republic TV. When the opposition starts celebrating not the victory of a no confidence motion, but the admission of the motion in Parliament, the I.N.D.I.A cannot even push through the motion if there is external support. A no confidence motion is a serious matter. It is not a necessary rite of passage. It's not like having breakfast or lunch. It is something serious which must be done when there is something serious to debate. I say debate Manipur, but why a no confidence motion? They are not even united on basic issues among themselves,
and they call themselves I.N.D.I.A, and they waste our time by bringing in a no confidence motion. It is an act of absolute futility. The people are serious. The people want governance. And I say with all the conviction at my command, stop the futility of the no confidence motion. The opposition should unitedly take back the no confidence motion and not waste the nation's time. If it is for their amusement, then it is a very, very expensive source of amusement that we pay. When the opposition starts celebrating not the victory of a no confidence motion, but the admission of the motion in Parliament. The I.N.D.I.A cannot even push through the motion if there is external support. A no confidence motion is a serious matter. It is not a necessary rite of passage. It's not like having breakfast or lunch. It is something serious which must be done when there is something serious to debate. I say debate Manipur, but why a no confidence motion? They are not even united on basic issues among themselves, and they call themselves I.N.D.I.A, and they waste our time by bringing in a no confidence motion. It is an act of absolute futility. The people are serious. The people want governance. And I say with all the conviction at my command, stop the futility of the no confidence motion. The opposition should unitedly take back the no confidence motion and not waste the nation's time. If it is for their amusement, then it is a very, very expensive source of amusement that we pay. When the opposition starts celebrating not the victory of a no confidence motion, but the admission of the motion in Parliament. The I.N.D.I.A cannot even push through the motion if there is external support. A no confidence motion is a serious matter. It is not a necessary rite of passage. It's not like having breakfast or lunch. It is something serious which must be done when there is something serious to debate. I say debate Manipur, but why a no confidence motion? They are not even united on basic issues among themselves, and they call themselves I.N.D.I.A, and they waste our time by bringing in a no confidence motion. It is an act of absolute futility. The people are serious. The people want governance. And I say with all the conviction at my command, stop the futility of the no confidence motion. The opposition... Motorola, India's best 5G smartphone brand. Viewers, time for a motor alert which is coming in right now. A quick update. Accused of firing on the Jaipur-Mumbai train. What we are seeing, the probe has now been lodged into the moving train firing. That's the latest coming in. Where the firing accused has now been sent to police remand. That's what we're learning right now on Republic TV, where RPF constable, remember, had shot dead 4 people on board the Jaipur-Mumbai Express while the train was running. And this had happened on Monday. What we're learning so far, the court has sent the accused to police custody till August 7th. Accused will be there till August 7th in police custody. The accused was produced before the court, and the court has remanded police custody till August 7th in the Jaipur-Mumbai train firing case. Viewers, much more coming up. BJP holds massive protest in Jaipur against Gehlot government. Details on the other side.
5 killed in clashes in New. Deployment at forces beefed up in and around New. When the opposition starts celebrating not the victory of a no confidence motion, but the admission of the motion in Parliament. The I.N.D.I.A cannot even push through the motion if there is external support. A no confidence motion is a serious matter. It is not a necessary rite of passage. It's not like having breakfast or lunch. It is something serious which must be done when there is something serious to debate. I say debate Manipur, but why a no confidence motion? They are not even united on basic issues among themselves, and they call themselves I.N.D.I.A, and they waste our time by bringing in a no confidence motion. It is an act of absolute futility. The people are serious. The people want governance, and I say with all the conviction at my command, stop the futility of the no confidence motion. The opposition should unitedly take back the no confidence motion and not waste the nation's time. If it is for their amusement, then it is a very, very expensive source of amusement that we pay. When the opposition starts celebrating not the victory of a no confidence motion, but the admission of the motion in Parliament. The I.N.D.I.A. Viewers, getting some breaking updates coming in. BJP leaders holding massive protests against Rajasthan Gehlot government. That is right. BJP has launched a massive gherao protest against the Gehlot government. The visuals coming in on your screen. BJP's mega protest. The protests are being held under the Nahi Sahega Rajasthan campaign. Let's go straight to Aishwarya Kapoor, our executive editor politics, who's joining us right now. Take us through the details coming in, Aishwarya. It looks like a huge protest that we're seeing on a screen. Well, Shivangi, a protest from within the Congress, that is the Sachin Pilot faction, wasn't enough for Ashok Gehlot. Now you have the BJP, the real opposition, making its presence felt in the state of Rajasthan. Yes, there are several issues, several points on which the BJP has made it clear that from today till the point of election coming up in Rajasthan, BJP is going to raise those very important issues on a daily basis. This is the beginning, and it's high time that Congress gets its own house in order, because now you are going to face the real opposition in the streets. Till now, we were witnessing cases from within the Congress, that is the Sachin Pilot faction against the Ashok Gehlot government, but now you will have the BJP protesting and raising those very important questions against the Congress government, and this is the beginning, as we just said. BJP has made it clear that on a daily basis they will be taking, they will not only be hitting the streets, but they will also be going to the people of this of the state of Rajasthan and demanding an explanation and answer from the state government. That is the Ashok Gehlot government. All right, thank you, Ashar, for getting us all the details. So we are seeing the BJP launching a massive gherao, and this is a protest being held under Nahi Sahega Rajasthan campaign. Taking a very short break, much more coming up on the other side.